टीचर्स पिक्चर ले रही हैं आपकी। गुड मॉर्निंग बेटा। Dul ma'am, please instruct us when to start. मन्ना सर आई थिंक 10 o'clock ज्वाइन करेंगे जी।
the workshop for receiving e-certificate. We have a dedicated team for taking the attendance. And the session is being recorded and we are going live on YouTube and Facebook. Now we'll put everyone on mute to prevent background disturbances so that when the speakers interact with us, we don't get distracted. We'll be starting shortly. We are just waiting for Sain sir, who will be chairing today's session. Will be posted on your Telegram group as well as in the Zoom chat box, but not on FB and YouTube. So you must join the session if you have registered for the webinar, and you will get the e-certificates only after filling the feedback form. And we need the feedback on daily basis for all 5 days. Once again, to remind you, the session is being recorded and we are going live on YouTube and Facebook. To all of you, a very pleasant morning. My name is Neetu Sharma and I work at KIIT College of Education. Recording in progress. As an assistant professor. On behalf of Team KIIT, I welcome everyone on day 1 of 5 days workshop. We are delighted to greet today's session attendees on MOOCs, e-content development, and open educational resources. Thank you for taking the time to join us. Technology-enabled teaching and learning is no more a skill for future. At present, it has become
become very prominent with many opportunities. While offering online education, we need to look beyond the current approaches to remote learning. We are having eminent speakers with us who shall acquaint as well as encourage the participants towards planning, designing, developing, delivering, and implementing MOOCs and other open educational resources so that participants can keep pace with the digital revolution of the 21st century. Now, let me introduce Professor Dr. Indira Dhul, Director, KIIT College of Education. Ma'am has completed her postdoctoral research under the supervision of Professor Richard Cowan, Institute of Education, University of London. She has been former Dean Colleges Development Council, MDU, and former Head and Dean Faculty Education, MDU Rohtak. She has been former Dean Academic Affairs and Dean Students Welfare, State University of Performing and Visual Arts, Rohtak. Ma'am's area of interest include psychological foundation of education, special education, educational technology and ICT, educational research, and value education. She has a vast teaching experience of 28 years. Ma'am has supervised 42 PhD students. Ma'am has been chairperson, member coordinator of various NAC committees and member of various committees constituted by UGC, HRD, and ICSSR. She has published 5 books, around 105 research papers and articles, and has also presented papers in various national, international conferences and seminars. She was felicitated with Best Paper Award in International Conference at San Francisco, USA. She has visited numerous countries for academic mission. Few of them are UK and USA. And for wider exposure, Ma'am has also visited Canada, France, Germany, Switzerland, Italy, Belgium, Holland, Austria, UAE, and the list is ongoing. Now, without further ado, we will turn the time over to Ma'am. Ma'am is a source of knowledge, experience, and inspiration for all of us. Ma'am shall formally welcome you all and brief you about the workshop. Over to you, ma'am. We would love to hear from you. Yeah, thank you, Neetu. So a warm good morning to all. Worthy Chairperson of the workshop, Dr. Nilima Kamraji, Registrar, KIT Group of Institutions. Respected Dr. S.S. Agarwal, Director General, KIT Group of Institutions. Professor M. Sen Gupta, the Founder, Director, KIT College of Education and Chairperson of today's session. Distinguished experts of the day, Dr. Manpreet Singh Manna, former Director AICTE and Founder Director Swayam Ministry of HRD, Government of India, and Dr. Sonam Bansal. She will also join us today. She's Assistant Professor, RLS College of Education, Sidhravali. Esteemed participants from all over India and abroad, it's my proud privilege to welcome you all to this 5 days workshop on MOOC, e-content development, and open educational resources. Organized by KIT College of Education, a constituent of KIT Gurugram, founded by veteran educationist and visionary Shri B.R. Kamra, our chairperson, sir. On behalf of Vidyapati Sansthan, I extend a warm welcome to one and all. The motivation to organize this workshop came from Dr. Nilima Kamraji, who is the source of our vitality and whose positive aura keeps us going. We are fortunate to have eminent educationists and experts for our technical sessions, like Dr. Manpreet Singh Manna, former Director AICT and Founder Director Swayam Ministry of HRD, Government of India. Dr. Fauzi Baraud, Assistant Vice President Information Technology, Notre Dame University, Lebanon. Professor R.C. Sharma, Faculty for Instructional Design, Ambedkar University, Delhi. Professor Vandana Punia, Dean Faculty of Education, Guru Jambeshwar University, Hisar. Dr. Madhuri Huda, Associate Professor, Department of Education, MD University, Rohtak.
Dr. Monica, Program Director, Early Childhood Care and Education, Dr. Manpreet Singh Manna, Former Director, MOOCS, Dr. Manpreet Singh Manna, Former Director, MOOCS, Dr. Manpreet Singh Manna, Former Director, MOOCS, Dr. Manpreet Singh Manna. The signals seem weaker at At the night. same time, I, on behalf of KIT Parivar, am really grateful to all the distinguished experts who gave their consent just over a phone call and spared valuable time for this 5 days academic journey in spite of their awfully busy schedule. We are really impressed by the way they responded us back every time we told them that we are committed to making online learning effective and effective for students. During the pandemic, which compelled the life to come to a standstill. During the lockdown period, all the educational institutions had to be closed and students had to sit at home, confined to the four walls of their homes. School students who always remain bubbling with energy, whose energy needs to be sublimated, were the worst hit. Parents were anxious and apprehensive as to how to manage their wards at home and how to help them in their studies. They were in a fix to decide what to do. They were heard saying कि पता नहीं मैडम इनको स्कूल कॉलेज में कैसे संभालती हैं. At this point of time, online teaching came to our rescue. Educational institutions rose to the occasion and started full-time online classes, of course, with some hiccups. Classrooms were confined to homes only, but the teachers did a wonderful job. Even those who were not so techno-savvy acquired skills for ICT-enabled teaching. We salute our teachers. Their task was not less important than the doctors, nurses, health workers, and other frontline corona warriors. Online teaching learning, if properly managed and executed, is a great option for future. Despite some limitations, it enables us to study at home in our own comfort zone. Online teaching does not discriminate between front benchers and last benchers, as is the case in traditional teaching. It is a cost effective and requires less infrastructure. It is convenient and flexible. In case of asynchronous online sources like digital library and Wikipedia, we can learn at any time, at any place, and our own pace. To make online learning more effective, teachers need to make it more engaging and student friendly by developing their own instructional material or e-content using text, pictures, graphics, animation, and videos, etc. And eventually they can develop their own MOOCs. As you know, MOOCs stand for Massive Open Online Course with open access and unlimited participation via web. MOOCs provide interactive courses on almost all subjects for students, teachers, and teaching assistants. It also has a provision of immediate feedback in the form of quizzes and assignments. There are four quadrants of MOOC. In the first quadrant, we always see the e-tutorials. We self-study the tutorials like we take the mastery over web videos, audio content, simulation, animation, virtual lab. And the second part deals with the e-content. It can be in the form of ebooks, text, self-developed instructional material, and case studies. And third part, web resources.
Means from where can we obtain our content from? We can obtain our content from supplementary reading, related links, quizzes, Wikipedia, and open educational resources about assessment, and it can be carried out through MCQs, quizzes, assignments, and solutions. Online feedback can also be obtained through discussion forums. India not only collaborated with some global MOOC platforms like Coursera, edX, and FutureLearn, but has also developed platforms of its own like SWAYAM, Neptel, MOOCIT, etc. And out of these, SWAYAM is widely used Indian MOOC platform initiated by Government of India. It is designed to achieve the three cardinal principles of education policy, like providing access to all, to bring equity and quality. And the objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged. SWAYAM platform is equipped for facilitating around 2,800 courses from class 9 to post graduation and offers free access to everyone. When you are trying to develop MOOC, you require e-content development for which you need to master some digital skills like to find, to create, to utilize, to share, and to evaluate. What must look like as if they belong to that place and not dressed in suit boot. Or we can just adapt what is available in our e-courses because there is a huge amount of open educational resources available in many areas, and we can use these to develop our e-learning. The open educational resources are really protected by copyright. Some of the open educational resources that you can refer to are Khan Academy, Lumen Learning, MIIT Open Courses, Merlot, OpenStax, etc. The utility of open educational resources can be explained by 5 R's. You can use these open educational resources in the form of reuse. You can use them to develop new content, to develop new courses, to develop new Dear participants, the main objective of this workshop is to sensitize teachers, research scholars, and students about the advantages of e-learning and to encourage them towards planning, designing, developing, delivering, and implementing MOOCs so that they can keep pace with the digital revolution of 21st century in which technology is blended with teaching learning pedagogies for better learning outcomes. So let us proceed forward to the exciting academic journey of 5 days. I don't want to stand between you and the learned scholar for long. So over to Mrs. Neetu Sharma for further proceedings. Thank you so much, ma'am. Ma'am, you have introduced our participants to the goal of this workshop and have created excitement and expectation, as well as you have motivated the attendees to stay with us until the end. Now it's time to begin with the technical session for day one. We have Dr. Manpreet Singh Manna, former Director AICTE, Founder Director SWAYAM, Ministry of HRD, Government of India. Sir will address us on the topic transformation from chalk duster to digital teacher. I request Dr. Rachna Sharma, Assistant Professor, KIIT College of Education, to formally introduce and welcome Manna. Ma'am, please. Thank you. Thank you so much. Ma'am, please unmute yourself. Thank you. Thank you so much, Neetu ma'am. Good morning to one and all. I, Dr. Rachna Sharma, Assistant Professor, KIT College of Education, welcome you all on 5 days online workshop on MOOCs, e-content development, and open educational resources, and its
it's a great privilege and opportunity for me to introduce Dr. Manna. Dr. Manpreet Singh Manna, born at Patiala, Punjab, graduated in Electrical and Electronics Engineering from Mysore University in the year 1993. He did his Masters of Engineering in Power and Machines from Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, and PhD from SLIET, Longowal, Punjab. Starting his teaching profession as lecturer from Sant Longowal Institute of Engineering and Technology in the year 1997, he attained the position of Director AICTE under Ministry of HRD, Government of India, New Delhi, on deputation from 2014 to 2018. During his 4 years tenure in AICTE, he also worked as director of Swayam MOOCS project and Prime Minister's Special Scholarship Scheme. Dr. Manna was given this important assignment to complete the Swayam platform within a time-bound manner, and he, with his persistent efforts and the able guidance of his seniors at MHRD and AICTE, completed the development of Swayam platform for hosting the online courses within a record time and declared the same go live for public well before the stipulated target, and for which Dr. Manna received Commendation Award from the Honorable President of India during the launch of Swayam platform on 9th July 2017 for his pioneering and outstanding contribution towards development of the platform. Dr. Manna's contribution towards Prime Minister's Special Scholarship Scheme has also been appreciated for providing scholarships to the meritorious students of Jammu and Kashmir in the reputed institutions throughout the country. Dr. Manna was invited by UNO Geneva for delivering a special talk on Swayam MOOCs during intersessional panel of United Nations Commission on Science and Technology for Development from 6 to 8 November 2017. Ministry of Human Resource Development deputed Dr. Manna to represent Government of India to participate in Asia Pacific Regional Seminar on Awareness of Swayam MOOCs for Higher Education held at China in 2018. He has given more than 200 keynote speech and sessions on the MOOCs development and delivery in the Indian universities and institutions in last 3 years. He also led the delegation from India with invitation from BRICS International Forum and Ministry of Energy, Russia at Moscow during Energy Week of Russia in 2018. Dr. Manna invited to attend on science, technology, and innovation for the SDGs 2019 at United Nations Conference Center, Bangkok, and to represent India for his World Workshop on Science, Technology, and Innovation for the SDGs, and has been included in IATT to preparation draft report on SDG 4 to put before UN Assembly in 2019. Dr. Manna is also life member of ISTE India, IACSIT Singapore, and Dr. Manna has published about 140 research publications for leading national and international journals and attended a number of conferences in the field of engineering and technology. आप देश के राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, अनेक सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए गए हैं, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है सर। आपके द्वारा शिक्षा और तकनीक में दिए गए विशिष्ट योगदान को हम सब जानते हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आपका यह परिचय किसी के मोहताज नहीं है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके बारे में मैं सबसे बांटना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक ईमानदार और संवेदनशील शिक्षक हैं जो समाज में समाज के उपेक्षित या गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आप और आपके धर्मपत्नी दोनों ही मिलकर इस सामाजिक सहयोग में लगे हुए हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को, और केआईटी के इस मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आपके इस सत्र से हम
शिक्षा और तकनीक के समावेश के विषय में बहुत कुछ सीखेंगे। इसी आशा के साथ अब मैं आपको मंच सौंपती हूँ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ इट्स ओवर टू यू। Thank you very much to all the institute faculty members, deans, directors, registrar, and core management. Special thank to Madam Indira ji, Neetu ji, and Madam Bansal to have given this opportunity and a long biodata of a simple teacher of Dr. Manna. Dear friends, the faculty development program have its own significance if we take it as a true development of faculty. The most difficult task which I feel in an education system is to teach a teacher or train a teacher. Reason is very simple. Because once we acquire a knowledge or so-called degree, we do go to the industry, we go to the other offices and service sector. We always curious to understand their system, their culture, and we are learners. But in a teaching fraternity, once we become an assistant professor and after 5 years or 10 years of experience, luckily we get opportunity to write some books, to publish some papers, to deliver to around 7 to 8 batches in our life, we feel we are now perfect. We are now a good teacher. And technology is changing so vastly, so fastly that if we are not going to be travel with the same speed and pace, being a teacher first, as a learner, we fail to deliver in the class, to deliver to society. So that's what we are not going to be change your curriculum of your system, of your subject. You all are subject master experts. You all, maybe it's from social science, maybe from management, maybe from engineering, maybe from medical sciences. And these kind of faculty development programs are not going to give you any new content or new book or new topic of your subject matter. These faculty development programs are going to give you the pedagogy, the technological pedagogy, the delivering art, the pattern, the curriculum designing, evaluation tools, and more or less outcome-based education system, which is prevailing in country India. And now with the new era of this education through NEP 2020, until unless we bring certain ingredients in our teaching and learning, certain new parameters, new dimensions, nobody is going to replace you. Technology is not going to replace you. But those are coming through technology, they may replace you. That's the only point. So I wish that you will be going to spend a 50 minutes with me today now. And of course, organizers, please give me the rights to share my screen. I thought they have given, so anyhow. And I hope that my internet speed and your internet speed is equally good, no muting in between, because when Ma'am Indirija was speaking, so that time there is some voice got missing, and I hope that internet speed is good. And yes, thank you for sharing me the giving the rights to sharing the screen, and I'm going to share my screen, and I hope it is visible to all of you, my screen. Yes, sir, it's visible. That's fine. So dear participants, you must be having some writing pad or pen with you, and you must be having certain queries. So definitely session 1 and session 2, both sessions queries I will definitely take, but in the second session, because I have to quickly go back to the international conference which is happening in Punjab University, Patiala for IEEE. Being a chair of Photonic Society, I supposed to have a keynote address, and I will be back sharp 11 there, and I will be joining you again for the second session. And I must say congratulations to the organizers. They kept in mind, because this topic needs minimum 2 sessions. That's why giving me 2 sessions. I can justify to my talk according to the. Okay, so we'll start. Just look at here why we are talking today about the digital teacher. I'm not going to ask you to become a robot. Please
Do not mistake me. I'm not going to ask you to be always available online. Never go to the classroom or your campus. Sorry. This is not also my way. I am the first person, being even a founder, so I'm saying you, without chalk and duster, there is no teaching and learning, at least in my country. Because my country is rich of values, rich of culture, rich of languages, rich of traditions. And without peers learning, when one student is coming from Kerala, other is coming from the Uttar Pradesh, and third is coming from Haryana, will not sit together to understand their language and culture, they can't serve to the society. क्योंकि देश हमारे प्रांतों से, शहरों से और हमारे सब भाई बहनों से जुड़ के बना हुआ है। देश इमारत नहीं है, देश हम सब हैं। आप देश हूं, मैं देश हूं, और हम सब भारतवासी हैं। यहां पर सिर्फ हमें कुछ नया लेके आना होगा। व्हाट इज दैट? सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, मुझे आपका डिजिटल माइंडसेट चाहिए। आई जस्ट नीड अ डिजिटल माइंडसेट, नथिंग एल्स। अगर आप डिजिटली सोचना शुरू करें, अगर आप अपनी सोच को बदलना शुरू करें, तो देश का शिक्षा का पसार बढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन ट्रेंड्स already arrived. Education through social media. Just recall the day on 21st of March of 2020, due to COVID, the whole world education system got standstill. Not only education system, the whole other, financial departments, the institutions of politics, they got standstill. How we could able to connect with our learners, with our students? That was only social media. That was through internet. You made a WhatsApp group, you made a Google group, you made a Google Classroom, and you send a message. Be cool, be relaxed. We will be coming to your home to teach you, of course, by virtual mode. So that was the call. A global schooling is a trend. Till date, we understand one thing. I want to give you one example. Around in 1989, I passed out 10 plus 2. When I passed out 10 plus 2, that time there was exam of CET for engineering test, that is called combined entrance test for the India, and there was an entrance test for the state level. Something was going on there. It just started in 88 or 87. You know what was the grading was happening? Oh, those passed from Punjab School Education Board, their 80% marks grabbed in a plus 2 are equivalent to 65% marks of CBSE. I was wondered. I was shocked sometimes. And sometimes they given this kind of gradation in admission for the 10 plus 2, 10 plus 1 for the colleges, because that time 10 plus 2 and was started in colleges also. उन्होंने कहा अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपका जो परसेंटेज है वैसे ही मेरिट बनेगी, लेकिन आप स्टेट बोर्ड से हैं तो हम उसको कम करके सीबीएसई के बराबर मैप करेंगे। कहने की बात को वो भी प्लस 2, वो भी प्लस 2, ये क्या था? ये अंतर कहां से आया? ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से आई? इसका मतलब प्लस 2 पंजाब बोर्ड में पढ़ाने वाला टीचर नहीं था, लेकिन सीबीएसई में पढ़ाने वाला टीचर। तो फिर उसको क्यों जॉब दी थी? वो स्कूल को आपने मान्यता क्यों दी? तो इसको अब आज की डेट में हमने जब ग्लोबल स्कूलिंग वर्ड यूज किया, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने सिर्फ करिकुलम को यूनिफॉर्म नहीं किया, आपने ग्रेड्स को भी यूनिफॉर्म किया, आपने टीचर को भी कम से कम यूनिफॉर्म किया, सबको एक आंख से देखने की कोशिश तो की। नहीं तो यहाँ पे तो जिसने सीईटी ईटी पास कर लिया तो वो टीचर है, जिसने नहीं किया तो टीचर ही नहीं है। समथिंग फ्लेक्सी करिकुलम। व्हाट इज द फ्लेक्सी करिकुलम? टिल व्हेन आई वाज इन बीटेक 93 पास आउट किया मैंने। मैं सारी एग्जांपल्स अपनी लाइफ के साथ जोड़ के दूंगा जो आज हो रहा है। आप कितने प्रिविलेज हैं आज के बच्चे, आज के बच्चों को कितना लिबरलाइजेशन मिला। सच में अगर उस समय पे हमें ऐसी एजुकेशन मिली होती, शायद हम और भी कहीं पहुंचे होते। ठीक है, भगवान ने हमें जो भी दिया अच्छा दिया, वैल्यूज के साथ दिया, ये सबसे बड़ी बात। मैं मानता हूं कि अगर कुछ एजुकेशन में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन हमारी वैल्यूज बहुत अच्छी, लाइक द पेरेंटल वैल्यूज, द फैमिली वैल्यूज, ऑफ कोर्स द ह्यूमन वैल्यूज एंड अदर थिंग्स। अब उन वैल्यूज को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सी करिकुलम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे टाइम पर भी इलेक्टिव्स होते थे, ऐसा नहीं था नहीं थे, बट when we go and take an elective, they say one elective for the whole class. Why? We don't have the good number of teachers. Only the one teacher is going to take the, so better you decide which majority will in the class will take elective, we will teach only that elective to the whole class. फिर भी elective का तो उसका तो परिभाषा ही चेंज हो। It
It is not the definition of elective. कम से कम हमारे देश में जब 2016 में ये नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू MHRD आज MOE हो गया, ये आया कि आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम देते हैं। आप अपनी मर्जी से फॉरगेट इट कि आप सिर्फ इलेक्टिव ही लेने वाले हो, आप इलेक्टिव बाहर यानी कि आउट ऑफ करिकुलम जाके, आज इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा अगर डांस या म्यूजिक भी लेना चाहता है तो स्वयं के माध्यम से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ले सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सी करिकुलम, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। This is the NEP 2020 is a one of the bold line. What is that? It is not, do not confused with it and misinterpret. उन्होंने ये नहीं कहा कि देश के स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, विदेश के कॉलेज स्कूल यहाँ पर लाकर खोल देंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा जो बच्चा हिंदुस्तान के गांव में भी पढ़े वो भी यूएस के गूगल में जाके नौकरी कर सकता है। उनका कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर, the actual meaning of this internationalization of means you raise your standards of your school teaching and learning, forget it about the ambience and walls. आप दीवारों पे पेंट करेंगे नैरो लाइट, वो अलग बात है, आप वॉशरूम्स पे सेंसर्स वाले टैप्स लगा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप जो क्लासरूम में टीचिंग करवा रहे होंगे ना, उसके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा राइज कीजिए, उसको एक यूएस रैंकिंग पर लेके आइए, एक एक्रीडेटेड मॉडल बनाइए। जो बच्चा आज गांव से पढ़ता है, आज से 10 साल पहले जो गांव से 20 साल पहले जो गांव से पढ़ता था, उसको शहर के कॉलेज में भी एडमिशन, क्यों? वो आंकड़े मैच नहीं करते थे ना। क्या आंकड़े थे? सर इसके पास तो सॉफ्ट स्किल्स नहीं, सर ही इज नॉट एबल और शी इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट इज अ बॉम्बे, इट इज अ कोलकाता, इन अ मेट्रो सिटीज। सो फॉरगेट इट अबाउट द मेट्रो सिटीज, नाउ द फ्यूचर एजुकेशन सेज इंटरनेशनलाइजेशन। गांव का बच्चा भी उतना ही इफेक्टिवली ग्लोबल सिटीजन निकलेगा जितना कि आपका न्यूयॉर्क में पढ़ने वाला बच्चा होगा। और इन सब के लिए टीचर्स के साथ हमें टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड फ्लिप क्लासरूम। ये फ्लिप क्लासरूम के ऊपर मैं चर्चा करूंगा सेकंड सेशन में, और वर्चुअल क्लासरूम के ऊपर। ये फ्यूचर एजुकेशन को हमने सोशल मीडिया के साथ जोड़ने की कोशिश की, मैंने नहीं जोड़ा, शायद हम जोड़ते भी ना, हमारे लर्नर्स ने जोड़ दिया है। टेल मी टुडे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, दे डू विजिट फिजिकली इन द लाइब्रेरी? नॉट टुडे, फ्रॉम लास्ट 1 decade। सच में जितने फैकल्टी मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि उन्होंने लाइब्रेरी से लास्ट कब कब बुक्स इशू करवाई थी, जब लाइब्रेरी में जाकर बैठ के लेक्चर्स तैयार किए। क्योंकि हमें भी स्क्रीन अच्छी लगने लगी, हम भी लैपटॉप पर आते हैं, आईपैड पर आते हैं, टैब्स पर आते हैं, और टेलीविजन पर आकर हम सीखने की चेष्टा करते हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी ने जब टीचर के ध्यान को दूसरी तरफ लगाया तो बच्चे का ध्यान तो जाएगा। So the today's learner is a more screen savvy. So when the today's learner is a screen savvy, we have to have a synchronous and asynchronous learning technology, methodology, and pedagogy. Suppose today around 60 participants are listening to me. They may like, they may not like my lecture or my delivery, but those will like, if they would like to share this content to someone else, how they will? Although today I am also not physically present in KIT education institution, I am also still sitting in my campus and using my own computer and electricity to be with you. So by making this recording of today's session, these organizers may make reach this today's FDP's learning program to the many more learners, those even not haven't registered to this FDP program. This is asynchronous learning methodology. I conducted a similar FDP in 2020. तब कोविड था, मैंने एक FDP करवाया अपने कैंपस से, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ डिजिटल मोड। तो बहुत डिमांड आई, 190 तो पार्टिसिपेंट ही थे। उसने कहा सर हमें तो औरों को भी बताना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबके सेशन, सबसे अनुमति ली, जितने स्पीकर्स थे इंक्लूडिंग वंदना मैम, आपको भी पढ़ाने आएंगी, शर्मा जी आपको भी पढ़ाने आएंगे, they are going to give the lecture, I could see the schedule. I just put all the lectures recorded on the YouTube and made it free to all. So what is happening? More the learners or teachers, those are
attending this kind of programs or watching the videos of this kind of programs, they may add on it. आपको मेरी दो बातें अच्छी लगी तो आपकी तो अच्छी ऐड करोगे ना उसमें. सो जब आप स्टूडेंट्स को क्लास में बताने जाएंगे फ्लिप लर्निंग के बारे में, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के बारे में, डॉक्टर मन्ना की दो लाइनों के साथ आपकी दो लाइनें और जुड़ जाएंगी. इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. This is called a blended learning, and this is what you are going to give it. What are these kind of tools we are going to use? Today we are using, you may use the Google Meet, you may use different tools, video conferencing. Most of our cabinet ministers nowadays, they do come through video conferencing. All the bureaucrats, they come through video conferencing. And the organizations and companies, they are saving huge money just by using the video conferencing and mobile learning, internet learning methods. You know, जो आज से 3 साल पहले स्टार्टअप था, 4 साल पहले स्टार्टअप था, आज उसका इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है कि वो बड़े बड़े क्रिकेट मैच को भी स्पॉन्सर करता है, जिसको बायजूस के नाम से आता है. बायजूस आज से 5 साल पहले बायजूस नाम ही नहीं था. हमें एलन सुनने में मिलता था, हमें रेजोनेंस सुनने में मिलता कि बच्चे को इंजीनियरिंग की एंट्रेंस करवानी है तो कोटा में भेजना पड़ेगा. वहां पे जाके फिजिकली रुकते थे बच्चे, 2-2 लाख 2.5 लाख बच्चे एक सिटी में राजस्थान की जाकर रुकते थे, और फिर उसके बाद कहते थे कि ये बच्चा आईआईटी का एग्जाम देगा, जेई एडवांस का एग्जाम देगा. आज नहीं जाना पड़ रहा. आज उनको के घर कंप्यूटर भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, टेलीविजन के माध्यम से फ्री टू एयर डिश 35 चैनल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रही है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसके सब्जेक्ट्स हैं? वो यूजीसी के सब्जेक्ट्स हैं, सीईसी के सब्जेक्ट्स हैं, इग्नो के सब्जेक्ट्स हैं, एनआईओस के सब्जेक्ट्स हैं. ये क्यों दे पा रहे हैं? क्यों हमारे पास एजुकेशन is going to be spread with the technology based tools और gamification. I started 5 years back, क्लास में एक बार मुझे टेस्ट लेना था. स्टूडेंट्स कह रहे सर कल देंगे सर, तैयार नहीं है, we are not ready. I said okay, I'm not going to take a test today, we are going to play a game on your mobile. Where's your mobile? No, मेरा मोबाइल मैं क्लास में यूज कर सकता हूँ. मैंने कहा yes, don't come without mobile to my class. अरे सर, you are my favorite teacher. क्यों? मैंने जैसे उनके मन की बात की तो मैं उनका फेवरेट हो गया. बच्चों ने मोबाइल को निकाला, मैंने एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल कराई जिसका नाम काहूट. मैंने कहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना है, जैसे मोदी जी खेलते हैं अपने उसमें, सॉरी अमिताभ बच्चन जी खेलते हैं केबीसी में, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे. चलो जी खेलते हैं. मैंने अपनी टेक्निकल क्यूज उसी पर खिलाई तो बच्चों ने उसके आंसर्स दिए, और मैंने बाद में जाते हुए कहा कि आपकी गेम हो गई, मेरी इवैल्यूएशन होगी. I could find how many students got 3 out of 10 and how many got 10 out of 10. और नॉलेज तो आपके अंदर थी, जब आप आंसर दे रहे थे आपने दिमाग पे जोर डाल लिया था. सो क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने मुझे 6 के 6 लेवल अच्छे से बता रखे हैं, कि सिर्फ रिमेम्बरिंग पर नहीं रुकूंगा, रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग पे भी जाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग के बाद एनालिसिस भी करूंगा, एनालिसिस के बाद मुझे आगे बढ़ते बढ़ते क्रिएटिविटी तक लेके जाना है. I have to go to the creativity. These are the 6 levels of cognitive which you are going to learn in this FTP, and this is what we are going to link with the artificial intelligence nowadays. What is the voice facilitators? आज डॉक्टर मन्ना का आवाज ठीक है, तंदुरुस्त है, तो आज लेक्चर देने आ रहे हैं और क्लास में एक सेमेस्टर लगातार पढ़ाना होता है, कभी मेडिकल लीव भी लेनी पड़ जाती है, और स्टूडेंट कहता है पढ़ूंगा तो अपने टीचर से पढ़ूंगा, नहीं तो किसी से नहीं पढ़ूंगा. अब उस केस में अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मैं अपनी वॉइस देके बच्चे को नया कंटेंट दे दूंगा, तो उसको जरूरी नहीं कि मेरी शक्ल नजर आए. आप छोटे से एक 3 महीने के बच्चे को आप झूले में डाल देते हो, और माँ उसके बगल में अनुराधा पौडवाल की भी अगर वो लगा देती है लोरी, तो बच्चा रोता रहता है. लेकिन माँ अगर अपनी आवाज से, भले उसका गला भी इतना साफ नहीं, लेकिन मोटी आवाज से भी वो गाना लोरी का 2 लाइनें सुनाती, तो बच्चा सो जाता है. बच्चा किसके साथ जुड़ा हुआ है? बच्चा भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है. भावनाएं शब्दों से आती हैं, आपकी ध्वनि से आती हैं, आपकी आवाज से, आपके फेशियल से, आपके जेस्चर से आती हैं. तो अगर आपके स्टूडेंट्स को आपकी वॉइस के लेक्चर मिल जाए, अगर आप किसी कारणवश वहां पर उपस्थित नहीं है, I think you are delivering equally with the same competency, with the same courage. These kind of facilities are going to be there. Now we come to the Alexa, Google Assistants. हो सकता है आपके मोबाइल, जिन्होंने मोबाइल्स परचेज कर रखे हैं आजकल एप्पल के और अच्छे एंड्रॉइड के वर्जन, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सीरी क्या है, एलेक्सा क्या है, गूगल असिस्टेंट क्या है और काइजिला क्या है. आप सीरी से पूछते हैं
सीरी आज टेम्परेचर कितना है वो बता देती है, सीरी इसका मीनिंग कितना वो बता देती है, वो आपकी बातें सुनती है और आपका जवाब दे देती है। और इवन मैं कार में ड्राइव करती हूँ सीरी के थ्रू बातें करता हूँ, मेरा वो गूगल नेविगेशन चला देती है, मेरी वाइफ से मेरी फोन पे बात करवा देती है गाड़ी चलाते चलाते विदाउट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आजकल ब्लूटूथ अनेबल्ड स्टीयरिंग्स आ चुके हैं व्हीकल्स में, और वी आर सेफ विदाउट टचिंग अ मोबाइल, वी कैन हैव अ discussion. What the new experiment is happening in a Arizona University Science. ASU क्या कर रहा है, उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स को आप अलेक्सा साथ में लेके आए, और अलेक्सा आजकल एक ऐसा है, दिवाली पे सब बच्चे गिफ्ट में ले लेते हैं मम्मी पापा से बर्थडे पे, इट्स नॉट अ कॉस्टली थिंग, ये तो मुझे चाहिए अपने कमरे में। अलेक्सा प्ले माय सॉन्ग, अलेक्सा प्ले माय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, अलेक्सा स्विच ऑफ माय लाइट्स ऑफ माय रूम, अलेक्सा प्लीज मेक माय लैपटॉप स्लीप, ये सारा कुछ अलेक्सा करता है। आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके साथ आप अपने घर की जो भी डिवाइसेस हैं उनको आप इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर उस पर्पस के लिए अलेक्सा को यूज नहीं किया है, हमने टीचिंग लर्निंग में इसको यूज किया है। मैं अब आपको इसका एक सही उदाहरण देता हूँ। What they are doing, whenever you are in the class, you are attending a class, same times your Alexa sitting idly on the bench, it's just like a instrument, छोटा सा एक स्पीकर जैसा है, वो पड़ा रहता है, वो आपका लेक्चर आप भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहा है, सुन लिया, आप घर आ गए, अब आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते हो तो आपने नोट्स लिखे होंगे, तो कई बार आपके बच्चों के नोट्स पूरे नहीं लिखे जाते। क्यों? हमारे देश में एक मूवी बनी थी तारे जमीन पर, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने मुझे पूछा सर ये नैक कराते हैं, एनबीए करवाते हैं, तो स्लो लर्नर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैंने कहा आप तारे जमीन पर मूवी देख लीजिए, वैसा टीचर बन जाइए, आपको 2 मिनट में पता चलेगा स्लो लर्नर्स क्या होता है और स्लो लर्नर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। स्लो लर्नर डज नॉट मीन कि उसके पास टैलेंट नहीं है, स्लो लर्नर डज नॉट मीन कि कल वो कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर स्लो लर्नर को रेमेडियल क्लासेस और आमिर खान कैरेक्टर जैसा वहां पे टीचर जो दिखाया गया था वैसा टीचर मिल जाए। अब अलेक्सा यहाँ पे क्या कर रही है, किसी कारणवश अगर टीचर को आपने सुना, सपोज मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टुडे दे आर सिटिंग अलोंग विद अलेक्सा एंड somehow they could not understand my Hindi, but they want to understand what exactly Professor Manna speaking in between Hindi. So the Alexa will translate for you because the recording has been done by the Alexa. Alexa जो सुनता है रिकॉर्ड कर लेता है। आपने उसको पहले कमांड दी थी क्लास मेरे साथ पूरी अटेंड करना, अलेक्सा ने पूरी क्लास अटेंड किया। अब आपने कहा कि मुझे इसका कुछ रेफरेंस दो दूसरी किताब का, अलेक्सा कहेगा प्लीज ओपन बुक ऑफ दिस, आर्टिकल दिस, वेब रेफरेंस दिस, विकिपीडिया दिस। स्टूडेंट विल गेट अ वेरी गुड मटेरियल विदाउट डिस्टर्बिंग। अच्छा एक चीज और बताऊं, आप भी करते होंगे, छोटे हो तो मैं भी करता था। कॉपी में पहले मैंने इंग्लिश का माय प्रेसिडेंट का ऐसे पढ़ लिया, उसके बाद मम्मी मेरे से सुन लो, तभी मुझे याद होगा। बेटा मामा देखो खाना बना रहे हैं ना, आप पापा के पास जाओ, पापा को सुनाओ आज बेटे ने क्या याद किया। अब पापा के पास जा रहे हैं तो पापा जी लैपटॉप से फ्री कहाँ हो पा रहे हैं, उनको तो अपना भी फेसबुक पे भी चलना है, व्हाट्सएप पे भी रहना है और शेयर मार्केट भी देखनी है। बेटा बड़े भैया को उठा के सुनाओ। अब बच्चे को सीधा तो मना नहीं करते ना, आजकल पेरेंट्स थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए, हमारे टाइम पे तो थप्पड़ी मार देते, चल भाग जा, सारा दिन डिस्टर्ब करते रहता है, तो तूने कौन सा पढ़ के पता नहीं क्या कर लेना है, ये ऐसे ऐसे करते रहते थे हमारे पेरेंट्स, और शायद तभी हम कुछ बन पाए, क्योंकि उनके थप्पड़ों से सीख से हम ज्यादा अच्छे उठ पाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब उस समय पे बच्चा कह रहा है कि अगर मम्मी पापा दोनों अपने करियर ग्रोथ में बिजी हैं, जब अपने कामों में बिजी हैं, दादा दादी को अपने छत पे बिठा दिया और अब मैं करूं तो करूं क्या। उस समय पे आपका ये अलेक्सा बहुत काम करता है, आपका सहायक बन जाता है, बिकम्स योर असिस्टेंट, बिकम्स योर पीयर्स, बिकम्स योर फ्रेंड। आप अलेक्सा को सुनाओ, अलेक्सा कहेगा नहीं यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो, राजधानी दिल्ली है, बॉम्बे नहीं है इंडिया की। अच्छा 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 हाँ दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर हो रहा है। अगर टीचर पहले टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो बच्चा टेक्नोलॉजी यूज जरूर करेगा लेकिन वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। पूछिए कैसे, आपको वो भी एग्जांपल दे देता हूं। आज भी YouTube उतना ही देश में चलता है, प्रचलित है जितना 10 साल पहले था, और आई एम श्योर कि 10 साल बाद भी YouTube रहेगा। और YouTube क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स, नॉट अ MOOCS, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओपन एजुकेशन रिसोर्स इज इंटायरली डिफरेंट देन MOOCS। इसके बारे में आपको प्रोफेसर शर्मा जी बहुत अच्छे से बताएंगे अपने सेशन में, तो वहां से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, YouTube पर आप जो भी टाइप करेंगे आपको सामग्री मिलेगी वीडियो। अगर आपने YouTube पे ये भी लिख दिया ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू द सुसाइड, आई एम सॉरी टू से, यू विल फाइंड इट। इसलिए अगर आपने बच्चे को सिर्फ संसाधन दे दिए, साधन दे दिए,
और शिक्षा नहीं दी कि इसका सदुपयोग कैसे करना है, चाहे वो कार हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, तो उसमें यू फेल्ड. स्टूडेंट नेवर फेल्ड, यू फेल्ड एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन. क्यों? आपने बच्चे को संसाधन तो दिए, साधन तो दिए, लेकिन उसको उपयोग करने की शिक्षा देने में आप चूक गए. तो वो जो उसको नजर आया वो उधर चला गया, उस दिशा में चला गया. उसने कुछ भी पोर्नोग्राफी देखी, उसने कुछ भी देखा, वो ड्रग्स की तरफ चला गया, वो वायलेंस की तरफ चला गया, लेकिन वैल्यूड कंटेंट नहीं देख पाया. क्योंकि यूट्यूब पे आपको अगर चाहिए तो यूट्यूब पे सदगुरु भी मिलते हैं सुनने के लिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे गीता के सार भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपने तो उसको लिंक ही नहीं दिया, आपने उसको लिंक किया ही नहीं. So that's the teacher's role to become a digital teacher. Look at the growth in the society, huge growth in social media. Why so? Look at by, अगर आपको पैसों से समझ में आता है तो डॉलर्स में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आप पकड़िए मेरी बात को कि सोशल मीडिया, आपका मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च मार्केटिंग, ये सारे बहुत आगे बढ़े हैं. पहले इश्तिहार आते थे अखबारों में, एमबीडी की किताबें छपती थी, अब नहीं मिलती है. अब जो कुछ किसी को ढूंढना है वो मोबाइल पे जाता है. टीवी पे न्यूज देखनी बंद कर दी हमने, जब से हमारे मोबाइल पर आपका हॉटस्टार आ जाता है, मोबाइल पे इंशॉर्ट्स आ जाता है, हम उधर चले जाते हैं. तो कुछ इस तरह से आपके पास कुछ टूल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, माईस्पेस, लिंक्डइन. आज मैं इंडिया की भी बात करूं और इंडिया के बाहर तो 101% कहता हूं. इफ एनीबडी इज गोइंग टू अप्लाई टू सम कंपनी, they will not ask you to submit the physical resume, biodata. They will ask you the LinkedIn profile. आप अपना LinkedIn का एड्रेस देंगे. और हमारे इंडिया में भी अब हम विद्वान का आईडी मांगते हैं. अगर आपने फैकल्टी अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ जो प्लेटफॉर्म है विद्वान, आप उसका आईडी देंगे अपना 6 डिजिट का, तो वहीं पे आपका जो आपने लिखा, मैंने कितने पेपर पब्लिश किए, मैंने कितने पेटेंट्स किए, मैंने क्या किया, सारा कुछ विद्वान पे आपने अपलोड किया होगा, वेरीफाइड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और वही होगा जब ORC आईडी जिसको हम कहते हैं, ओपन रिसोर्स जो हमारे आज की लेवल में चलता है. तो ये क्या है? पहले हमें बायोडाटा साइन करके सबमिट कराना पड़ता था. कहता फॉरगेट इट, मैं आपको फेसबुक से ढूंढ लूंगा. हम किसी स्टूडेंट की जब भी हम इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी को ज्वाइन कराना होता है, तो उसका टीचिंग टेम्परामेंट मैं उसको 10 मिनट में असेस नहीं कर सकता. मैं 10 मिनट में उसको क्या पूछूंगा? ओम्सला पूछूंगा, केसीएल केवीएल पूछूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, कहाँ रहते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, और यहाँ पर तुम कितने में ज्वाइन करोगे, तो ये इसमें 10 मिनट मेरे खपत हो जाएंगे. लेकिन क्या वो सिस्टम के लिए क्रेडिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं उसकी फेसबुक पे चला जाता हूँ. मैं क्या करता हूँ? उसकी पोस्ट देखता हूँ, उससे मुझे उसकी साइकोलॉजी पता चलती है कि ये घूमने में ज्यादा शौक रखता है, इसने किसी अच्छे वीडियो को शेयर किया है, इसने एक अच्छी पोस्ट को शेयर किया है, और बिना मतलब के ये कोई भी जो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं उसको भी ये प्रमोट कर रहा है. तो कुछ ना कुछ आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट हम आपके सोशल मीडिया से हम ले लेते हैं. तो कहते हैं आजकल किसी से रिश्ता करना हो ना, तो naukri.com पे पहले उसका बायोडाटा देखते हैं, उसके बाद हम उसके सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, क्योंकि सबने अपने अकाउंट्स तो बना ही रखे होते हैं, किसने पब्लिक रखे होते हैं, किसने लॉक किए होते हैं, तो उसका फ्रेंड बन जाते हैं. तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह की पोस्ट डालता है, ये क्या चीजें लिखता है. अगर आप डॉक्टर मन्ना को जानना चाहते हो तो डॉक्टर मन्ना के 1 घंटे के लेक्चर को सुनने से पहले आप डॉक्टर मन्ना को गूगल करके देखेंगे कि सच में ही इज ए स्पीकर और नॉट. कहीं ऐसे तो नहीं मैडम ने गलती से बुला लिया किसी को. सो देन यू हैव टू गूगल आउट, यू हैव टू राइट द नेम, यू विल फाइंड whether he is a true speaker or he is some चलता फिरता आदमी है, तो किसी को लाके बिठा दिया टाइम पास करने के लिए. So these are the tools, the social bookmarking, Delicious, photo sharing, Flickr, Photo Bucket, video sharing, YouTube, blogs, wikis, etc. These are the social media tools which have to have the part of your teaching learning. अगर आपको आज एक डिजिटल टीचर की तरह क्लास में बच्चों के साथ अपडेटेड रहना है, ताजो बच्चों, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी सीधी सी बात बता दूं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे. कभी भी कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं बनता until unless वो टीचर फेवरेट ना बने. जिस दिन आपका टीचर फेवरेट हो जाता है, उस सब्जेक्ट पे आपका रुझान ही बढ़ जाता है. You start learning like anything because you like that teacher more. The teaching of the teacher, the attitude, the behavior, the personalization. उस टीचर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा 2 दिन से क्यों नहीं आए सर, घर में ठीक है? अरे सर ने मेरे लिए इतना कंसर्न शो किया, सर ने मेरे पिताजी का हालचाल पूछा,
तो वो उससे उसको टीचर की कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं, वैल्यूज अच्छी लगने लगती है। टीचर ने अपनी किताब शेयर की, बेटा इसमें से नोट्स बना लो। टीचर ने उसको 2-4 और चीज देता, बेटा घर जाओगे अगर समय मिले तो ये वाली एक साइट पर जाकर देखना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और कभी टीचर हमारे ऐसे भी थे कि वो जो किताब से पढ़ाने आते थे उसके ऊपर अखबार चढ़ा के आते थे कि पता न चल जाए कि मैं किस किताब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से पेपर बनाना है। और हम लाइब्रेरी में से किताबें ढूंढते रहते थे, और जब पढ़ के जाते थे पता चलता था कि ये तो सबसे हल्की फुल्की किताब में से पेपर आ गया। और सर कहते अगर मैं पहले दिखा देता तो फिर मुझे रिस्पेक्ट ना मिलती। शायद उनके दिमाग में ये था कि मुझे इज्जत मिलेगी, जितना मेरा सब्जेक्ट खतरनाक होगा आप उतना झुक के सलाम करोगे, मुझे गुड मॉर्निंग करोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही बड़ा भारी भरकम है सर, इसमें कहीं सप्ली ना आ जाए। ऐसी सोच के भी टीचर हमें मिल जाते हैं। मैं भी टीचर हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। उंगलियां कभी भी 5 बराबर मिलती हैं। और कुछ ऐसे टीचर भी मिलते हैं कि नोट्स अपने हाथ के बनाए हुए खुद पकड़ा देते थे कि ये मैंने रात को नोट्स बनाए, ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसको अच्छे से कर लेना। और कई बार टीचर्स के नोट्स तो हम इतने प्यार से लेते थे, उसकी फोटोकॉपी कराते थे कि टीचर के हाथ के लिखे नोट्स, और आज भी संभाल के रखे हुए हमने। तो हमें यही देखना होगा कि हम जिनको सिखाना चाहते हैं, जिनके हाथ में अपना देश देना चाहते हैं, हम उनके पास जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। पेरेंट्स भी अपने पीयर से दूर होते जा रहे हैं, और टीचर्स भी लर्नर से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? वो जिस टेक्नोलॉजी में बात करते हैं हम उस टेक्नोलॉजी में बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं सर आप आउटडेटेड हो गए। क्यों भाई? सर आपको तो यही नहीं पता कि लिंक्डइन क्या होता है, सर आपको तो पता ही नहीं है पोगीमान क्या होता है। अरे पोगीमान मैं भी देखता हूँ, बताओ पोगीमान की कौन सी सीरीज ऐसी तुमने देखी जो मैंने नहीं देखी। हमें समय देना पड़ता है। एक माता को पूछो, सच में, जो घर में 3 साल के नन्हे बच्चे को पालती है, उसको पूछो कि तुम्हारा नन्हा बच्चा नटखट है, तुम उसको चूरी खिलाना चाहती हो और वो भाग रहा है बरामदे में, क्या तुम उसको थप्पड़ मार के एक चेयर पे? नहीं नहीं सर, क्या बात करें, छोटा बच्चा, उसको भी क्या पता कि बैठ के खाना खाना। मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे मामा आई उसके मुंह में चूरी। अच्छा, तो बहन जी, इसका मतलब आपने यू टर्न ली? हाँ सर, मैं टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाती, लेकिन बच्चे को मैंने भाग भाग के चूरी खिलाई क्योंकि उसका पेट भरना है। तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा वो टेबल चेयर पे बैठ के सीखेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ टीचर को। आप पहले दिन ही क्लास में अगर कहें कि तुम मेरे तरह डिसिप्लिन होके आ जाओ क्लास में, वो पहले दिन नहीं आएगा। धीरे धीरे पहले दिन आप उसके साथ भी अंताक्षरी खेलो, आप उसकी भी बातें सुनो, उसके मन की भी बातें सुनो, धीरे धीरे अपने करिकुलम में उसको डालो। तभी एआईसीटी ने स्पेशली यह प्रोग्राम शुरू किया कि पहले 3 हफ्ते बच्चे को क्लासरूम में लेके ही नहीं जाना है। जब वो बच्चा +2 करके इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है, डिप्लोमा में दाखिला लेता है, हम उसको 3 हफ्ते इंडक्शन प्रोग्राम, उसको आप पार्क में लेके जाओ, मेस में लेके जाओ, आपके कैंपस के हर जगह पे लैब्स में लेके घुमाओ, उसके साथ बातें करो, कुछ अच्छी बायोग्राफीज अब्दुल कलाम जी की बातें करो, आप उनके साथ विवेकानंदा की बातें करो। उनको कुछ ऐसी, उनको लगे टीचर ने, ये तो मेरे फ्रेंड है, मेरे सीनियर है, मेरे गाइड है, मेरे मेंटोर हैं। बस उसके बाद फिर जब आप अपना करिकुलम देंगे तो वो भी उसको वही लगेगा कि सर मेरे लिए कुछ दे रहे हैं, मेरे लिए कुछ बताने की बातें कर रहे हैं। तो करिकुलम कुछ इस तरह से आपको रीडिजाइन करना होगा, री इन्वेंट करना होगा, रिविजिट करना होगा। मैं आपके करिकुलम में से कुछ कोर कंपिटेंसी निकालने की बातें नहीं करने वाला हूं। आई डोंट से दैट कि आप मैथमेटिक्स निकाल दो इंजीनियरिंग में से, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा मैथमेटिक्स वही रखो लेकिन मैथ्स की लैब भी लेके आओ। मैंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दो क्लास में, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाओ लेकिन लैंग्वेज लैब भी लेके आओ। क्यों? आज बच्चा जो अपने आप से करके सीखता है, एक छोटे से आप सब कुछ ना आपको घर में बिल्कुल उदाहरण, एक 7 साल के बच्चे को बुलाओ, 10 साल के बच्चे को बुलाओ और कहो बेटा चलो आज मामा कहती है कि तुम चाय बनाओगे। हाँ मामा बताओ बनानी। अगर आप कहोगे ना मेरे हाथ से पेन पकड़, मेरे को देख मैं कितना पानी डाल रही हूँ, मेरे को देख मैंने लाइटर, मामा लेक्चर मत दो, आप मुझे बता दो चाय बनानी है ना, मैं देख रहा हूँ आपको 2 सालों से, मैं आप पास में खड़े हो जाए लेकिन लेक्चर मत देना। मैंने अपने बेटे को ड्राइविंग सिखानी शुरू की। कहा एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन कहता मम्मी को पापा को बोल दो जा तो ड्राइविंग स्कूल वाले को बुला लो, जा फिर वो मुंह पे वो कपड़ा बांध के बैठना पड़ेगा, इतना ज्यादा लेक्चर देंगे तो मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू कहीं लगा देगा? पापा लगाई तो नहीं ना। तो मुझे लगा कि इनके पास वो पेशेंस नहीं है कि वो इतने लगातार, तो उनको थोड़े से बुलेट पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो गलती कर बैठेगा, फिर हम भूल जाते हैं कि गलती तो हमने भी की थी, बिना गलती की तो हमने भी नहीं सीखा। तो कई बार गलतियां होने देनी चाहिए, बस आपका वहां पर रहना जरूरी है कि आप उसको उस गलती से बचा लें जो कहीं ऐसी हो जिसकी भरपाई हो सके। लेकिन छोटी चोट तो चाहिए होती है, कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो कई बार दाग अच्छे भी होते हैं और हमें
ये वाली पेशेंस लानी बहुत जरूरी है, और टेक्नोलॉजी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 मिनट में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, आज का बच्चा हर चीज में शॉर्टकट मांग रहा है, वो इम्पेशेंट होता जा रहा है। अगर हम पेशेंस लूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वी हैव टू हैव द पेशेंस। व्हाट इज द पास्ट एजुकेशन ट्रेंड? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो बेटर देन मी, and we all have gone through with this past education system, but now to make it a future we should understand the current. If today, if you are going to present your PPT and your PPT is still not uploaded on a slide share and you are looking for your pen drive, or you're looking for मेरा PPT open नहीं हो रहा है, यहाँ पे दूसरा वर्जन है, तो फिर मैं कहूंगा सर आप आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर आपने अपनी PPT बनाई थी तो आपको स्लाइड शेयर पे सेव करके रखनी चाहिए थी, जब आपकी गूगल पे आपका ड्राइव में पड़ा रहना चाहिए था, ड्रॉप बॉक्स में रहना चाहिए था। Wherever you go and you can just play and you can show your PPT. Like similar, there are so many small things which you supposed to be understand how to make use of technology for your betterment of teaching and learning in the system. So national assessment जो नया आज हमने शुरू किया है, उसमें MHRD MOE जो अब हो गया है, उसने बड़ा एक क्लियर कट बात किया कि हमें तो परख करनी है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आज से 10 साल पहले मैं मानता हूं, मैं भी एसीटी डायरेक्टर रहा हूं, तो हमने भी इस चीज का विरोध करके बंद करवाया कि इंची टेल पे लेके चले जाते थे कि आपके क्लासरूम इतने बाय इतने का है, आपके क्लासरूम में इतने बेंच लगे हुए हैं, अब पूछिए कौन क्लासरूम देखने जा रहा है, आपकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, ये गिनती करवाते थे हम। तो ये सारी चीजों से हट के अब हम थोड़ी सी बात करने लगे हैं नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में सिर्फ क्लासरूम के अगर एंटी टेप से ना भी मापे, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी फैकल्टी ने आउटसाइड कैंपस जाकर कभी कोई लेक्चर्स लिए जा दिए? आपकी फैकल्टी ने दूसरी फैकल्टी के साथ मिलकर कोई पेपर पब्लिश किया, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया, जब उन्होंने अपने कुछ वीडियोस बना के ई लर्निंग ई कंटेंट डेवलप किया, तो शायद हमें लगेगा कि आपकी फैकल्टी अपडेटेड है, समाज के साथ उसको चलना आ रहा है, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना आ रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। So these are the standard settings which are coming for the school as well as for the education. These are the delivery content tools. I think more or less you must be aware about this, and you will be using if you want to become a digital teacher. You should be aware about these icons and their freeware versions. That is the open source versions which you can use for teaching your learners. Because in coming days and months and years, this will be not 100% offline teaching. It will be a blended mode. Around 40 to 60% you must be going for the online. For your theory components, for the practical components, you may invite your learners to come to the campus and start taking the labs use and your peers learning part. So these are the certain applications, and even the assessments can be done well. I doubt some of the faculty even doesn't know the actual definition of the rubrics and what is the rubrics. And until unless you understand the rubrics, you may not be able to get the attainment factor or attainment index or attainment level of your total program. Suppose you are teaching a B.Ed or you are teaching M.Ed or teaching B.Tech. So whatever the program you are delivering for the 4 years of time or 3 years of time, there should be a proper attainment so that you can fix your targets for the upcoming class. And for this attainment, we start the journey from starting from the vision of the institution, touching the mission of the institution, then of course your program outcomes, program specific outcomes, and your course outcomes. These all becomes the part of the rubrics for which you are getting the attainment level. And that is nowadays available very much on a Google Classroom like a platform, which is open source, or a Microsoft Teams, etc., for which you can directly give the grading system or even a marks to the learners by fetching your keys, by fetching your answer keys in that. I'm not talking only MCQs, even a subjective papers. Yes, in subjective papers, you will put some keywords और उसके पैराग्राफ को स्कैन करके मशीन, हमारी मशीन लर्निंग टूल बता देगा कि बच्चे ने मोर और लेस कितना ग्रैब किया, कितना ग्रास्प किया, कितना अंडरस्टैंड किया, so that he could deliver on the answer sheet, he could present on the answer sheet. This is a very new technology and definitely working, and Turnitin is one of the example for this.
So the course might be 80% practical and 20% theory in some of the cases. When it is going to be 80% practical, so simulation world is most important. I think you understand well. Before going to fly in an aeroplane, they have to have 100 hours of simulation flights. Same case when you go for the driving lessons in a now transportation office, they will ask you to be sit on a simulators and you drive like a car as you are real time, you're driving a car. Why? Energy saving, risk saving, and more or less having a similar experience. That same kind of culture you have to bring in some of these sophisticated experiments, like in our computers, in our electronics, in our mechanical, so that before they come to the real time of lathe machine, CNC machine, or maybe a flyover construction, they should first do it simulation to understand what level of material, what composition, tensile strengths, etc. And I'll tell you, this will not only save the time and energy, but it improves the confidence level of the learner because he understands through simulation well. So these kind of things are going to be happen in upcoming part. These 4 W's I'm giving you and 1 H. आप प्लीज मेरे ये सवाल नोट करें, मेरे सवालों के जवाब भी आपको यही से मिलेंगे. What is a blended learning? जो अच्छे से मैं बताने जा रहा हूं. Where will find the skills for my teaching, जिसकी हम बातें करते आ रहे हैं. Why I should bring change in my teaching style? मुझे अभी कहने की जरूरत नहीं है कि आपको चेंज क्यों करना है, क्योंकि चेंज ही एक ऐसा स्थिर शब्द है जो कभी नहीं बदलने वाला है. चाहे चेंज ऑफ माइंडसेट की बात करें, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, चेंज ऑफ करिकुलम की बात करें, चेंज ऑफ पॉलिसी की बात करें, चेंज तो होगा. Who would be my mentor? अगर एज ए टीचर आप ये सोच रहे हैं कि आपका कोई गुरु नहीं है, तो जिसका कोई टीचर का भी कोई मेंटोर नहीं है, तो वो टीचर भी टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर सबसे पहले लर्नर होता है. इफ यू वांट्स टू बिकम अ टीचर, यू हैव टू बी अ ग्रेट लर्नर फर्स्ट. एंड आपका मेंटोर कोई जरूरी नहीं कि आपसे बड़ी उम्र वाला हो, आपसे ज्यादा किताबें लिख के पढ़ा विद्वान हो. आपका मेंटोर एक यंग बच्चा भी हो सकता है. मैं आज सच में बताऊं, अगर मैंने जितना भी टेक्नोलॉजी में कुछ सीखा है, कंप्यूटर चलाना, ईमेल देखना, वेबसाइट बनाना, मुझे मेरी से छोटी उम्र वाले ने सिखाया है. और वो मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स ही थे जो मुझे खुशी से सिखाते थे और ज्यादा अच्छे अनुभव से सिखाते. सर आपको मैं सिखाता हूँ, सर कैसे आपके मोबाइल पे ये चीज हो सकती है, सर ये ऐप कैसे इंस्टॉल होती है. मेरा बेटा इज वन ऑफ द ग्रेट मेंटोर टू मी, जो मुझे नई नई टेक्नोलॉजी की नई. आप पूछोगे उसने कब से बीटेक और एमटेक की, उसको सिखाया उसकी क्यूरियोसिटी ने. जितना यंग होता है उसका उतना क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है, उतना इनोवेटिव माइंड होता है. उनकी लर्निंग आपसे कहीं. आप एक छोटी सी उदाहरण देता हूं. एक 40 साल के व्यक्ति को बुलाएं जिसने कभी जिंदगी में कार ना चलाई हो, एक 18 साल के बच्चे को, जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, 21 साल के बच्चे को बुलाएं, दोनों को एक ही कार के एक ही ट्रेनर से सिखलाई देनी शुरू करें. आप खुद समझ आएंगे कि 2 दिन बाद जितनी अच्छे से कार वो 20 साल का बच्चा चला पा रहा है, वो 40 साल का अभी भी व्यक्ति नहीं ड्राइव कर पा रहा. और 60 वाला तो हाथ ही जोड़ देगा कि भैया मुझसे नहीं चलने वाली, किसी को मैं चढ़ा दूंगा भैया, अब मैं साइकिल पे ही ठीक हूं. ये क्यों? आप सोचते हैं कि हर जगह पे आपका एक्सपीरियंस काम होता है, हर जगह पे एक्सपीरियंस काम नहीं होता. क्योंकि हमारी बॉडी के बायोलॉजी एक सिस्टम है, एक सेल्स है बॉडी के, और सेल्स कई प्रकार के हैं हमारी बॉडी में. तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो एज के साथ थोड़े से ढलने शुरू हो जाते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं, तभी आपको थोड़ा सा भूलना भी शुरू हो जाता है. योर मेमोरी, योर अलर्टनेस, योर द क्यूरियोसिटी, आप में वो पैशन नहीं रहता. तो हमें सीखने के लिए अपने से यंग जितने भी आपको मेंटर्स मिले उनको अपना मेंटर बना लेना चाहिए. वो आपको ज्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी सिखाएंगे और इसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू द ट्रू लर्निंग फॉर योर लाइफ पैटर्न. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बियॉन्ड ए ह्यूमन्स आई, व्हिच आई एम गोइंग टू क्विकली गिव यू सम एग्जांपल्स. कब ये पैदा हुआ? 1950 में ही पैदा हो गया था एआई, लेकिन तब किताबों में था, अब वो आपके टूल्स में नजर आता है, आपके जीवन में नजर आता है. स्टार्टेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी वेंट टू द मशीन लर्निंग, देन वी पास टू द डीप लर्निंग,
and then this learning is even going to be beyond this level. What is that level? Supervised learning. छोटी सी एग्जांपल, बिल्कुल सामने खड़े होकर बच्चे से चाय बनवानी, मैं सामने खड़ी हूं तो चाय बना, फिर मैं कमरे में बैठी हूं तो चाय बना के, और मुझे पूछते रहना कहीं दिक्कत हो तो, वो होगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन अब उससे भी एक स्टेज आगे चलेगी, मम्मा आप रोज मुझे चाय पिलाते हो ना, लो मैं आज आपको ग्रीन टी पिलाता हूँ। अरे मेरा बेटा ग्रीन टी तुझे कैसे सीखी? मम्मा बस मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ तुलसी के पत्ते डालूंगा, कुछ ये करूंगा, आपको ग्रीन टी पिलाऊंगा। और आप कहेंगे ये तो मैंने भी कभी नहीं बनाई। तो फिर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। Once you give one platform, another platform, the third platform, this is called the Bloom taxonomy level 6, cognitive level 6। जब एक ना टीवी पे ऐड आती है, मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो शायद बॉर्नविटा की है या हॉर्लिक्स की, कहती मैं तब जीतूंगी जब ये मुझसे जीतेगा। एक माँ अपने बच्चे के साथ दौड़ती है, मोस्टली माँ ही होगी, जब कोच भी हो सकती है, कहती मैं तब जीतूंगी जब ये जीतेगा। वो दौड़ लगा रहे। तो आप उसकी बात को पकड़े, मैंने उसकी बात को इमीडिएटली पकड़ा कि जब ये मुझे हरा देगा मेरी इसमें जीत है। तो यही तो टीचर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं तब अपने आप को अच्छा टीचर मानूंगा जब इसकी सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा होगी, इसकी पहचान मुझसे ज्यादा बड़ी होगी, समाज में इसको ज्यादा तरक्की मिलेगी, तो मैं मानूंगा मैं अच्छा टीचर, क्योंकि उसको देने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने वो दिया उसको, और उसने साथ में अपना एड ऑन किया, अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन, अपनी शिद्दत, तो बात ही बन गई, तो बात ही बन गई। दिस इज कॉल्ड अ ट्रू टीचिंग लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। These are the tools which everybody can use. Forget it कि वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं। एक बीए, एमए, एमएड टीचर भी अपनी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। मुझे सच सच बताना, आप में से कितनों ने बीटेक एमटेक किए जो लैपटॉप यूज कर रहे हो? आपने तो कंप्यूटर साइंस और लैपटॉप पे दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, जूम पे जा रहे हो, गूगल क्लासरूम पे जा रहे हो, मेल्स कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या अपना टूल्स यूज करके क्या क्या कुछ रिकॉर्डिंग्स करते हो। आपको किसने सिखाया? आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था? नहीं लिया था। तो ये कहां से आया? ये आया आपने सीखने की एक शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, और आपको लगा डू और डाई वाली बात हो रही है भैया, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। सो टीचर एंड एआई कोलैबोरेशन, इट्स गोइंग टू बी द न्यू एरा ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आपको आर्टिफिशियल, अब एक छोटी सी उदाहरण दो, इसी मेरे स्क्रीन को देखिए। मेरे टाइम पर जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे ना इंजीनियरिंग में, वो आके उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे पूरी पूरी वो लिखी, इक्वेशंस लिखने में 40 मिनट लगा दिए। अभी उन्होंने समझाना ही शुरू किया था, बेल होगी। नेक्स्ट टीचर आए, वो थे फिजिक्स के, उन्होंने आके सारा ब्लैक बोर्ड रब कर दिया। अब नेक्स्ट डे जब वो मैथमेटिक्स टीचर वापस आए तो वो सोचने लगे कि दोबारा फिर इक्वेशन लिखूंगा, 40 मिनट जाएंगे। अब आज अगर वो व्हाइट बोर्ड उस जमाने में होता, जिसको मैं माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड या गूगल का जैम बोर्ड कहता हूं, तो एक बटन से ही सर की इक्वेशंस वापस आ जाती बोर्ड पे जहां पर वो छोड़ के गए थे, और वहीं से जितना रब करना था रब कर लेते, जितना उनको काटना था काट लेते, और फिर वो भी सेव होके जेपीजी फाइल, पीडीएफ फाइल मेरे कंप्यूटर में आ जाती, मेरे लैपटॉप पे आ जाती। ये हमारे जमाने में नहीं था। तो क्या बुरा हुआ टेक्नोलॉजी ने आपको इतना वाइड स्पेक्ट्रम दे दिया। नहीं तो पता चला कि एक स्कूल में जाके एक लिखते हैं एक्सपर्ट कि मैंने कहा कि बेटा अपने मैथ्स के टीचर को पहचानो। सभी टीचर लाइन में खड़े थे, तो बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे टीचर पूरे हैं, हमने कोई फेक नहीं रखे हुए। अच्छा चलो बेटा मैथ्स के टीचर। तो बच्चों ने पता क्या बोला? सर एक बार इनको बैक करवा दीजिए हम पीठ से। अरे बेटा फेस से पहचानते नहीं सर, मैथ्स के टीचर की हमने हमेशा पीठ देखी है, क्योंकि जब भी आते वो बेचारे ब्लैक बोर्ड पे लिख के पूरा क्लास वहीं से 6-60 मिनट लगा के चले जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आई बात कि आई कांटेक्ट तो हो ही नहीं पा रहा था। क्यों? हम तो सारा टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखने पे लगा रहे थे। तो आज अगर आपकी स्लाइड साथ में आ जाती है, आपकी इक्वेशंस हैंड रिटन भी स्टाइलस से, आपको ये टेक्नोलॉजी समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, तो कितना अच्छा होगा कि बच्चे आपको फेस टू फेस देख के सीख पा रहे हैं। और मैंने कब कहा कि आप अपनी हैंडराइटिंग मत दो, आप बच्चों की तरफ देखते हुए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी स्क्रीन आ चुकी है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड आ चुके हैं। बच्चों को आप भी दिखोगे, आपका कंटेंट भी दिखेगा, आपका फेस भी दिखेगा, और आप अच्छे से उनके साथ एक, नहीं तो हमारे तो टीचर को पीछे से कोई चौक मार रहा है, कोई जहाज उड़ा रहा है, क्यों? टीचर तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, पीछे से कर लो मस्ती। ये चीजें चलती थी। सो एनीहाउ, ये कुछ पॉपुलर एआई एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी में। अगर ये एप्लीकेशंस बन सकती हैं और टीचिंग लर्निंग में क्यों नहीं हो सकता, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक चला दी, आपने रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन एयरपोर्ट पे कर दिया, तो अब अटेंडेंस के लिए नाम क्यों लेना पड़ रहा है? राम, श्याम, ये वो नहीं लेना।
बच्चा क्लास में एंटर हो रहा है, उसकी अटेंडेंस लग रही है, तो आपका 10 मिनट तो वो भी बच रहे हैं। और आप चाह रहे हो कि ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको पता है आज आप कोई म्यूजिक सुनते हैं और आपका मन करता है हारमोनियम पे मैं सीखूं, तो आपको तो उसकी सरगमे नहीं पता चलेंगी ना। आज ऐसी ऐप बन गई है कि आप वो म्यूजिक उस ऐप पे चलाओ, सारा कंपोजर उसका वहीं पे आ जाएगा, प्रिंट निकालो और अपने सरगमे निकालने शुरू कर दो, हारमोनियम पे, गिटार पे, जैसे भी आप चाहते हैं। दिस इज इवन हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। अगर आपको पता चल रहा है कि ये हैंडराइटिंग किसकी, ऐसा टूल पे काम हो रहा है कि हम 10 मिनट में बता देंगे, जैसे हैंडराइटिंग की फोटो खींच के डालेंगे तो पता चलेगा हैंडराइटिंग किसकी है। यानी कि हैंडराइटिंग सबकी एक नहीं होती है, आपको पता ही है। तो जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, आपकी हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है। तो जब इस तरह की व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल थ्रू दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, हाउ वी कैन डू वंडर्स, वी कैन डू वंडर्स। आई थिंक परुमा वर्मा मैम, आपको म्यूट करना पड़ेगा इन बिटवीन, आपका अनम्यूट हो गया है। Thank you. So, this is the importance of AI in improving the quality of education, in particular information communication technology, I should say. And this is what is going to be take. And I'll just quickly give you some examples. Automated grading system आ गया। पहले क्या था, नंबर लगाते समय, अच्छा ये मेरे शहर से है, अरे इसके पापा मुझे जानते हैं, चल 2 नंबर ज्यादा। अच्छा ये क्लास में मुझे विश नहीं करता, चल 2 नंबर। अरे मैडम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखना है, उसने आंसर शीट में क्या लिखा है सर वो देखिए। तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम आपसे भी जो ये एक कहीं पाप हो जाते हैं वो रोक देता है पाप होने से, क्योंकि टीचर का ना कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, ना रंग होता है, ना रूप होता है। टीचर सिर्फ टीचर होता है और उसके सामने बैठा हुआ लर्नर सिर्फ विद्यार्थी होता है, वो किसी भी जाति धर्म से नहीं आता है। तो ये चीजें होने के लिए हमारे को ये टेक्नोलॉजी, हम क्योंकि ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन गलती कर बैठता है, तो वो गलती से बच जाते हैं। कभी आवेश में आ जाते हैं और कभी हम थोड़ा सा किसी के साथ बायस हो जाते हैं, तो बायसिंग को रोक देता है। इंटरमीडिएट इंटरवल एजुकेशन सिस्टम इज अगेन वेरी पॉपुलर, वी आर यूजिंग इट। आपको स्पेस चाहिए होती है, सर आप 1 घंटे से लेक्चर दे रहे हो, सर थोड़ा स्पेस तो दो ना। क्या करना है सर, जितना बोला पहले उसको समझ तो ले, हजम तो कर ले, पढ़ तो ले, लिख तो ले। तो उस टाइम पे आपको आपकी टेक्नोलॉजी एलेक्सा जैसे टूल्स आपको बीच बीच में रिवाइज करवा देते हैं, रिवाइंड करवा देते हैं, रिप्ले करवा देते हैं, एंड बच्चे की लर्निंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट द मेमोरी इज गोइंग टू बी हैव अ लॉट सिग्निफिकेंस। एंड फैकल्टी फीडबैक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे हो सकता है कि फीडबैक मांगा जाए पूरे एफडीपी का, मैं मानता हूं कि फीडबैक हर स्पीकर का आना चाहिए, हर टॉपिक का आना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने क्या सीखा, उस स्पीकर को इंप्रूव करना है। अगर आज डॉक्टर मन्ना कहीं चूक कर गए हैं, तो कल अगले 20 को 60 को वो चीज देते समय, क्योंकि डॉक्टर मन्ना डिलीवर किसको कर रहे हैं, टीचर को कर रहे हैं। यानी कि आज मैंने 60 को नहीं दिया, मैंने 6000 को दिया, मैंने 6 लाख को, क्योंकि आप 6000 को पढ़ाने वाले, 6 लाख को पढ़ाने वाले। एक टीचर के हिस्से में कम से कम एक जीवन में 20,000 30,000 बच्चा आ जाता है फिजिकल टीचिंग में। ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑनलाइन में तो देयर इज अ लिमिटलेस। तो अगर उसको गलत पढ़ा दिया गया, जब उसको कोई गलत फंडामेंटल्स दे दिए गए, तो कितना भयंकर वो हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए फीडबैक शुड बी ऑलवेज वेरी एप्रोप्रिएट and well in time, so that every learner, every teacher should bring improvement in their learning based on the feedback. इसको कभी भी दूसरी तरफ नहीं लेना चाहिए, never take it in a negative sense. feedback एक बहुत पॉजिटिविटी के लिए होता है और उसमें बहुत एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है। मुझे यहाँ पर अपने सेशन को यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा, क्यों मुझे 11 बजे डॉट उधर जाना था, 10:59 हो गए। मैं फिर आ रहा हूं अपने अगले सेशन में, जहां पर छोड़ूंगा वहां से शुरू करते हुए आपको मूक्स डेवलपमेंट का एबीसीडी बताना है मुझे। अगर आपको कैमरे के सामने जाके अगर लेक्चर बनाना भी है, तो क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। विद दिस आई जस्ट स्टॉप हियर एंड सॉरी मैं बिटवीन आपको छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन आई विल बी जॉइनिंग बैक एंड आई होप द ऑर्गेनाइजर विल अलाउ मी टू बी गोइंग। Thank you. Sure, sir. We knew this, that you have some other commitment. So, sir, thank you for sharing your knowledge so timely in this session. You connected your experience with daily life experiences. That was too much enlightening, sir. Thank you for sharing your thoughts and experience with our participants. Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to Professor Dr. M. Sengupta, Advisor, KIIT College of Education, to the participants. Sir is chairing our today's session
Sir is an advisor and former director of KIIT College of Education. He is a well-known academician who made pioneering contributions in both general and vocational education at the national level in his long career spanning more than 5 decades. He originally served at the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, in various capacities. Being an ITEC expert to Mauritius, a Fulbright scholar to USA, and Commonwealth Fellow in Bristol University, UK, he has undertaken a number of consultancy projects at both the national and international levels. As NAC peer team expert, he has visited many teacher education institutions in the capacity of chairman, member secretary, or member. He also visited Nepal as a foreign expert on invitation from UGC Nepal. Besides, Sir is the recipient of 4 national level awards from reputed organizations, ministries, such as NCRT, Ministry of Railways, and Ministry of Parliamentary Affairs. He has guided PhD and postgraduate research scholars. Sir has written several books, edited research journals, contributed chapters in books, and published about 200 articles and research papers. Sir is a nominated member in universities, boards, and other prestigious national institutes. Dr. Sen Gupta has expertise in work education, vocational education, educational research, and teacher education. Sir will chair today's session of this 5 days workshop. Welcome, sir. We are privileged to have you today with us, and our participants shall get an opportunity to hear from you at the end of the session. Welcome, sir. Now it's time for high tea now. If the situation had been normal, we would have convened in the convention hall to share a cup of tea, but we have to go with the flow. Let us rejoin at 11:30 a.m. for technical session 2. So we'll be here sharp at 11:30. Let's not disconnect ourselves. We'll just switch on our cameras, we'll mute ourselves, and we'll just have a good time, good half an hour, and then we'll meet at 11:30.
join again. There was some technical issue. That's why we got disconnected. Good morning, Sonam ma'am. Good morning. We'll just be starting in few minutes. Things to consider. Please put your mics on mute, and you may turn off your video in case of any network issues. Also, please refrain yourself from overloading the chat box with good morning, hello, introduction, since we may lose some vital information throughout the session. We require your active involvement. If you have any questions about the presentation, you may post it in the chat box. We shall bring them up in the question answer session. At the end of one, a feedback form will be shared in the chat box, based on which you will get your e-certificates. The feedback link will be available on Zoom as well as on Telegram, and it will be active for 30 minutes only. Please ensure minimum of 65% attendance during the workshop for e-certificate. The session is being recorded and we are going live. We are live on YouTube and Facebook. So please mute yourself. Brainstorming tools for e-content. I request Ms. Anupam Bansal, Assistant Professor, KIIT College of Education, to formally introduce and welcome Dr. Sonam Bansal. Anupam ma'am, please. Thank you, Neetu ma'am. Good morning, all. I, Anupam Bansal, Assistant Professor, KIIT College of Education. I would like to introduce Dr. Sonam Bansal for the technical session on brainstorming tools for e-content. Dr. Sonam Bansal is working as Assistant Professor at Rao Lal Singh College of Education, Sidrawali, Gurugram. She has done PhD in Education from Punjab University, Chandigarh, having more than 17 years of teaching experience. She has published more than 30 papers in international and national journals. 10 papers were published in edited books. She has presented papers at conferences and seminars, national and international level. She is an active member of CCGN CC chapter India and also member of CTEF Punjab and Chandigarh chapter. Lifetime member of ICTE, CTE,
AIA, AIATE. Her areas of specialization are psychology, disability studies, educational technology, instructional design, OER, pedagogical techniques and approaches, assessment and evaluation. She has given various extension lectures and presented many lectures as a resource person on ICT-enabled programs all over India. Also, she has conducted various faculty development programs as a resource person individually to training the participants on ICT-enabled strategies. She advisory committee member of different organizations. She has been guide research scholars at doctorate level. She has signed an MOU for OERU outreach partnership program with Dr. McIntosh, Director, UNESCO, ICDE in OER New Zealand. Also, she has honored Best Teacher Award from Vice Chancellor of Gurugram University. She got 2 times special appreciation from Vice Chancellor of Maharshi. I'm sure we shall be enriched by her session. We welcome you, ma'am. Now, over to you, Dr. Sulumansa. Please, ma'am. Yeah, thank you very much for this nice introduction, ma'am. Yeah, first of all, very good morning to all of you. And to the organizer. Coming to. So let me share my screen. Give me a minute. As well as for evaluation of students. So friends, what is the role of assessment then? You know, educational assessment is very important right from the beginning for motivation as well as to know the level of the students. The type of assessment tasks even are very helpful for students to understand their behavior and to know from where we have to start and how we need to integrate with them. So, then what about the teacher preparation? As you know, friends, during this COVID-19, everybody shifted 100% towards online. And here time, the main challenge is how to motivate our students. Basically, you know, the students who are school going students, how we can make our lessons more interesting because we all are at our home and many more. And if we are talking about interactive boards, there is Jamboard, Idea Board, Storm Board, Concept Board, and many more. And third one is the Padlet. It is also a collaborative tool. Here you can discuss with your students in a collective manner at one platform at one time. And another is a Flipgrid. It is also a wonderful technique. You know, there are some students in class that are so shy. They can't come forward. So the teacher can use these kind of texts regarding Flipgrid and Wakelet. I will show you one by one. And there are infographic designing also. If you want to important in form of a template or in the form of just a brief idea, so you can generate Pictochart or Canva. And another is the storytelling. The storytelling, you can generate stories with the of Pixton, with the help of storyboard creation, with the help of Powtoon, with the help of Plutagon, and many more softwares are there. So I will start from beginning. Here are the few aspects that I will going to cover. And first of all, we will from word search. See, sometimes, as you saw in newspaper also, there is a Scrabble and you have to search the words from that puzzle. So how we can make that puzzle, I will show you then. I will show how to prepare word cloud. See, let's suppose we are talking about the brainstorming. And there are many words that are related with brain.
Ma'am, I think you are not audible. Ma'am got disconnected somehow. Shekha ma'am, do we have Sonam ma'am? I think उनका network. Just give us 1 or 2 minutes. Let us coordinate with ma'am to get reconnected. Please excuse us. Ma'am is just rejoining. Shikha ma'am, do we have Sonal ma'am? No, ma'am. Okay. There might be a huge technical glitch at her end. नीतू मैम अभी कॉल किया है. She जी. will join. Thank you, ma'am. Dear participants, we are very sorry for the interruption. Let's wait for 2 minutes. She's just joining. She joined. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Hello. Yeah, no, back, my ma'am. voice is. Yeah, I'm so sorry. Yes, it's audible. There's a It's network okay, issue. ma'am. Light I चली know. गई थी actually. I'm so sorry. Okay, we understand. Let me share my screen again. Sure, ma'am. See. So, friends, we are talking about the brainstorming techniques. So here are a number of techniques that are helpful in creating online ICT. With the help of ICT tools, we can generate these brainstorming activities. So number one is word search. So let me show you first of all how it looks like. Then we will create that word search. See, here is a word Scrabble. See, now if I'm clicking here on begin, see, this is how it looks like. So here are few words that can work upon. Now, let's move on to the word schema. So where is schema? You just have to create like this. This is one word. And second word, see. So how we can create these kind of small activities for students? For that, first of all, we
have to go to Google and type word search. Let me do this from beginning. And type here word search. Puzzle. And you have to open this site and to create your account there. See, this is how it looks like. Now, you can generate as many things as you want according to your requirement. So how we can create our new? For that, on the upper hand side, there are 3 tabs and you have to click here on word search maker. And first of all, you have to write the title here. Let's suppose brainstorming. And if you want to describe something like I am preparing, I have prepared 10 words related to this, and you have to find out the words and all that. So you have to write the description over here. And here you have to type the words that you want the students to search upon that particular puzzle. So let's suppose word and then puzzle, then creation. You can put as many words as you want. Understanding, knowledge. My screen is visible, ma'am? Yes, Yes, ma'am. Thank you. Now, the subjects you can, for whom you want to create, yourself, family, friends, or it's non-personal. So you can click there and click on submit. This puzzle is asking that you have to create 10 words at least. We have created 5. So let me write 3 or 4, 5 words more. 5. Run. Clear. Vision. Generate. Right. So after that, you have to click here on submit. See, your puzzle is created like this. And how you can edit? You can click here. If you want to change some words, you can click here on edit. If you want to play this, click on play. It's a sample preview. It will looks like this. You can click here on play. Then here is the link. So copy this link and share with your student with whom you want to share this particular puzzle. This is how you can create a number of brainstorming puzzles related to words. So I'm sharing this link with you in chat box so that you can click and solve this puzzle. So I've shared this particular link with with you in chat box. So this is number 1. I think you now you got an idea how you can generate this puzzle. Yes, ma'am. Another important is word cloud. See, sometimes you have a number of related words, and how this word cloud looks like. Let me show you. See, this is how word cloud looks like, and how you can generate your own word cloud related to like knowledge, student development, motivation. A number of words are there as you saw here. So how we can generate our own word cloud? For that, you have to go to word generator. Word cloud generator. Word cloud generator. And
this word cloud generator. There are a number of word cloud generator apps, so you can use anyone according to your requirement as well as availability. Here is one app called as wordclouds.com. See how we can generate. For that, here on the upper hand side, there are few tabs. One is file, word list, shape, font, direction, color, mask, options, and wizard. For here are the, you can even upload directly from your desktop also, or you can write the words. If I'm click here on edit, these all are the words that have already applied here. If you want to edit these words, click here on edit and you can change the words. So let us create a fresh so that you came to know how we can start from zero. Let us open a new word generator app. So this is the blank wordcloud.com. Now, how we can create our own? See, click here on word list, click here on edit or import from CVS. Let me click here on import or click here on browse. Means you can directly upload from the desktop the document or the paragraph you want to copy here, and it will create in the form of important words. So what you have to do for that, you have to just copy few things, few data from your, let me just copy see. Let me copy this material and click here on new word cloud. Hello, some voice is coming, I think. Click here on edit. First of all, you have to delete all the words and then write a few words here. Import from CVS. Click here on browse and you can directly, let's suppose I'm taking a file from here. Just wait. So click here on plus and add a new word here. And click here on apply. So what you have to do, you have to go to word list, go to edit, and here you can write the paragraph with whom you want to prepare an important words. And click here on apply.
Actually, words are more. So let me make the correction. And again, if you want to add let me type here one word. See, the word comes here. Whatever you are writing here, click here on edit. If the word is wrong, then you can correct this. And you can write down another word. So you can add as many words as you want here directly. Click here on the plus tab and you can write down the words. The number of words you want to add will come directly over here. And after that, you have to click here on apply. See. And how you can change the shape, click here on shape. It will look like that. See. If you want to change the fonts, you can change the fonts directly from here. You can choose any language as you want and click here on select. After that, if you want to change the directions, you can do that also. Let's suppose you need diagonal. You can click here on that. You can change the color. Let's suppose you want to change the background color. Choose any color as you want. And if you want to add your own background picture, then you can click here on browse and you can drag an image from your desktop also as a background event. And after that, click here on apply. You can change the content color also and click here on OK. Then the color will change. Click here on apply. So like this, you can make all the changes in your word cloud as you want. And after making all the changes, you have to go to file and save as an image, or you can print directly, or you can open, or you can save. So we are just saving this as an image. When you were saving as an image, it will ask you to save as a JPG, PNG, or PDF for it. So we are saving this as PNG file and click here on save. So this particular word cloud will be downloaded your desktop. Okay, so this is how you can generate a number of word clouds for a particular topic or a particular content. And then third one is learning apps. See, here is an example of learning apps. First of all, let me show you mine and then tell you how we can create. See, here I have created a learning app. With the help of image, you have to just match the right image with the right pair. This is opening. So how we can do that? For that, see, here are few images and few written content here. See. So how, if we know how we have to match exact
image with exact text. How we can pair? See, this is the symbol of flip grid. And here is the flip grid. So we have to match this image with this. It is pairing. Like this symbol when occurs, it is pairing. So like this, you have to pair every image with the right symbol. How we can do that? Here are the few combinations, but all are not correct. So you have to search right pair with right this text. And after that, click here on OK. See, when you will click here on this, on the right hand side, lower right hand side, this blue icon, right click, it will ask you that you have paired wrong. This red indication shows that you have paired wrong. So this is a auto generation that the student will do more work on this. How we can pair the right image with the right content. And after that, it will give you the directions automatically. Up to then, you have selected all the content in right direction. How we can generate these kind of learning apps? Let me show you an example. See, for that you have to go to learningapps.org. Here there are a number of apps that you can browse for your student according to the level, according to the subject, and even you can create your own apps related to that. Here is another example of human body, means which part of body is related to which system. So the students will work out on this, and after that click here on right click. How you can create similar apps? Create similar apps. If you will click here on the left hand side, create similar apps, here this indication will come. So now you can change anything. You can select image related to the background of that particular content. You can give the hints to students according to their level. If you want to give them hints, you can give them hints. You can add another content. You can add another element directly from there. You can add text, you can add image, you can add text to image, you can add your own audio even, you can add video. After adding all the things, you have to click on finish editing and show preview. You have to click there and it will looks like that. So for that, first of all, you have an idea with you which type of content you want to create for your students. In learning apps, see, let me show you more things. See, a number of subjects are there. You can search anything directly from here according to the level. It will show you the content of all stages from elementary level to the vocational and future level. But if you see on the upper hand side, I'm clicking here on this, means I want the content for elementary and secondary education. Then you can limit your search content also. So here the content will be shown only up to the primary or the secondary level. And if you want the content for higher level of students, then you can again click here on this bar and it will search accordingly. So this is again a very wonderful app with which you can search a lot of things and do a lot of activities with your students. From here, you can browse more apps. Here you can create your more apps. You can create your own apps actually. You can make them public also. You can make them private also according to your level of making that particular app. And you can create your own collection, means you have time now and you want to search a content for your students related to physics, related to chemistry and related to their own particular topic. Then you can search the content and click here on create selection and you can add that material in your selection.
So you can browse this application also for future reference. And then it's a very quick as well as very short and wonderful app called as Ideas Board. Let me click here on Ideas Board. Means you want to share some pros and cons with your students related to a particular topic, and you are teaching your students online, right? This is the Idea Board. As the name clears, it's for brainstorming, it's for retrospect, it is for collaborate. Means you want to get some ideas from your students related to a particular topic. Let's suppose how this brainstorming session is useful for you or not useful for you. How you can use this. See, this is the main preview. It looks like idea board is look like this. How you can create? You can create your own idea board by clicking over here. See, when you will click here, it will ask you to name description session. For that, first of all, you have to log in. Let me log in here. So you can log in directly from your email account also. So I have logged in here. See, here it is asking from welcome with your name. And here all are the idea boards that I have already created. See. So let us create our new idea board. How we can create that? See. For all sections, for pros and cons. If you want to get only one pros, you need only pros, then you can click here on pros. If you want that you need pros and cons both, then you have to click here on all sections. Sort by created time or votes. Means, let's suppose you are just asking your students for something. Let's suppose this particular date is suitable for test. And if you want the students for vote, then you have to click here on votes. But if you want to get ideas from them, you have to click here on created time. And here is the pro and here is the con option. Let's suppose I'm clicking here on pros. Brainstorming strategies positive points. And the students will click here and write down the positive points related to this particular topic. And here, negative points. So now you have to do an activity with me. I'm sharing this link with you and you have to write one point here by clicking over here. When you will come here, it will ask me to plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So I'm giving you open that link and join my idea board. See. So I'm waiting all of you. Please join this idea board and write some points in one word here. See, this is a wonderful technique to collaborate your students. You can add sticky notes here directly. Let's suppose you want to add something. You can add sticky notes directly. So join this idea board with the help of that link.
I'm waiting for you. Join. Five to six students can join here. Anybody has joined? I'm waiting. Just click on that link and start writing. Hello. Hello, ma'am. My voice is audible? Yes, ma'am, your voice is audible. And Yeah, it's I have. for updation. Even I have given a positive point, but let's see, it's still showing updating. Okay. See, here two persons have written strategies, positive points, if it's effective, good idea, attractive, means two or three persons already joined here. So like this, you can share with your students number of ideas that comes in your mind. I'm waiting for 2 or 3 minutes more so that more students can join. See here, +2 means two persons have responded here in this particular box. See, if you want to edit, you have to click here on edit and you can edit anything because you are a teacher. If you want to change something, some points you can change. This is very short, and in between your class, when you are teaching with your students online, you can just ask few points that you have already discussed with your students to just to check whether the students are listening or not, and to engage the students in a better manner. This is a wonderful technique that you can apply within your lecture actually, and to check how many students have listened to you attentively or not. Yeah, it's a teamwork. Yes, very good. And now you want that there is no negative point, then what you can do, you can sort this particular board by click here on pros. Only the pros will shown over here and the cons have gone because you have selected only pros. So this is how you can change the view as you want of your idea board. And after doing the activity with your students, if you want to export, means you want that the students have beautifully make this idea board and you want to share this with your all students, with your all other students also, then what you can do, you can click here on export. You can click, after clicking here on export, you can export as an PDF or as an Excel. Okay, so let me click export as an PDF. So it will give you a point in the form of PDF. See, the two persons have responded here, one person have responded here. So this is how you can make a summary that how many students have responded actively in your idea board or not. Is it okay? I think you can understand this, how we can create idea board. Okay. Let me give you one more example of Jamboard. Many of you even have heard about this Jamboard. So how we can create Jamboard? See, here in your email or from your Google, there are these 9 dots. When you will click here, there are a number of related
tools related to Google that will open, and here is the Jamboard. You can click here. When you will share anything in Google Meet, even then you can share this Jamboard as a live to write, like in traditional classroom you have a board, you can write important points in your board. So here, when you are taking class online, you can share this Jamboard with your students and write down the important points over there. And how we can generate? For generating new Jamboard, you have to click here on the lower hand side, click here on this plus tab, new Jam. So this is your new Jamboard. This is untitled. I am writing here demo board, and click here on OK. So I have given a name of this particular board called as demo board. So you can add a number of points, a number of frames, yani 1, 2, 3, 4, many frames were there of a particular topic. So how you can do work with your students over here? From here, you can set the background. You can add an image from your desktop even, right? Like you can upload an image from your desktop by browsing. You can add a URL, you can add Google Photos from your Google Drive, from your Google Images, anything. So let me set a background as of this particular color. Okay. Then you can make the size of this board large, small, as per your own requirement. And on the left hand side, you have these tabs where you can work upon. Say, here is a pen. You can choose the color of pen. Let's suppose I'm choosing this particular yellow color and write down something. As we are writing in a traditional board, you want to explain something with the help of words. So you can write like this. Okay. Then if you want to erase, means this is not appropriate, then you can erase with the help of this eraser. And here is the arrow, means linking tab. You want to write some points and you can link with the help of arrows. And here is the sticky note. So let me type a sticky note. Uses of collaborative work. So now students, what you have to do, you have to write one word here by joining this tab and click here on save. So the teacher has given a question, uses of collaborative work. So you have to make a sticky note and put a note here in this board with the help of teacher. How you can do that? You want to generate something, you make it in a circle, you can do that. You create images and you want to make the changes in that, you can make the shapes accordingly if you want. Then you want to write something over here, then you can write text, something you want to write, you can write like this, means immediate reply to students. And here is a linking lines, means you just when you are teaching in your class, you are just giving indications to some points. So here is a highlighter, you can indicate with the help of this. Okay. And from here you can add images again. If you want to add an image related to this collaborative learning, let me give you an example. So here, from here, you can, from Google Drive, from Google Images, search an image related to collaborative work or collaboration, you can say that. Say,
So this image I want to insert. So the image comes here. So this is how we can make our board more interesting. So here is an image comes. Even you can change the direction. Even you can change the direction of this image also. You can enlarge, you can make it a smaller, you can make it in a particular angle accordingly. Okay. And now, how we can share this with students and how students can work here with us. On the upper hand side, there is a click button called as share. When you will click here on share, see. Now I have copied this link. Now with whom I will share this link right here. You have to click here on this sticky note, write one point and post here. So I'm sharing this with you again in chat box. So please join this. Yes, you have to write keywords. Click on the link and join this board. You can add a number of sticky notes. You have to click here on this sticky notes and you can change the color even. Okay. So just join, I'm waiting. See, here is an option, means you have prepared this Jamboard and you want to present this Jamboard in your meeting. So here is a link, present to a meeting, Google Meeting. So you can just click here and present this board directly to that meeting that you are attending or you are giving lesson with the help of Google Meet to students. So I'm waiting for you. Please join this. Hello. Just click on that link and from here choose a sticky note and write the one use of collaborative work or collaborative learning. Ma'am, it's showing request access. Okay, just I'm giving you open access. Just wait. Yeah, sure. For that, you have to go to settings. Yes, Editors ma'am. can change. Same here. Yeah, now it's now it's okay. See. Okay, we'll try. See, I have given the rights. I have given the editor rights. Now you can write anything here. Join this link and write a one point related to this. I'm sharing this link again. See, 2 persons already joined this board and 3 persons have joined.
So 4 persons have joined. See, they are writing something. See, one person has written in a sticky note, critical thinking. You have to click here on sticky note and choose a color of sticky note, write something here and click here on post. So this is how you can work collaboratively with the students. See, this is how the students are writing here. Post more. I'm waiting for 3 to 4 minutes. And the teacher act as a moderator, means if somebody has written wrong or overloaded the post, then you can manage accordingly. See, somebody is writing here, working practice where individuals work together. Yes, yes, very good. Yeah, highly productive. Shared. Yeah, I'm waiting for others also. You have to click here on the link. After that, you have to click here on this sticky note and type on the sticky note. And after that, click on post. Save time. Okay. Yeah, bring people and organization closer. Very good. Nice. So you can add as many sticky notes as you want. You can solve an equation, you can solve a mathematical question here. Yeah, cooperation, good. Nice. See, you can make the size of sticky notes larger and smaller even. Sona ma'am, J. due to Ji, paucity of ma'am. a few minutes to wind up the Yeah. session. We have Mana Okay. sir's address after this, so he has already joined because it was planned for 12:30. So please, Okay. you have few minutes to wind up. You can mention Okay. what you have planned. So this is how, after this, after making this Jamboard, how you can share or how you can click here on these 3 dots, download as PDF, or you can save frame as an image, or you can make a copy. Even you can add a number of pages like 2, 3, and 4, and so many. Right? And after doing the changes, you have to click here on download as PDF. So it will be with you in the form of PDF, right? So I have many 3 to more tools that I have to discuss with you, but I think time not permits me. So I will discuss all this in my next session. Yeah. Here you have any question, then you can ask up to here. Ma'am, we have a separate question answer round. So students will be posting their questions in the chat box. We'll be taking it after Manna sir's address. Okay, Gina, thank you. And this is from my side. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am, for such an interesting educational activity. This will be helpful for all the participants present here with us in the coming academic session. Dear participants, we have posted a feedback link for ma'am. Kindly fill that. We have posted it in Zoom chat box as well as in Telegram group. You may click it and fill the feedback form for Dr. Sonam Bansal. Now we have Manna sir. Welcome back, sir. Sir will acquaint the participants with the essential skills for MOOC development. Sir, over to you. Thank you very much. And
It was really very interesting session was going on. I could attend some part of it, and how nicely she was explaining, and practically the Jamboard which I was talking, that is the true Jamboard, you know. This is the way, like it's totally open source, and she given us so many open source apps to you, including Mind Ministers, etc. And I'm sure the participants have taken all the slides, photographs clicked on your mobile, or maybe you're getting the PPTs after the sessions. And you please Definitely, try sir. this. More you will go for the open source, you have the wide learning spectrum, and you can make use of for your personal use, for your teaching, as well as make the students to be get aware and to make use this. Collectively taking assignments on the same board, you know how it is nice, like sticky notes, etc. And very nicely she was explaining, and that's great. You have invited all the great speakers of my country to be giving this fruitful learning to all the participants. So now, without wasting time, so I should go for my topic for which we are going to be discuss. That is about nothing but the 3Ds of MOOCs. The 3Ds of MOOCs means design, develop, and of course deliver. So when you are going to be designed and how it's going to be developed, then it's going to be delivered. And more or less, it is the ABCD of MOOCs. So ABCD of MOOCs, which is going to be now discussed. And before I start, I must share some of the true examples with you. When I started this journey in our SWAM in 2016 and 17, it got launched, and it was launched by our honorable president of the country in Vigyan Bhavan, with the presence of all the vice chancellors of my country, 900 plus vice chancellors of my country, and all the secretaries of departments, principal secretaries of the higher education department from the various states of my country. It was a big event. And what was the main aim? To bring the content on a SWAM from the teachers of the country. And when we started this journey for getting the content or 3 minutes video, introductory video to be uploaded on a SWAM, through which we having even a grant also, that is a 13.5 lakh rupees grant for all this. And I hope that you already have taken the SWAM journey. Otherwise, you can have a one complete session through someone. मैं तो बहुत बार दे चुका हूँ, तो मैं भी वंदना मैम और someone को आप रिक्वेस्ट करें कि स्वयं जर्नी की भी एक सेशन आप हैंड्स ऑन कराएं कि स्वयं पर क्या क्या है, व्हाट आर द गाइडलाइंस and how to follow the guidelines to create a content. That is a story. तो मैंने वहाँ पे एक चीज देखी, जब मैंने some of the faculty members, they were very seniors, they were professors level, and they used to bring some slips in a studio to record the content, and they start reading from there. And then this, I said, no sir, this is not going to be happen. Then I used to play some MIT edX videos to be show them how it should be look like and other things. Then I realized one thing: until unless we make our faculty aware about what is the difference between the classroom teaching and a camera teaching, we cannot expect the content to become on a SWAM or these kind of platforms. So digital initiatives by Government of India, as I'm talking about the swam.gov.in, I hope you understand this is one of the platform through which you can have a 20% choice discredit system in your completed degree or UG PG programs by UGC EICT. And nowadays recent notification says 40% even. So 40% credits, can you believe it? यानी कि आपकी लगभग आधी डिग्री जो है वो बच्चा स्वयं के कंटेंट्स लेके भी कर सकता है, लेकिन स्वयं पर अगर कंटेंट ही अच्छा होगा तो फिर बच्चा कहाँ जाए? That's the point. Swam Prabha is 35 channels through which you can have a teaching through television sets with a free-to-air dish. And then NDL is a National Digital Library with more than 2 crores of books are available to be downloadable, audio books, and 200 plus languages books are available. NAD is the National Academic Depository, if you are aware about this, because all the universities they're supposed to be get registered with this NAD program, so that the degrees get dematted and all the DMCs. So students need not to be go for the transcripts to be get physically on the campus. They can simply download barcoded templates, barcoded detail marks cards for their jobs, employment, etc. Shodhganga is one tool for which we having all the PhD thesis now uploaded on Shodhganga. It's a mandate for all the autonomous bodies, universities to be having a PhD programs. They must upload their thesis on a Shodhganga. And eShodh Sindhu is the consortium of journals. Many journals are available on a one click
So you can download the papers, you can explore the papers for your literature survey, literature review, etc. And Vidwan is the one platform which is given to all the teachers of my country, irrespective of private or government institutions. They can have their own biodata on a Vidwan. So it is a Vidwan. You can just write a Vidwan on a Google, you will find this app, and you can start uploading your credentials, and they will get validated in few days, and then it is going to be get published on your platform. And anybody can search anybody on Vidwan. You go to Vidwan, you will write my name, you will search me also, and you can make it out from my photo that okay, he's the same person. How many PhDs he have made it, how many theses he have guided, how many paper he has published, or whatever it means. So anyhow, these are the digital part. Look into this artificial super intelligence, self-awareness intelligence. So what is that? And why I'm going to put before you are going to put yourself on a camera. When we talk in a conventional way of the Bloom taxonomy, you can see the inside the words in the pyramid: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. And I think more or less all the faculty members might have gone through with the Bloom taxonomy. It is a well-known, because the government of India since last 5 years they are saying OPE, that is outcome-based education system. So we should know more or less about this. How it is going to be linked with the today's technologies? Like this is what the part: the syntax, the semantics, the solutions, the reasoning, thinking, synthesis, and of course the final is your consciousness. It is called awareness. How emotions build? Emotions can never build in a single minute, and it is not even a rocket science also. Emotions build, हम कहते हैं ये बच्चा बचपन से बहुत उत्पीड़ित हुआ, इसलिए ये क्रिमिनल बन गया, या इसीलिए ये डिप्रेशन में चला गया, या इसीलिए इसके मन के इमोशंस खत्म हो गए हैं. इज हार्ड, यू कैन से इट्स अ स्टोन हार्टेड पर्सन, क्योंकि बचपन से इसने बहुत दुख सहे. ये क्या था? Years and years it takes to be created some emotions or emotionless. So the beginning of any childhood is from the remembering. The students start that बच्चा माता पिता के नाम को याद रखता है, अपने घर को पहचानता है, अपने पापा की गाड़ी को पहचानता है, मम्मी के पर्स को पहचानता है, याद रखता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि ये पास के हैं, ये दूर के हैं, फिर वो अप्लाई करता है, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता है. So this is not my today's topic, but still I am taking this slide before I am going to start a history of MOOCs. I just want to link it. आपको MOOCs बनाने हैं ना, आप पेन एंड राइटिंग पैड लेके बैठे ना, आपको भी यही सारे पड़ाव करने पड़ेंगे. आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप हमें नर्सरी से? यस, मैं आपको नर्सरी से ही पढ़ा रहा हूँ. जी हाँ, बुरा लगे या अच्छा लगे, आपको ये सोच के आना है कैमरे के सामने कि आज आप पहली बार पढ़ाने आ रहे हैं. जी हाँ, अगर आप पिछले 20 साल से पढ़ा रहे थे क्लास में, so you might have used 3 or 4 languages like me. I used to use Punjabi, Hindi and English in my class, but when you're coming before the camera, you can't use 3 languages. It should be a uni-language, because this MOOCs is not only for your classroom or not only for your campus, it is for the whole world, you know. It is going to be spread throughout the countries. That is called a massive open online course. And it has to be uni-language. So remembering your content, remembering your dialects, remembering your transcripts, and to understand how to speak, what to speak, where to speak, and then you apply yourself. मैं खुद को समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. If I can't understand myself, then how I can realize that the other will? Then I have to analyze by watching my own video after recording. I have to analyze. I have to get evaluated my videos through my peers, through my colleagues, through my ex-students, alumni, so that then I'm in stage to create something. And once you are going to create a video and you are saying that I have developed the MOOCs, you will feel like you are a true teacher. सिंपल सी बात हिंदी में कहूंगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. मुझे मेरे दोस्त ने फोन करके कहा, मन्ना यार आज बड़ी बैड न्यूज. मैंने क्या हो गया? ऋषि कपूर जी नहीं रहे. मैंने कहा ऋषि कपूर जी गए कहाँ? नहीं यार तो वो चल बसे. मैंने कहा नहीं, वो शरीर छोड़ के गए होंगे, क्योंकि मैंने ऋषि कपूर जी के साथ कभी बैठ के चाय नहीं पी, मैं ऋषि कपूर जी के साथ कभी नहीं कहीं घूमने गया. मैंने ऋषि कपूर जी को स्क्रीन पे देखा और आज भी मैं स्क्रीन पे ऋषि कपूर जी को देख पा रहा हूं, तो मेरे लिए ऋषि कपूर जी जिंदा रहेंगे. इसका मतलब जिस टीचर ने अपना एक बार कंटेंट डेवलप कर दिया, अपना वीडियो बना दिया, वो भले रिटायर हो जाएगा कैंपस से, वो भले दुनिया से चला जाएगा, बच्चों में वो जिंदा ही रहेगा, क्योंकि उसका कंटेंट नहीं मरने वाला,
उसका कंटेंट कभी नहीं बनने पाता। आज भी जब भी मैं मस्कीन जी को सुनता हूँ तो मुझे मस्कीन जी दिखते हैं सामने, मस्कीन जी कथा कर रहे होते हैं सामने। I'm listening, I'm feeling as virtually as he's live. So this is what the creation we have to make it, and this is the development of MOOCs. It should be so true. It should be so true. So OER, I think you are understanding OER in coming 4 days or 5 days. What is open education resource tool? Is a, you say it is a YouTube channels, you say it is a Wikipedia. Of course, Google Baba, it is OER. What is a blended learning? Now I'll give you a very simple example. Most of my, I think, participants, they are the ladies and they are working in a kitchen as well. They are doing in a classroom. आप घर में जब भी कुछ बनाते हैं तो हरी चटनी बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी की एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ और मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि पुदीने की चटनी है इस घर में ऐसा वो है व्यंजन जो सभी व्यंजन के साथ चाहिए होता है। चाहे पकोड़े खाएंगे, चाहे आप टिक्की खाएंगे, चाहे आप परोठा खाएंगे, चाहे आप कुछ भी खाएंगे, तो हरी चटनी चाहिए। तो बनती किसकी है? पुदीने की बनती है। लेकिन सच्ची पूछिए घर की महिला से, गृहिणी से, अपनी माँ से, पत्नी से, बेटी से, जब वो बनाती है, वो बीच में प्याज भी डालती है, वो लहसुन भी डाल देती है, अदरक भी कभी कभी डालती है, नींबू भी निचोड़ देती है, हरी मिर्ची का भी बीच में प्रयोग किया जाता है। क्यों करती है वो? कभी पूछा आपने? पुदीना अकेला रगड़ो रख दो नमक डाल के? नहीं 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 नहीं। घर में अगर सासू माता है, उनको यूरिक एसिड बढ़ता तो लहसुन डालने से यूरिक एसिड कम होगा। घर में छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी आंखें तेज करनी है रोशनी, तो मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी। और मेरे पति देव को पकौड़ों के साथ थोड़ा खट्टा खट्टा चाहिए तो मैं नींबू भी निचोड़ूंगी। तो उसने इस घर के सभी जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं, सबको सामने सम्मान रखते हुए उन्होंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हरी चटनी परोसी। और जब टेबल पे पड़ी चटनी थी, जिसने भी मांगा क्या बोला? जरा पुदीने की चटनी इधर करना, जरा पुदीने। किसी ने कहा प्याज की चटनी देना, लहसुन की चटनी, उन्होंने कहा हरी चटनी, पुदीने की चटनी। इसका मतलब जब टीचर अपनी क्लास में 60 मिनट्स के लिए पढ़ाने जाता है, अगर वो 10 मिनट की किसी की वीडियो साथ में लेके जाता है, अच्छे ऑथर की, अच्छे स्पीकर की, अच्छे राइटर की, अच्छे टीचर की, जब वो किसी की किताब वहां पे शेयर करता है या किसी के नोट्स शेयर करता है, तो वो ब्लेंड कर रहा है क्लास को। और क्लास के बाहर जब निकलेंगे तो प्रिंसिपल पूछेगा किसकी क्लास लगाए? वर्मा सर की क्लास लगा के है। वो ये नहीं बोला कि वर्मा सर की क्लास के अंदर त्रिपाठी सर से पढ़ के आए। वो ये नहीं कहेगा कि वर्मा सर की क्लास में जॉन ने मुझे अपनी वीडियो सिखाई है। वो कहेगा सर वर्मा सर नहीं पढ़ाया, हम तो वर्मा सर की क्लास में बैठ के उठ के आए। तो टीचर की ईगो उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए जो वो ब्लेंडेड लर्निंग की सही डेफिनेशन समझे। और आज तक मेरे देश में ब्लेंडेड लर्निंग लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो ब्लेंडेड लर्निंग का समझते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। अरे ये क्या है यार, पीछे खेल रहे हो क्या? ऐसा नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब अपनी टीचिंग में ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, ऐसे अच्छे पल लेके आओ, ऐसा अच्छा कंटेंट लेके आओ भले आपका। पिछले सेमेस्टर अगर मेरे पड़ोसी ने, मेरे कुलीग ने अगर वो सब्जेक्ट लिया था, इस सेमेस्टर मैंने ले लिया टाइम टेबल में, तो मेरी इतनी ईगो है कि मैं पड़ोसी से ये भी नहीं पूछने जाता अपनी कोर्स फाइल दे दोगे यार, मुझे लेक्चर प्लान दे दोगे, तुमने लास्ट टाइम में पढ़ाया था, मैं देखूं तुम्हारे नोट्स कैसे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ये तो हो ही नहीं सकती। तू भी प्रोफेसर, मैं भी प्रोफेसर, तू भी 20 साल से, मैं 22 साल से। मेरी तो तेरे से पहले पेंशन लगेगी, तेरी बाद में लगेगी। तो सोच बहुत छोटी हो जाती है। क्यों? हम टीचर है ना, तो टीचर की तो सोच बड़ी करनी बहुत जरूरी है। तभी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा। तो फ्लिप लर्निंग मॉडल थोड़ा सा और डिफरेंट है, इसको भी सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज आपका खाना वाना सब भूल जाएगा, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, कहीं नहीं जाएंगे आज हम। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, फ्लिप का मतलब क्या होता है? चेहरा देखना। आप कईयों को मन करे तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सामने जिसको बोल रहा हूँ, मेरे सामने दीवार नहीं है, स्क्रीन नहीं है, मेरे सामने कुछ अच्छे लोग हैं। मैं नीतू जी को देख पा रहा हूँ, मैं रुचि को देख पा रहा हूँ, मैं मैडम इंदिरा जी को देख पा रहा हूँ। तो ये क्या है? चेहरे हैं मेरे सामने। देखिए वो कैप पहन के मैडम राजेश दीक्षित जी आ गई हैं, ये चेहरे हैं। चेहरों को देख के आपको क्या आता है कि मैंने किसी को कुछ कहा तो उसका फीडबैक कैसे कैप्चर करूंगा मैं? आपके चेहरों से, आपकी आंखों से, आपके फेस की स्माइल से, कि हाँ मेरी बात सही जगह पे जा रही है, सही जगह पे बात। फ्लिप लर्निंग में क्या होता है, आपने बच्चों को कुछ पढ़ाना है, आप पढ़ाओ ना, किसने मना किया? आपको पढ़ाने के लिए तो सैलरी मिलती है। आप कहते हो मैं सुबह ही जाके बताऊंगा क्लास में कि मैंने क्या पढ़ाना। तो बच्चा जब क्लास में आता है और उसी टाइम प्रकट होते हैं आप एक तरह से, और आप अपने नोट्स प्रकट करते हैं, बच्चा थोड़ा सा गुम सा जाता है। वो कहता है कुछ नया है, ये तो है, आज ही तो पढ़ाया है, तो मैडम मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ नया है। और तब तक तो मैडम कहेंगे मैं तो निकल गई क्लास से, अब तो अगली क्लास में तो अगली बात करेंगे, वो तो पिछली बात होगी, वो तो खत्म हो गया। तो एग्जाम में तो मैं पूछूंगी, टीचर कहेगा मैं तो पूछूंगा। अब वो बच्चा कहता है कि अगर आप अपना एक जो कंटेंट जो कल सुबह लाने वाले हैं, चाहे वो पीपीटी है या हैंड रिटन नोट्स है, कृपया मुझे एक दिन पहले दे सकते हैं? हाँ ले लो। मैं कम से कम, आप अपनी परसेप्शन लेके आओगे क्लासरूम में। देखिए भले आप बहुत बड़े टीचर है, मैं सल्यूट करूंगा सबको, आप सब मुझसे सीनियर होंगे, लेकिन आप पढ़ाओगे तो अपनी परसेप्शन से ना, आपकी परसेप्शन, आपके खुद का विजडम। आपने 10 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन नोट्स तो आप अपने अपने बनाओगे ना।
जो आपको बेस्ट लगेगा। तो ऐसे जो 60 बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, वो भी तो अपनी परसेप्शन क्यों ना बना के आए आपके नोट्स के ऊपर, उनके 10 क्वेश्चंस क्यों ना पहले बने हों। वो कहेंगे मैम ये हमने पढ़ लिया, अब इसके एक लेवल मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा, अगर आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल साइंस किसने पढ़ी है तो ओम्स लॉ इज अ वेरी बेसिक, 10वीं में पढ़ा दिया जाता है। मैंने अपने ओम्स लॉ के नोट्स पे लिख दिया कि डायोड ट्रांजिस्टर फेज ऑन ओम्स लॉ बिकॉज नॉन लीनियर एलिमेंट। लेकिन रात को बच्चा अगर पढ़ते पढ़ते गूगल बाबा से थोड़ा सा आगे पढ़ के आ गया, थ्रू खान अकेडमी, थ्रू बायजूस और समथिंग एंड से कि सर सीएनटी पे भी फेल होता है, तो क्या किया उसने, मेरी नॉलेज में एडिशन किया। आज का बच्चा सीएनटी जानता है, कैथोड नैनो ट्यूब की बात जानता है, डायोड्स के ऊपर उठ गया है। कम से कम मेरे नोट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, मेरी सोच में इंप्रूवमेंट हो रही है, मेरी टीचिंग में इंप्रूवमेंट हो रही है। फ्लिप लर्निंग यानी कि आईना दिखाना, शीशा देखना। टीचर को फ्लिप लर्निंग मॉडल पे आना चाहिए। बच्चों को एक ऐसा अवसर क्लास में देना चाहिए कि 20 मिनट सिर्फ बच्चे बोले, मींस उनके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है। यानी कि क्लास में अगर आप फ्लिप लर्निंग मॉडल मुझसे बनवाते हैं, मैंने कई यूनिवर्सिटीज में जाके एस्टेब्लिश किया है एज एडवाइजर, 2 बोर्ड रखता हूं, व्हाइट बोर्ड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। पहले 20 मिनट टीचर आके अपने हिसाब से अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। 60 मिनट्स की क्लास है ना, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। वो 20 मिनट्स में वो अपने ब्लैक कलर के मार्कर से अपने लेफ्ट हैंड साइड के बोर्ड पे अपने बुलेट पॉइंट्स देता है कि इस टॉपिक में ये यूएसपीज है, ये यूएसपीज है, वो दे देता है टीचर। बच्चे उसको सुनते हैं और राउंड टेबल में बच्चे बैठते हैं, 6-6 बच्चे राउंड टेबल। फ्लिप लर्निंग राउंड टेबल होता है। वो ऐसा नहीं होता कि लड़के इधर बैठ जाओ, लड़के उधर बैठ जाओ, बेंच पे सीधे सीधे बैठो, उल्टे मत बैठो, ऐसा नहीं होता। फ्लिप लर्निंग मॉडल होता है डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लास इज राउंड। अच्छा चलो जी, हो गया। नेक्स्ट 20 मिनट्स लेट द स्टूडेंट्स टू यूज देयर आईपैड, देयर लैपटॉप, देयर मोबाइल्स, देयर ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन मेक श्योर दे शुड नॉट गो आउट ऑफ द वे। वहां पे बातें उसी टॉपिक की हो रही हो, कोई लड़ाई ना हो रही हो। यानी कि वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर वहां पर कुछ भी हो रहा है तो संवाद हो रहा है, संवाद से विवाद की तरफ ना जाए बच्चे। इसलिए क्लास में आपका रहना जरूरी है एज ए मेंटोर। आप रहें, बीच में घूमते रहे बच्चों के। बच्चे उस दूसरे ब्लैक बोर्ड पे जाके, दूसरा व्हाइट बोर्ड जो है राइट हैंड साइड पे, ब्लू मार्कर से कुछ नया लिखना चाहेंगे, लिखने तो उनको अलाउ करो ग्रुप वाइज। एज ए ट्रू टीचर आपको लगे कि ये इस टॉपिक से रिलेवेंट है और यही एड ऑन किया जा सकता है, आप उसको ब्लू लाइन को अपने ब्लैक बोर्ड पर भी लेके जाएं, अपने व्हाइट बोर्ड पर ऐड करें कि आज इस क्लास से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये 2 टॉपिक्स भी इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इसके फेलियर्स हो सकते हैं, इसकी न्यू ब्रांच हो सकती है। क्यों? आपको बच्चे तर्क देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, कंटेंट दिखाएंगे। लास्ट 20 मिनट्स में आपको कंक्लूड करना है एज ए टीचर। पहले फर्स्ट 20 मिनट्स में आप क्या आए थे? एज ए फैसिलिटेटर। बीच के 20 मिनट्स में आपके बने मेंटर्स बने, और लास्ट के 20 मिनट से आप टीचर बन जाओ, अथॉरिटी बन जाओ कि डियर स्टूडेंट्स, आपकी बाकी चीजें मैं आपके बोर्ड से इधर शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, ये चीजें मैं शिफ्ट कर रहा हूं। और यकीन करिए, जब भी कभी 2 चीजें मैंने जिंदगी में नोट की। एक, जब मैं एग्जाम से बाहर निकला और जो मैं पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर पाया और बाहर आके दोस्त से पूछा या टीचर से पूछा, मुझे जिंदगी भर नहीं भूला। सर इसका सच में बताओ आंसर क्या है? सर मुझे आ नहीं रहा था। अरे ये मूर्ख किसका है? सर अब नहीं कभी भूलूंगा। अरे अब तो पेपर हो गया, अब तो पेपर। और दूसरा, मैंने क्लास में कोई ऐसी चीज कही और टीचर ने एक्सेप्ट कर ली, हाँ ठीक कह रहा है, बन्ना ठीक कह रहा है, ये इसका ये भी आंसर हो सकता है, बस मैं 3 दिन तो सोऊंगा ही नहीं। पहली बात तो एक स्कूल के बच्चे को पूछो, जिसको मैम ने एक बार कॉपी पे स्टार दे दिया ना, वो घर जाके बैग में से ना लंच बॉक्स बाद में निकालती है, बेल्ट बाद में निकालती है, मामा मामा मेरी बात सुनो, और बेंच पे छलांग लगा रही है बेड पे। क्या हुआ? मुझे आज मैम ने स्टार दिया, भले हैंडराइटिंग पे दिया, भले अच्छे काम करने पे दिया। वो स्टार के चक्कर में शाम को मैगी भी नहीं खाती, इतनी खुश होती है। क्यों? क्योंकि मैम ने मुझे रिकॉग्निशन दिया, मुझे एप्रिसिएशन दिया। दैट मैटर्स अ लॉट। तो बच्चे तो अभी भी बच्चे हैं। जब आपने किसी बच्चों की ग्रुप की लिखी हुई लाइन को ब्लू कलर से अपनी ब्लैक कलर में शिफ्ट कर दिया ना, पापा आपको पता, आज मैंने ना गूगल से देखा तो मुझे एक नया एप्लीकेशन और नजर आई, जो आज सर और मैम टॉपिक पढ़ा रहे थे, मेरा टॉपिक एंडोर्स कर लिया गया, नोट्स में शामिल कर लिया गया। अच्छा यार, तू तो पढ़ाने लग गया। हाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो एक फील आ जाता है, एक एम्पावरमेंट आ जाती है और बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है क्लास पे, इंटरेक्टिव। कल की क्लास नहीं छोड़ सकता, नहीं नहीं नहीं, सर ने पहले मुझे ढूंढना है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी लाइन उन्होंने ऐड कर दी थी, मुझे पूछेंगे भी आगे क्या है, तो मुझे तो जाना है क्लास में। भूल जाइए आपकी अटेंडेंस कहाँ है। आपको लगेगा कि मैं क्लास में नहीं जाता हूँ, मैं एक संगोष्ठी में जाता हूँ, मैं एक विचारधारा में जाता हूँ, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स को, अपनी केमिस्ट्री को, उसके मैथ्स को। नहीं तो अब तक क्या कर रहे थे? एक स्पून फीडिंग वाला फंडा है, यहां से पढ़ लेना, ये पेपर में पूछा जाएगा, ये मत पढ़ना, मैं एग्जाम में नहीं डालने वाला हूँ।
क्यों? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंने एग्जाम लेना, मैंने चेक करना, मैंने ग्रेड लगा देना है। बच्चा उससे ज्यादा खुश कि कम पढ़ना पड़ा, लेकिन बच्चा वो बाद में जाके अपनी गाड़ी का शीशा तब तोड़ता है जब इंडस्ट्री में जाके फंस जाता है। कहता है ये तो सर ने पढ़ाया नहीं यार, यहाँ पे मेरी अप्रेजल रुकी, मेरी तो प्रमोशन रुकी, मैं तो शीशा तोड़ के आऊंगा गाड़ी का। सर ने अपने चक्कर में ना अपनी तो सैलरी पूरी निकाल ली और मुझे आधा पढ़ाया, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, ही इज कंफर्टेबल, शी इज कंफर्टेबल वट एवर यू आर टीचिंग, क्योंकि वो तो बच्चा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप आधा खाना, कभी माँ से पूछो, माँ को कहो कि ये तेरा बेटा जल्दी 2 रोटी खाता है, इसको 2 दे दे, ये तो धीरे खाता है, इसको आधी। ना 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 ना, मैं 3 बार गर्म करके दूंगी, इसको 2 पूरी खिलाऊंगी कि ये भी मेरा बेटा है। जब माँ अपने बच्चों के पेट में दीवार नहीं लगा सकती, तो टीचर कैसे कह सकता है कि स्लो लर्नर को भाड़ में जाने दो, फास्ट लर्नर को आगे दे दो? ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्लिप लर्निंग मॉडल इसको दूर करता है। इन तीनों को जोड़ेंगे, तो मूक्स बनता है, जो सबसे नीचे लिखा है। मूक्स क्या है? OER, ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप लर्निंग का पूरा समूह, बुके, इट्स अ बुके। और इसको बनाने के लिए अब आपको क्या चाहिए? बड़े ध्यान से, बहुत आराम से इसको चीज को अंडरस्टैंड करिए। वो है 4 क्वाड्रेंट, जो मैम ने सुबह पहले ही बता दिए हैं, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 4 क्वाड्रेंट आप पढ़ के बैठे हैं, सुबह के लेक्चर में नोट्स बनाए होंगे, इंदिरा मैम जी ने मेरे सामने बताए थे। मैं सीधा, ये आपका प्लेटर है, मार्केट में अवेलेबल है, और भगवान से यही हमेशा सुबह उठ के दुआ करो, अरदास करो कि इनमें से किसी एक में मेरे भी कोर्सेज होने चाहिए। बच्चा मुझे भी कहीं ढूंढ ले, चाहे मुझे कुरोसीरा में ढूंढ ले, चाहे UDCT में। किसने कहा? सिर्फ स्वयं भारतवर्ष का है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अब तक लोग किताबें लिख के रॉयल्टी लेते थे, अब तक पेटेंट को ट्रांसफर करके लेते हैं, तो अब टीचर अच्छे मूक्स बना के रॉयल्टी नहीं ले सकता एडेक्स पे? आपको पता 10-10, 20-20 लाख रुपए एक महीने की अर्निंग हो रही है हमारे IIMs के प्रोफेसर्स की, IIT के प्रोफेसर्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ बुक्स। उन्होंने तो कंसल्टेंसी देना छोड़ दिया, कहते हैं हम तो लेक्चर देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द ABCD। चलिए ABCD भी शुरू करेंगे। A, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपीयरेंस, अटायर। कभी भी आप कोर्ट में घूम रहे हो, गुरुद्वारे में घूम रहे हो, कचहरी में घूम रहे हो, आपको कहीं बताना पड़ेगा कि वकील कौन है? अरे सर क्या बात कर रहे हो? आपको बताना पड़ेगा पंडित जी कौन है? नहीं नहीं सर, 2 मिनट में पता चल जाना, वो देखो पंडित जी। क्यों सर? पहरावे से देख लो ना, पंडित जी है। लेकिन जब मैं बस में ट्रेवल करता हूँ, इवन मैं अपने कॉलेज में भी, मुझे कई बार पहचान करनी मुश्किल होती है कि ये फैकल्टी है कि स्टूडेंट है। ये फैकल्टी है कि समटाइम्स आई शुड यूज द वर्ड, कुछ और भी हमारे एम्प्लॉइज होते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मेरी एक स्टूडेंट पास आउट हुई, उसको तैयारी करनी थी, उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर, बीटेक की थी उसने। स्कूल ऐसे नहीं ज्वाइन किया था कि जॉब नहीं मिल रही थी, उसको तैयारी करनी थी UPSC की। मुझे ना आई घर में चाय पीने, वो दिवाली के दिनों में, सर हमारे टाइम पे तो हम कितने अच्छे होते थे ना, आजकल बच्चे बड़े वो हैं। उसने वर्ड यूज किया जैसे कि कहना नहीं चाहिए, डफर वर्ड यूज किया। मैं सुनता गया, स्टूडेंट है ना मेरी, सुनना पड़ता है बच्चों को। सर क्लास में पढ़ाना मुश्किल। मैं क्या, मेरी बात सुन। मैंने उसको नाम से पुकारा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। मैंने कहा तू टीचर तो बन गई, बट तू टीचर नहीं बन पाई। सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा स्कूल में जाती है कि किट्टी पार्टी में जाती है? सर आप ऐसे मत बोलो। मैंने कहा क्यों? मैं तो बोल सकता हूँ ना। तू इतने लॉन्ग ये हैंगिंग से पहन के और इस तरह से पहन के, सर इसमें क्या फ्रीडम ऑफ वेयरिंग? मैंने कहा अगर मैंने मना किया फ्रीडम वेयरिंग के लिए? तुम्हारी फ्रीडम वेयरिंग के लिए तुम्हें सब कुछ दिया पूरा समाज। जब हम एक धारणा में जा रहे हैं, जब एक संगठन में, जब एक संस्थान में जा रहे हैं, तो संस्थान का अपना एक पहरावा की वैल्यूज होती है। जितना साधारण पहरावा लेके, जितना सोबर लुक वाला, मैंने कभी कहा कि जीन मत पहनो, मैंने कब कहा कि तुम वो ट्राउजर्स नहीं पहन सकती हो। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारी किसी वेशभूषा के कारण डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो जुड़े पाठ्यक्रम से, पाठ्यचर्या से, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा वेशभूषा कैसा होना चाहिए। सो द अपीयरेंस, द अटायर, जो दूसरों की आंखों को चुभे ना, जो दूसरों की आंखों को चुभे ना और दूसरों को एक स्मूथ साफ, एक सूदिंग, एक डिसेंट लुक दे दे, वो पहरावा है। इट इज अ मटेरियल की आप साड़ी पहनते हो, वो भी मेरी संस्कृति है। आप सूट सलवार पहनते हो, वो भी मेरी, आप जीन्स पहनते हो, आप स्कर्ट्स, आप कुछ भी पहनते हैं। पुरुषों के लिए भी कहता हूँ, चाहे आप 3 पीस सूट पहन के जाएं, चाहे आप टी-शर्ट पहन के जाएं, सोच के जाएं कि टी-शर्ट पहन के मैं जा रहा हूँ क्लास में, तो डज आई लुक लाइक अ टीचर? दैट्स इंपॉर्टेंट। जब वो क्लास में नहीं तो कैमरे के सामने तो सोच भी सकते हैं। सो कैमरा के सामने आने से पहले सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा अटायर क्या है, मेरी अपीयरेंस क्या है, क्योंकि मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। मुझे देश नहीं विदेश के बच्चे भी सुनना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो आपको देखते हैं। छोटी सी एग्जांपल दे दूं, सुबह ना चैनल चेंज कर रहा होता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, 10 मिनट ही होते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, न्यूज सुनने को मन नहीं करता,
तो चैनल लगाते लगाते एक चैनल पे क्यों रुक जाता हूँ, अरे अरे कोई स्वामी जी बैठे हैं, शायद अच्छी बात कर रहे होंगे, बाद में पता चला वो तो हरी और लाल चटनी की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे किस चीज ने पकड़ा, अटायर ने पकड़ा, सबसे पहले अटायर ने पकड़ा। और दो एग्जाम्पल आपको, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, आप कहोगे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मुझे 4 साल दिल्ली रहना था, दिल्ली में मैं मेट्रो में भी ट्रैवल करता था, तो ये सिटी में डायरेक्टर था तो मेट्रो में भी ट्रैवल करता था। मैंने एक चीज नोट करता था मेट्रो में, जब भी कोई मेट्रो में हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे कुछ स्टूडेंट्स चढ़ती थी, कुछ जो गांव से आती है एडमिशन लेती है, वो मेट्रो में चढ़ के बैठने से पहले 2 बार देखती थी कि इसके बगल में बैठो, किसके बगल। वो बसेस में भी करती थी। मैंने सोचा ऐसा क्यों, तो मैंने देखा वो क्या करती है, जिसका थोड़ा सा डिसेंट वेशभूषा कहती कम से कम यहाँ पे थोड़ा सेफ है, जो मेरे बगल में बैठा जो यहाँ पर सहयात्री है वो कम से कम ठीक ढंग से मुझसे पेश आएगा। क्योंकि मैं आगे आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे दुख होता है ये कहते हुए, कई बार हम सिक्योर नहीं फील करते हैं, सेफ नहीं फील करते हैं बस में ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए, कि कहीं लोगों का बहुत वो होता है, बददिमाग लोग बैठे होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, आपने कोई डिग्री तो लिखी नहीं रहती माथे पे, आपकी डिग्री नहीं लिखी हुई, आपने पहली बार बोला भी नहीं, उसके बाद आप बोलोगे बेटा कह के जा, हाँ प्लीज कम होके शेयर अ सीट, तो अच्छा अंग्रेजी जानता है थोड़ा ठीक होगा। लेकिन सबसे पहले आपका पहरावा हमें बताता है, आपके पहरावे से हमें आपके थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। दैट इज अ वन थिंग। चलिए अब बी पे चलते हैं। व्हाट इज द बी? दैट इज इक्वली सिग्निफिकेंट, दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज। अब पता चला कि मैं कैमरे सामने तो हूं, लेकिन मैं कैमरे के सामने कैसे बैठा हूं। Hello students, today the topic is MOOCs, and Madam Indira ji asked me to teach you about MOOCs. कहोगे सर सो रहे हो क्या, उठ जाओ सर, क्यों सुला रहे हो हमें, यही मिला था कोई और नहीं मिला। ये क्या हो रहा है, द एनर्जी, द जेस्चर, द पोस्चर व्हेन यू गो टू द क्लास। मुझे अभी तक याद है, मैंने ना अपनी एक सेकंड ईयर में गया तो मेरे सीनियर ने, मैं मैसूर से पास आउट, तो उसने कहा कि ड्राइंग कौन करा रहा है, मैंने कहा वो वाले सर, मैंने पुट्टा स्वामी बोला, उनका नाम था। वो कहता अच्छा गोताइतु सर, कन्नड़ा में गोताइतु कहते हैं अंडरस्टूड को, हम कहते हैं गोताइता, आपको समझ आ गया। तो जो टीचर अपनी क्लास में हर लाइन के पीछे ओके बोल ले, यू नो, तो उसका निकनेम ही वही बन जाता है। और कई बार तो कहते हैं अरे वो ढीली पैंट का क्लास लगा ले, क्यों, वो 4 बार क्लास को अगर पैंट ऊपर उठाएगा तो क्या बनेगा, ढीली पैंट। ये क्या थे, आपको पता ही नहीं होता कि क्लास में आप ऐसे लूज जेस्चर्स दे जाते हैं, लूज पोस्टर, आपके निकनेम ही बन जाते हैं। और ये निकनेम पता करने हो तो येलो बस में शॉल करके बैठ जाओ, बच्चे आपके निकनेम से बातें करते हैं, वो ढीली पैंट, वो तोता, वो ये, वो गोताइतू, वो ओके सर, वो कहां से बने निकनेम, क्योंकि आपने अपने कंटेंट को डिलीवर करते समय कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स, तकिया कलाम यूज कर, यू नो, लाइक दिस, यू इडियट्स, ये क्या है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कैमरे के सामने। When you are going to deliver a talk for 20 minutes, so your module, your content, your topic, you make sure that no slangs, no loose words, and not पता चला पटाखे निकाल रहे हैं, मेरे जैसे पगड़ी बार बार सेट कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं सर, सिद्धू थोड़ा ना बुलाया हमने, टीचर बुलाया कोई। अच्छा मेरी कुछ महिलाएं वो बार बार पल्लू ठीक कर रही है क्लास, अरे नहीं, आप पहले पिन लगा के आओ। आपको जब लेक्चर देना है, यू शुड अवेयर दैट कि आपको 20 मिनट कैमरे के सामने रहना है, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान नहीं रहना चाहिए कि मेरी चोटी सीधी है कि नहीं, अब पता चला वहां पे बाल सेट करने लगी, ऐसा नहीं चलेगा। यू आर ऑन कैमरा, और ये रिकॉर्डिंग आज नहीं चलेगी, 100 साल तक चलने वाली है, और 1000 लोग देखने वाले हैं, 10,000 लोग देखने वाले हैं। तो मूक्स में कैमरे पे जब आप आएंगे तो सिर्फ आपका कंटेंट ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और बहुत सारे हमारे फैकल्टीज की मैं वीडियो इसलिए रिजेक्ट कर देता हूँ बार बार, वो सर क्या है, इतने 10 साल से तो जैसे पढ़ा रही हूँ, आप क्या है, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जमेगा, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी नजर नहीं आ रही है। आप सो के आए हो, आज लड़ के आए हो, आज पति से लड़ के आए हो, कहां से, कैमरे पे पता चल रहा है मुझे, आपका चेहरा बताता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। जब आपको भगवान ने एक अच्छा स्माइलिंग फेस दिया है, एक एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक फेस दिया है, तो आज क्यों रोए रोए हो आप। और जिस दिन मूड नहीं है उस दिन रिकॉर्डिंग मत करो रिकॉर्डिंग जिस दिन मूड नहीं है। हम तो अब आप बिलीव करेंगे, मुझे पता फेसबुक पे क्या लिखते हैं टीचर्स। अब तो आप लगभग मेरे 5000 टीचर्स तो हैं मेरे इस पर, जो मुझे लिखते, सर मेरी क्लासरूम की टीचिंग इंप्रूव कर दिया आपने। मैंने कहा मैंने तो MOOCS सिखाए थे सर, वही चीज अब मैं रूटीन क्लास में करने लगा हूं। अब मैं क्लास में ढंग से तैयार होकर, पहले तो मैं जो आता था अरे कॉलेज में जाना है, वही बच्चे, नहीं सर अब मैं प्रॉपर कॉम करके, प्रॉपर इस्त्री किए कपड़े, मुझे लगता कि एवरी डे इज माय रिकॉर्डिंग। मैंने कहा दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अ डिजिटल टीचर।
तो अब कहता सर मुझे क्लास में मैं यूनी लैंग्वेज में बात करता हूँ और सर स्माइलिंग फेस रहता हूँ और बच्चे ज्यादा बैठे रखे क्लास में। मैंने कहा यही तो करना है। जब आपकी फिजिकल क्लास में कोई नहीं बैठ रहा तो आप भूल जाओ कि आपकी कोई ऑनलाइन क्लास में बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैंडेटरी भी नहीं है और कोई देखने वाला भी नहीं है। उल्टा वो आपको म्यूट करके गाली भी दे सकता है। वहां पे तो क्लास में देगा तो आप उसको डिटेन कर देंगे, फेल कर देंगे, कहेंगे भाग जाते रहे, पिताजी को बुलाऊंगा। यहाँ पे तो कोई कुछ भी। अभी आप में से कोई भी जो मुझे देख रहे होंगे, आप जो मुझे चाहे कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे कहाँ सुनाई देगा। तो आप अपना मन हल्का भी कर लोगे, ये किसको बुला दिया मैडम ने, कौन चाट रहा है, कौन बोल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। और कोई पता चला थाली लेके आरती उतार रहे होंगे, आरती उतारू रे। क्यों? आपकी सही भावनाएं जब आप ऑनलाइन पे देख रहे होते हैं तो वो बाहर आ जाती है। फिजिकली आपको बांध के अंदर रखनी पड़ती है। कई बार मन नहीं कर रहा होता, जी कर रहा होता कि इसको जाके 2 चपेड़ मार दूं, लेकिन उस सभा में बैठा होता हूँ, कहता हूँ कितना फेंक रहा है ये कोई मंत्री है या नेता, कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन आप कर नहीं सकते ना फिजिकली बैठे। और घर में टीवी पे, अरे बंद कर इसको, बदल इसको, ये फालतू बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहाँ कर पा रहे हैं आप जब आप ऑनलाइन देख रहे हो। तो ऑनलाइन आपका क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, तो इसलिए ऑनलाइन आपको ज्यादा संकेत पूर्वक और संचेत पूर्वक रहना होगा। इसको मत भूलिएगा, इट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आप पता मेरे को क्यों सुन रहे हो लंच टाइम पे? इस टाइम आप में से कई कैमरा जिनका माइक म्यूट है, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, एफडीपी का अटेंडेंस लग रही है, पता चला आप इस टाइम खाना पका रहे हो, क्योंकि चपाती सेकने का टाइम हो चुका आपका, और हो सकता है जो घर में हो। लेकिन आप मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा है। मेरे चेहरे पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ जो आप मुझे देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरी स्क्रीन ने आपको बांध लिया, मेरी पीपीटी ने बांधा, मेरे शब्दों ने बांधा। द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन टीचिंग, फॉर द MOOCS डेवलपमेंट। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप भारी दुनिया भर की अंग्रेजी बोल लो, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लो महंगे से महंगे, आप चाहे सामने गुच्ची की वो लगा लो स्पेक्स और बढ़िया से डायमंड की इयरिंग्स पहन लो, आपको देखने कोई नहीं आने वाला। उनको कंटेंट चाहिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। When you speak with the content and without repetitive content, without slangs, and uniformly flawless, with a true command and voice modulation. What is a voice modulation? I'll tell you. When you open a book, you start reading a book, some of the topics are bulleted, some of the topics are highlighted, bold, some are the italics, some are the underlined. When you are going to be deliver on the camera, can you say underline, bold, inverted commas? नहीं। तो फिर क्या करोगे? Your voice modulation. When I speak something, listen to me. It is very, आप हिल जाओगे, ओ रुक जा भाई, कुछ बड़ी चीज आ रही है, पता जी मोदी जी अब क्या करने वाले, मतलब एकदम से आप हिल जाओगे। जब मैंने आपको कुछ भी एकदम से बोला और जिसमें धीरे से बोलते मत पढ़ो, कल फिर तुम ही धक्के खाओगे, तो ये क्या, मैंने धीरे से एक इटैलिक्स में छोटी सी बाणी बता दी। वॉइस मॉड्यूलेशन is the most important part when you are going to be record your book. Although you have a same voice, you have a same thought, but you have so many different swars. कभी आपको ऊंची स्वर में बात करनी है, कभी धीमी स्वर में बात करनी है, कभी थोड़ा सा टेम्पो लंबा करके बात करनी है, और कभी जल्दी जल्दी बात कर जाए। इट इज ऑल डिपेंड्स। आपको छोटी सी उदाहरण दूं, मैं AIT बैंकॉक पढ़ाने गया, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, पढ़ा भी रहा था 18 साल से यहाँ पे, अब तो मेरे 24-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। डीन ने दूसरे दिन बुलाया, मन्ना जी इंडिया वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या सर? वहां पे सिस्टम था एवरी लेक्चर के बाद फीडबैक। वो स्टूडेंट्स थे 32 कंट्रीज के, देयर वर टोटल 32 कंट्रीज स्टूडेंट्स वर लर्निंग फ्रॉम। आपके फीडबैक नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा सर इतने अच्छे से टॉपिक पढ़ा रहा, मरवाओगे क्या? वापस जाना पड़ेगा, बड़ी झंड हो जाएगी इंडिया में, कहेंगे लो डेपुटेशन पे गया था फेल हो गया। कहते मन्ना जी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कंटेंट बहुत बढ़िया है, आप समझो यहाँ पे थाई स्टूडेंट है, वियतनाम का है, जापान का है, चाइना का है। मैंने कहा सर बस, मैंने कहा सर कल लेक्चर लूंगा, परसों से लूंगा। अब आप सुनिए, मैं अपनी क्लास में वापस गया, आज फिर पढ़ा रहा हूं मैं क्या, ओम्स लॉ। सुनिए, द क्रैंक गोज लाइक दिस एंड फाइनल doctor, it's good. I could understand what you want to say to me. मैं समझ गया भी भैया इनकी अंग्रेजी धीरे चलने वाली है, तो मैंने अपने सेल को निकाल के थोड़ा सा सेल पुराने वाला डाल दिया जिसमें गाना लंबा हो जाता था। लता मंगेशकर का गाना जो 2 मिनट का था वो 10 मिनट चला जाता था, तो मैंने करंट को लंबा करंट कर लिया। मुझे पता क्या साइलेंट कर रहा है, क्या पिच देनी है, मेरा टिया। अब ये मुझे कहां से पता चला? जब मैं साउथ में बीटेक में एडमिशन लेने गया तो मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, और पता SINGH होता है सिंह, और वहां पे साउथ में टी के आगे एच ना लगाए तो उसको टी को कहते हैं, इसकी शादी नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग कर दी है मनप्रीत TH, और सिंह से आगे एच हटा दिया। तो मैंने उनको कहा भाई साहब मेरा नाम की स्पेलिंग ठीक करो, मेरी डिग्री। तो उसने कन्नड़ा में बोला न्यू टी होग बेकू, यानी कि टी अगर यहाँ से जा चाहिए
न्यू मैसूर होगबेकू, मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी में जाके चेंज कराओ नाम। तब से मुझे समझ में आ गई कि जैसा देश वैसा भेष। तो साउथ में चलेगा यम यन यन यल, तो मुझे पता चल गया कि मुझे यम यन यल में बात करनी पड़ेगी वहां पे। तो उसी तरह से आपकी प्रोनाउंसिएशन। सो इंग्लिश हिंदुस्तान में कम से कम 117 तरफ से पढ़ाई जाती है। ए यू कम रा, सिट रा, व्हाट्स गोइंग ऑन, बस स्टैंड, आई गो टू बस स्टैंड, ये भी अंग्रेजी है। किसने कहा अंग्रेजी नहीं है? लेकिन जब आप मूक्स बना रहे हैं ना, तो कृपया आप अपनी क्षेत्रीय अंग्रेजी को अंदर रख के आए और एक यूनिफॉर्म इंग्लिश को, जिसको आप यूएस यूके इंग्लिश कहते हैं। आप एजुकेशन बोलेंगे तो भी पंगा है। आप एजुकेशन ना बोल के सिंपल एजुकेशन भी बोले। आपको हिंदुस्तानी बच्चों को पढ़ाना है पहले, तो आप अपनी अंग्रेजी को सॉरी डियर आई एम गोइंग टू एडुकेट यू, नहीं 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 सर, गोरा नहीं बुलाना मुझे, मुझे हिंदुस्तानी टीचर ही चाहिए, क्योंकि ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। बड़े लोगों ने यह काम भी किया। उन्होंने 3 मिनट की वीडियो बनाई, तो मैंने कहा मैडम क्या हो गया, आइल्स का एग्जाम दिया था क्या? हाँ सर मेरे तो बैंड आए हैं। मैंने कहा मैडम यहाँ पे आइल्स का एग्जाम भी देना, यहाँ पे मूक्स बनाने हैं। यू हैव टू हैव योर नॉर्मल इंग्लिश, बट द एक्सेंट शुड बी द यूनिफॉर्म एक्सेंट। ये नहीं होना चाहिए कि आपके एक्सेंट में कभी झज्जर आ जाए और कभी बेगूसराय आ जाए और कभी मेरा चेन्नई आ जाए। So already in my English there are so many accents in India, so we have to make it clear the what accent we should use it. आपको लग रही होंगी ये बातें, लेकिन किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। और यही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मूक्स को डाइल्यूट कर देती हैं और आपके मूक्स को 4 चांद लगा देती हैं। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाए डिलीवरी, डी फॉर डिलीवरी। अब डिलीवरी है क्या? मैं इसकी सही उदाहरण दूं आपको। किसी को पूछना हो ना डिलीवरी का मीनिंग, तो मैं सच में कहूं, एक मां से जाके पूछो कि कृपया डिलीवरी बताएं, तो कहेगी डिलीवरी इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस बिकॉज आई डिलीवर टू अ सन और डॉटर। प्लीज माइंड इट। कितना कठिन शब्द है एक मां के लिए। बस उसी लेवल का शब्द आपको टीचिंग में लेके आना है। डिलीवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, presentation is most important. I will give you one example. One day, in a fine day, my wife started doing cooking at kitchen from morning say 7 till 12 for the guests coming. She cooked around 6 to 7 different types of dishes. And end of the day, जब वो आने का टाइम हो गया, she got a sciatica pain. उसको तो पेन हो गई। She कहती मैं बेड से उठ नहीं सकती। बनाया सब कुछ, पूरी भी, चने भी, सैलेड भी, हलवा भी, सब कुछ। परोसने की बारी आ गई मेरे जैसे की। मैंने क्या किया? खाना तो बहुत बढ़िया बना था, मुझे पता नहीं चला कौन से डोंगे में क्या डालना है, कौन सी प्लेट में क्या डालना है। मैंने वैसे के वैसे कर दिया काम। अब गेस्ट के तो मुंह ही बनने थे, मुंह बन गए। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका कंटेंट उम्दा है, आपको भगवान ने इतनी अच्छी फोटोजेनिक फेस भी दे दिया है, आप इतने अच्छे पहरावे से भी सामने आ गए माइक पे, लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं करना आया, आप अपनी बात रख नहीं पाए। बस स्टूडेंट टूट गया, क्योंकि स्टूडेंट एक ही बात जानता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब पहले इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो विश्वास कहां से? सो योर पीपीटी, your animated PPT, your color combination of your presentation, and where to show the PPT and where to show the face, and where to hold, where to pause, where to add or where to delete, where to repeat and where not to repeat at all. This is called a delivery pattern. And a digital delivery pattern, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा है कि जिनकी फिजिकल क्लास में भी बच्चे सोते हैं, और मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि जिनकी एडेक्स पे क्लास चल रही है तो बच्चा स्क्रीन से उठता। मैंने कहा यार पॉज कर रहे हैं। नहीं सर नहीं, मामा उधर रख जो कॉफी, ये 20 मिनट का लेक्चर पूरा करने दो, सर की पूरी बात। अरे बेटा पॉज का बटन दबा देना इस पे। ना 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 ना, पॉज नहीं करना, बीच में पूरी बात सुनिए, सर की पूरी बात सुनिए, बहुत गहराई से बात कर रहे हैं, बहुत सही तक जा रही है, अंदर तक जा रही है, नोट्स बन रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, कमरा बंद कर दो। अरे ऑनलाइन वाले को भी ऐसा है। बस जिस ऑनलाइन लेक्चर में बच्चे ने ये कह दिया ना कि पूरा लेक्चर सुन के उठूंगा, हालांकि वो 20 मिनट का होगा, बस फिर मेरे जैसे को बुलाने की जरूरत नहीं है कि मूक्स कैसे बना। दैट्स इट। आप गंगा नहा लिए, आप गंगा नहा लिए। दिस इज कॉल्ड अ डिलीवरी पैटर्न। आपको बांधना है विदाउट, आप फिजिकली उनके सामने नहीं है, लेकिन इतनी कशिश, इतनी पकड़ आपकी डिलीवरी में होनी चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि पूरा लेक्चर सुने बिना नहीं उठूंगा।
भले 10 मिनट लेट हो जाए। और फिजिकल में कई बार क्या हो रहा होता है कि यार मैं पिछले दरवाजे से निकल सकता हूँ, चलो यार मैं थोड़ा सा आंखें खोल के ऊँग लेता हूँ। और आजकल बच्चे तो आंखें खोल के सोना सीख गए, क्योंकि कई लोग तो बहुत लंबा खींच लेते हैं बात को और बीच में निकलता 5 मिनट का भी काम करने का। आई एम सॉरी, मैं भी टीचर हूँ, मेरे से भी ऐसी गलतियां होती होंगी, बट दिस इज अ फैक्ट। जब हम फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स का तो सारी आंखें खुल जाती है, लेकिन सच्ची बात पूछने के लिए बगल वाले को जाना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं बताएगा आपका टीचर। हमारे बच्चे नहीं हमें बताते कि क्या गलत क्या ठीक है, लेकिन जब वो मूड में आते तो बहुत कुछ बता जाते हैं। सो दे आर द ट्रू मिरर ऑफ आवर। कंसर्न क्या है हमारे? कंटेंट कंसर्न है, डिलीवरी भी कंसर्न है, उसके आगे भी कुछ कंसर्न है। आपने डिलीवर कर दिया, आपने असेसमेंट की कि आप डिलीवर कैसा कर पाए। असेसमेंट किया तो सर्टिफाई भी करो, यू मस्ट सर्टिफाई इट। क्योंकि अगर आप बेसिक्स पे काम कर रहे हैं तो आपको इन चीजों को लेके चलना पड़ेगा। यू मस्ट बी नोटिस वन थिंग, आई कुड हैव टू बी, ऐसा नहीं है, आई नो आई एम गुड इन इंग्लिश एंड गुड इन हिंदी एज वेल एज। मैं हिंदी में वार्तालाप करूंगा तो मैं आपको पूरा सुनिश्चित करता हूँ कि अंग्रेजी का एक भी शब्द यूज नहीं करूंगा, बट स्टिल आई एम यूजिंग बाय लैंग्वेज। क्यों? मुझे मैंने सुबह आके सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट खोल दी थी। मैंने देखा ये 50 कहाँ से है, तो नाम से मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि हिंदी अच्छी खासी इनकी ठीक ठाक है। तो आई हैव टू बी, मुझे आप तक चीज पहुंचानी है, क्योंकि मुझे आपसे कोई नंबर तो लेने नहीं है, और अब इस उम्र में दोबारा थोड़ा ना कोई शादी करनी मुझे, तो मुझे आपको इम्प्रेस तो करना नहीं है। तो मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगा जिस भाषा में आप तक मैं बात पहुंचा सके और आपको समझ में आ सके। अगर मुझे पहले ऑर्गेनाइजर ने कहा होता कि देयर आर द सर्टेन पार्टिसिपेंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और दे आर फ्रॉम साउथ, दे कांट अंडरस्टैंड योर हिंदी, देन आई कुड हैव टू बिकम कोर इन इंग्लिश, व्हिच आई डोंट फील लाइक हियर. So that's this is the most comfortable thing to be make the concerns of the learners. Learning basic concepts, competency to use the learning skills, ability to apply, and of course recognition of the abilities. आपको हर MOOCS के पीछे क्विज देनी पड़ेगी, ताकि जो बच्चा आपकी वीडियो को दूसरी बार तीसरी बार पॉज करके देखेगा तो क्विज क्वालिफाई करेगा, क्विज क्वालिफाई करेगा तो नेक्स्ट वीडियो पे जाएगा। यानी कि इवैल्यूएशन जो होती है वो रियल टाइम होती है। उसको रियल टाइम बनाने के लिए आपको इमीडिएटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, लेक्चर वहां रह जाएगा, क्विज उधर रह जाएगी, इवैल्यूएशन हो नहीं पाएगी। बच्चा कहेगा सुना भी सब कुछ, समझा कुछ नहीं, सुना भी सब कुछ, पढ़ा कुछ नहीं, सुना भी सब कुछ, एग्जाम में आया कुछ नहीं। क्यों? ये जो हमारी मेमोरी है ना, ये क्या चाहती है, ये 3 इंद्रियों को इकट्ठा जब तक नहीं बांधोगे। मैंने आपको बोला नोट करें, मैंने आपके हाथों को बांधा, मैंने आपकी आंखों को बांधा, आप मेरी स्क्रीन देखें, मैंने आपके कानों को बांध रखा है, आप मुझे सुन रहे हैं लगातार, मैंने बांधा। जब तक मैं आपकी 3 इंद्रियों को नहीं बांधूंगा, क्योंकि अब मैं आपको बोलने के लिए तो नहीं दे सकता अनुमति यहाँ पे, तो कम से कम मुझे 3 इंद्रियों को, मुझे आपको कॉग्निटिव लेवल का लर्निंग देने के लिए आपकी बॉडी को बांधना था, आपकी आंखों को बांधना था, आपके ईयर्स को बांधना था। जब तक 3 इनपुट्स नहीं जाएंगी, आपके यहाँ पर फैच नहीं होगा, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। यही काम आप क्लास में करते हो, आप नोट्स भी लिखवाते हो, सुनने के लिए मजबूर भी करते हो और कहते हो क्लास में अटेंटिव रहो, क्लास में अटेंटिव, मेरे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। ये क्या करते हो आप? कॉग्निटिव, ये बेसिकली ये एक धारणा है, पार्ट है। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे को बांधे कैसे। बच्चा झूले पे भी बैठा है, बच्चा ड्राइंग रूम में भी बैठा है, बच्चा लॉन पे भी बैठा है और वो वीडियो देख रहा है, वो आपका MOOCS देख रहा है। अब लर्निंग कहां से होगी? लर्निंग तो नहीं होगी। बीच में साथ में वीडियो गेम खिला रहा है, साथ में उसके सामने लैपटॉप पे आपका लेक्चर चला रखा है, वो नहीं होगी। आपकी पकड़ इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि वीडियो गेम भूल जाए, मैगी खानी भूल जाए, चाय ठंडी हो जाए, हालांकि पॉज कर सकता है, पॉज चाहते हुए भी ना करे, तो आपकी ये बेसिक्स से आपको आगे बढ़ना होगा। शॉर्टर इन स्पैन, कभी लंबा वीडियो मत दिखाएं। आप मुझे कहीं बोल दे कि मैडम बड़ा मजा आ रहा है, वरना सर आप 5 बजे तक लेक्चर ले लो, मैडम बस मेरी TRP मत गिराओ, क्योंकि जैसे 1 घंटा होगा उसके बाद आप सैचुरेशन पे आ जाओगे। 1.25 घंटा के बाद मन्ना जी अच्छा नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे के बाद आप कंप्यूटर बंद करोगे और 2 घंटे में लगातार बोलो तो बात मुझे यहाँ पे पीटने आ जाओगे, सर बस भी करो आप। तो बेसिकली द वीडियो कंटेंट, द स्क्रीन लाइफ शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स प्रिसाइजली। आप अपने टॉपिक को इस तरह से बांधें कि 10, 12, 15 मिनट के बीच में आप अपने टॉपिक को कंक्लूड भी कर सके और नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या करते हो सीरियल में, आगे देखिए, कल देखें। बीवी क्या बोलती है, और कल जल्दी शगुन देके आ जाएंगे, मुझे वो सीरियल आगे देखना। उन्होंने, मैंने कहा कौन सा? बस वो ट्रेलर दिखा दिया, कल के लिए मान लिया। यानी कि कल क्या आना है उसका सिर्फ सबसे कैची चीज, और पता चला पूरे आधे घंटे में वही काम की चीज थी जो पहले दिखा दी। यही होता है ट्रेलर में। मैं कपिल का क्या करता हूँ, वो जो रिकैप आता है ना पहले, प्री कैप जिसको बोलता है, मैं वही देख के कपिल पूरा देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें सारे उसने कपिल ने बढ़िया डायलॉग दे दिए थे।
कि कब उसने क्या किया, कब उसने, मैंने कहा हो गया काम, अब सेवा घंटा खराब नहीं करूंगा, बढ़िया जोक, अब फिर भी चलो टाइम पास करना तो देख भी लेता हूँ। तो प्री कैप क्या था, ट्रेलर था। तो आपको भी ऐसा ट्रेलर देना पड़ता है अगले लेक्चर का, बिफोर यू कंप्लीट योर लेक्चर। टुमारो वी आर गोइंग टू हैव वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी मच इंटरेस्टेड विद दिस, आई एम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस मी टुमारो एट दिस टाइम। मिलेंगे ब्रेक के बाद, दैट्स इट। अरे मैडम आप जहां का रहे हो अभी लो नेक्स्ट वीडियो। पता चला बच्चे ने एक ही दिन में आपके 3 वीडियोस देखे, क्यों, आपने बांध लिया। So lack of human interaction is the one of the fundamental problem which we have to face and which we have to environment. मैंने जब देना शुरू करता हूँ लेक्चर में क्या होता है, सब कंफर्टेबल बैठे हैं, चलिए कैमरा ऑन करेंगे, सबने अच्छे से बैठना है, 2 बार लंबी सांस लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद चलिए आज मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, आज हम कुछ दूसरी यात्रा पे जाएंगे। पता क्या लगेगा आपको, सर कुछ नई बात करने वाले हैं, he's talking something different. The motivation, the environment you have to create, although you are teaching engineering, maybe mathematics, maybe physics, maybe chemistry, or maybe law, but end of the day your first 2 minutes are going to give some mindset to your listener, your viewer, because the most precious investment in this life is the time. और आप किसी का समय मांग रहे हैं, you're asking someone's time to spend on your video. Although it's his learning, it's her learning, but पहले तो उसको ये लग रहा ना कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, जब वो सीखेगा तब वो कहेगा आपने मेरे पे एहसान किया, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब सुबह मुझे आना था तो आपको ये लग रहा था कि हम मन्ना जी पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि एफडीपी में एक उनको हमने हिस्सा दे दिया, स्पीकर बना दिया, तो भैया उन पे तो हम बड़ी मेहरबानी कर दी, उनको 60 पार्टिसिपेंट दे दिए। अब 60 पार्टिसिपेंट को ये भी लगेगा मैडम आपने हम पे एहसान कर दिया, हम एक अच्छे स्पीकर से, मतलब दिस इज द वाइस वर्सा, यू नो, समटाइम्स, बट इट हैपेंस तब अगर कुछ ऐसा होगा तो। वैसे मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, एहसान मेरे पे ही हुआ है, आप पे नहीं हुआ। प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। घर में नया फर्नीचर लाते समय प्लानिंग होती है, नया इवन कर्टन्स लाने तो प्लानिंग, व्हाइट वॉश का रंग कौन सा है, उसके साथ क्या मैच करेगा, विच टाइप दिस दैट। खाना शाम को 5 बजे शुरू हो जाता है, रात को क्या बनाओ, दाल बना ले, वो तो कल खाई थी, अच्छा पकोड़े नहीं खाते रात को, फ्राइडे, अच्छा भाई तुमने बनाना तो वही है जो तुम्हारी इच्छा है, तो कृपया ऐसे करो, मुझ पे एक एहसान करो कि मुझ पे कोई एहसान मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है भला। दिस इज व्हाट द प्लानिंग ऑफ द किचन। बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान योर बुक्स, you must keep in mind, are you going to complete for the whole semester? Do you have the sufficient time in 20 hours of your video content for 4 credit of course? How much you are going to cover in one video, so that the student should get the maximum of the content through your video, not from your ebooks, not from your assignments, not from your tutorials, so that your delivery should be planned very well. In 20 hours of video content for 4 credit of MOOCS as per the SWAM guidelines. And then you start writing your own transcripts. भले आपको देख के नहीं पढ़ना, लेकिन आपको डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे। डायलॉग्स लिखोगे तो निकलेंगे, अगर लिखोगे तो निकलेंगे नहीं। सारे एक स्टैम्प पर नहीं हो सकते। आप ट्राई मत मारना कि आप भी कपिल शर्मा बन जाओ, सिद्धू बन जाओ, तो फिर पंगे भी पड़ जाते हैं, कई बार पत्थर भी पड़ जाते हैं, तो ऐसे काम भी नहीं करना आपको। यू मस्ट राइट योर ट्रांसक्रिप्ट्स, must be in English, so that tomorrow when you are going to create a MOOCs, let your English to be get even a typed version with you. Sometimes you can give us subtitles for the learners. Subtitles are always helpful for the learners. Offering, what you are going to offer in your very first lecture, what's supposed to be your next offering in the next lecture, where you are going to fetch your assignments, where you are going to fetch your quizzes, and how many questions you want to ask from your this 20 minutes of talk or 50 minutes of this module. It is most important, the offering strategy. You have to sell yourself. Yes, it is pure marketing. You have to sell yourself. Otherwise, nobody is going to. And if today is a quiz, you must evaluate in the same day. Make sure that your learner is well connected, because he is getting his fruits, his goods and bads, his deficiencies and efficiencies to be reflected through marks. And give actual justification marks. यहाँ पर क्यों कटे? OBE ये बताता है मैंने 5 क्यों काटे, ये नहीं OBE ये बताता है तुम यहाँ पर 5 मार्क्स ले कैसे सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। यू डोंट हैव टू टेल कि मैंने काटे क्यों, आप ये बताओ यहाँ पर तुम 5 नंबर ले सकते थे अगर तुमने ये एड ऑन किया होता, अगर तुमने यहाँ पे ये एग्जांपल दी होती, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया होता, यू कुड हैव टू टेकन अ 5 मार्क्स मोर।
सो ये नहीं कि तुमने यहाँ पे उसके नोट से लिखा मैंने काट दिए, तुमने यहाँ पे बीच में हिंदी लिख दी मैंने नंबर काट दिए। ये क्या हो रहा है कि ये हम उसको कोशिश कर रहे हैं लेट डाउन करने के लिए, हम उसको दिखा रहे हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, सुपीरियर रहूंगा। जिस दिन टीचर ये दिखा देगा ना, अरे यार तेरे नोट्स तो लगता है मुझे रखने पड़ेंगे यार, अच्छा सर सच में, हाँ यार तूने सच में बहुत अच्छा लिखा है, वो आप उसके फेवरेट टीचर बन गए। और द डे यू बिकम्स अ फेवरेट टीचर योर सब्जेक्ट बिकम्स अ फेवरेट। दैट्स इट। टीचर फेवरेट होता, सब्जेक्ट कभी नहीं होता। once your teacher becomes favorite, subject becomes a favorite. These are the questions comes from the planning, and these questions are very very important. आप सिखाना क्या चाह रहे हो बेसिकली? सर मैं तो लॉ टीचर हूं, मैं तो लॉ ही सिखाऊंगी। अरे लॉ तो सिखाओगे, आप इस पर्टिकुलर 15 मिनट में क्या डिलीवर करना चाह रहे हो? आउटकम होगी। एवरी मॉड्यूल मस्ट हैव आउटकम। डोंट से मेरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ो फिर आउटकम। नहीं, मैं चाहता हूं आप मुझे ऐसा एक लेक्चर दो, उससे कम से कम मैं जिंदगी में दोबारा शायद आपका लेक्चर कभी ना सुन पाऊं किसी कारणवश, लेकिन कहूं कि ये एक लेक्चर अटेंड किया था मैडम का, पूरी जिंदगी याद रहेगा ये वाला टॉपिक, या ये वाली आपकी डेफिनेशन, या ये वाला लॉ, या ये वाली टर्मिनोलॉजी, कुछ भी, एनीथिंग। सो इट शुड बी वेरी मच क्लियर दैट एवरी मॉड्यूल शुड स्पीक समथिंग एंड which is going to be value added. If it is a value added as a learner, he or she can never skip you. They will come back to your topic. They will come back to your videos. And this is what you should know, what students to learn. How I can make my course more interactive and interesting by inserting some of the PPTs, animations, or live examples and live videos to be shoot and recorded and play during your MOOCs. आपको चलानी पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं चला रहे हैं तो बच्चा टूटता है, क्योंकि आपके शक्ल देखने के लिए 20 मिनट नहीं बैठा हो। आप मोटर सिखा रहे हो तो मोटर की साउंड सुनाओ उसको, मोटर चला के दिखाओ, मोटर की फोटो भी दिखाओ। लैब में घुस जाओ, आपका कैमरा जाना चाहिए जब आप MOOCs बना रहे हैं, लैब में लेके जाएं, हाथ लगाएं, मोटर चलती हुई नजर आनी चाहिए। अगर आप वो कुछ कर रहे हैं, देखिए किसने स्क्रीन पे कुछ चलाया अपनी पेन और पेंसिल अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, कुछ क्रॉस किया है, ब्लू कलर की लाइन है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास स्टाइलिस है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक पेन है, बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। हाउ विल आई नो दैट दे हैव मास्टर्ड इट? अगर आपने एवेल्यूट ही नहीं किया, उससे क्वेश्चनिंग नहीं की, डिस्कशन फोरम पे नहीं गए, बच्चों के साथ संवाद ही नहीं किया। संवाद का डिस्कशन फोरम एक आपका क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में डिस्कशन फोरम, आप पढ़िए। बच्चों के साथ आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप फेसबुक पे क्या करते हो, व्हाट्सएप पे क्या करते हो, वही काम आपको यहाँ पे भी करना होगा, थ्रू गूगल क्लासरूम, थ्रू योर स्वयं पोर्टल और समथिंग लाइक दैट यू शुड नो देयर साइकोलॉजी, देयर बैरियर्स, and you have to make a environment free or barrier free learning. That's most important part. So डिजाइन करते समय ये सारी चीजों को ध्यान रखना है और एंगेजमेंट मॉडल को लेके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीमिस्टिफाइंग लिनियरिटी, ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, चंकिंग ऑफ द कंटेंट एज स्मॉलर मॉड्यूल्स। Sometimes your topic is really too lengthy because it must be having a good number of definitions. It is your art how to break it in a small modules, not more than 15 minutes, so that at least every module should carry something out of it. That should be the design consideration which you will take care of this. Animations, real-time objects, which already discussed. Handwritten notes, very important. ये किसी ने जैसे पेन चलाया ना, तो इस पेन का सदुपयोग करें। आप पीपीटी पे अपने हाथ से नोट्स लिख के दिखाएं अपनी वीडियोस में, जब आप MOOCs बना रहे होंगे। अभी नहीं, अभी आप लाल नीले पेन मत दिखाइए मुझे, आपके पास है, अच्छी बात है। सो यू मस्ट राइट योर नोट्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन फील, ओह सर ने अपने हाथों से मुझे इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई है, सर ने बैलेंस करके दिखाई है केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस की हुई इक्वेशन की आपकी पीपीटी, आपके नोट्स जब आप वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, you should have like a live, लगेगा कि सर सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, सब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं करके। आप करके देखिए, बड़ा मजा आता है उसमें। It's really very very amazing thing. You can use your own Zoom or your go to meeting platform to record your videos. जरूरी कि आपको स्टूडियो पे जाना, स्टूडियो पे जाना पड़ेगा, मना नहीं कर रहा हूँ, क्रोम पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडोर वो चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, गुड अकॉस्टिक्स चाहिए, क्योंकि ऑडियो अच्छा नहीं रहेगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग्स में आप अपने घर में बैठ के आप किसी प्लेटफॉर्म से, जो अभी वो वंदना मैम बहुत सारी बताने वाली हैं, तो उनका लेक्चर मत मिस कीजिए। आप फिल्मोरा पे जाना चाहते हैं, काइन मास्टर पे जाना चाहते हैं, आप लूम पे, मैम लूम पे बहुत वीडियोस बनाती हैं, गूगल क्रोम का लूम बहुत अच्छा। तो ये चीजें वो बताएंगे, उनका टॉपिक है
उनकी दुकानदारी उनके साथ, मेरी दुकान मेरे साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको वो वाली एप्स यूज करके अपनी छोटी छोटी वीडियोस पहले खुद बना के खुद को देखनी है, पड़ोसी को दिखानी है, अपने स्टूडेंट्स को दिखानी है, घर में दिखानी है, और क्रिटिक्स लेने हैं, पॉजिटिव क्रिटिक्स लेने हैं, कहां पर क्या चीज चूक रही है, व्हाट बेसिकली आई एम मिसिंग, एनर्जी और लैंग्वेज और कंटेंट और पर्सोना, कुछ तो कम है, उसको फिल करेंगे, वी हैव टू रीफिल एंड फाइनली यू गेट द वीडियो कैप्चर, रिव्यू एंड एडिट, एक्सपोर्ट द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे मूक्स की एफडीपी जिन्होंने अटेंड की, जो फिजिकल करता हूँ, उनके यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा, वो अपने मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, फिजिक्स का, कहते सर बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, मैं उससे कुछ लेता नहीं हूँ, उनका चैनल है, उनका मोनेटाइजेशन है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। और कभी कभी अपनी वीडियो में बोल देते हैं कि डॉक्टर मन्ना इज अवर मेंटर। मैंने कहा बस इतने मेरा तो हो गया, बस आपने इतना ही कह दिया, मैंने गंगा नहा लिया। एक टीचर को क्या चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सके और रियलाइज कर सके, और वो रिकॉग्नाइज और रियलाइज तभी होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो द पॉइंट इज दैट वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग ना, आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे मुझे जब तक शाम को मैं एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर लेती हूँ या नहीं कर लेता हूँ, मेरे से खाना नहीं खाया जाता। और मेरे यूट्यूब पे वेट हो रही है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है मांग रहे हैं व्हाट्स द नेक्स्ट, कब आ रहे हो आप, क्या नया भेज रहे हो, इतने सब्सक्रिप्शंस आपकी बढ़ जाती। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप अच्छा कंटेंट देना शुरू करते हो, आप उनके साथ जुड़ जाते हो, और उनको भी रोटी नहीं हजम होती जब तक आपकी नई वीडियो नहीं आती, और आपको भी रोटी नहीं खा जाती जब तक आप नया वीडियो नहीं बनाते हैं। ये भी एक ऐसा वो है, इसमें कह सकता हूँ नशा है, होना भी चाहिए। कोई समाज को पढ़ाने का अगर नशा, इससे ऊपर नशा क्या हो सकता है? When you are going to educate the society, it's nothing like that. ये तो भगवान को प्राप्त करने वाली बातें हैं। So appointing a teaching assistant, students, experts, volunteers आपके साथ जुड़ने चाहिए, आपका ग्रुप होना चाहिए, ये टीम वर्क होता है। आप अकेले सोच रहे हैं कि मैं पूरा लेक्चर अकेले पढ़ाऊंगी, नहीं, 3 या 4 कोलीग्स आपस में मिल जाए। क्योंकि मैं एक चीज सच में बता दूं, आप भले कोई सब्जेक्ट 10 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको भी नहीं अच्छे लगते हो, और आप कहोगे इसमें मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप पढ़ा जाते हो, नहीं तो असाइनमेंट दे देते हो क्लास में। तो टीचर्स अगर मिलकर पढ़ाएंगे ना, तो सबका अपना एक तरीका आएगा पढ़ाने का, बच्चे को वैरायटी मिलेगी, लर्नर को बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी, और आपके मूक्स ज्यादा प्रचलित होंगे। और हम क्या करते हैं, नहीं मैंने बनाना अकेले ने, मैंने नहीं पूछना उसको, वो कौन सा मुझे चाय पे बुलाती है, उसने घर में भी नहीं बुलाया था मुझे शादी। अरे नहीं बुलाया तो ठीक है यार, यहाँ पे मूक्स बनाएंगे, इकट्ठा कमाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपनी ईगोस को अगर साइड पर रख के हम टीम वर्क कर लेंगे, 3 या 4 टीचर, जरूरी नहीं कि एक ही कॉलेज के हो, अलग अलग कॉलेज के हो सकते हैं। मैं कहता हूँ जरूरी नहीं एक कंट्री के हो, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं। तो अगर आप 3 या 4 मिलकर मूक्स बनाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन से आप देखेंगे तो लर्नर का प्रोस्पेक्टिव बहुत वाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने कुछ फैन हिट करेंगे, आपके कुछ फैंस हिट करेंगे, तो आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी हो जाएगी, टीआरपी भी बढ़ेगी, तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रकाशित कर पाएंगे। दैट इज अनदर वे। दिस इज द ऑफरिंग ऑफ द मूक्स व्हिच आई जस्ट विश टू बी मेंटेन टू यू। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू बी कन्वे, एंड दिस इज माय असाइनमेंट। मैं जाने से पहले एक असाइनमेंट दे रहा हूं। मैंने 2 फोटोग्राफ्स आपके सामने प्रकाशित कर दी, मैं कुछ बोलूंगा, इट्स ओपन एंडेड असाइनमेंट। आप सबको चैट बॉक्स के उसके बारे में लिखना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, इस स्लाइड से मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी लिखना नहीं शुरू करेंगे, फोटो देखेंगे, जब मैं बोलूंगा तब लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। इसके बाद मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भाई साहब पेड़ के आगे खड़े हैं, 4 अलग अलग सिनेरियो से बात कर रहे हैं। एक कहता लकड़ी काटूंगा, शाम को चूल्हे में आग जलेगी। दूसरा कहता लकड़ी काटूंगा, सुखाऊंगा, स्टोर करूंगा, बेचूंगा, टिम्बर मर्चेंट बन जाऊंगा। तीसरा कहता है इसका मैंने अगर फर्नीचर बना दिया ना तो बहुत बढ़िया बिकेगा। चौथा कहता है यार इस पेड़ से अगर मैं बगल में एक पेड़ और लगा दूंगा ना, इसको भाई मिल जाएगा, हमें और छाया मिल जाएगी। तो ये होती है परसेप्शन, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। मेरी असाइनमेंट पे जाने से पहले ये स्लाइड देखनी जरूरी थी, इसलिए मैंने कहा था असाइनमेंट को अभी लिखना मत शुरू कीजिए। और ये है अगला पार्ट। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो रहिए, हम इसको रेड जोन मानते हैं, जिसको कहते हैं खतरे की घंटी, जिसमें कहा जाता है कि रेड जोन मींस आरोग्य से तू ऐप भी कहती है बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो ना, आपको डर सा लगता है। आप नहीं आपको पता है मेरा बच्चा भी छोटा है सर, आप कैसी बात करते हो, 2 मिनट में तो मेरा माउस छीन लेता है, मेरे कीबोर्ड पे आके बैठ जाता है, वो मेरे से नहीं है। हाँ मेरी सासू माता भी बहुत बीमार थी सर, ये मूक्स मुझसे ना होता, एफटीपी करनी थी कर ली। ये एक्सक्यूजेस हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और डर के आगे क्या होती है? जीत। डर के आगे जीत है। लर्निंग जोन में जैसे थोड़ा सा आएंगे ना, तो थोड़ा सा रंग बड़ा हो जाएगा, येलो कलर का।
आप नई नई स्किल्स, नहीं मैं एप्लीकेशन ट्राई करके देखती हूँ, आज मैडम ने सिखाई है, कुछ नई चीज है, यू विल एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, आप थोड़ा सा बढ़ाओगे। मैं रात को आधा घंटा लेट सोऊंगी, मैं लैपटॉप पे थोड़ा सा कुछ करूंगी, जब बच्चा सो जाएगा ना तब करूंगी लैपटॉप पे, ये तो मुझे करने नहीं देगा ये। और फाइनली आप एक ग्रोथ जोन में आए, आपको जीने का, अरे सिर्फ शादी करना था क्या, सिर्फ बच्चों को बड़ा करना था, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मुझे लोग ना पहचाने, मैं भी एक ऑथर हूँ, अगर मेरी किताब नहीं है तो मेरे मुख से लोग मुझे पहचाने। मुझे क्यों लिखना पड़ता है कि डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, मदर ऑफ, मैं लिखूं ना, मैं खुद अपने आप में हूं ना। तो ये आपको तब महसूस होता है व्हेन यू कंकर योर ऑब्जेक्ट्स, स्टार्ट न्यू गोल्स, लिव योर ड्रीम्स। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं आप पे छोड़ देता हूँ, यू आर फैकल्टी मेंबर्स, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, सब पीएचडी करके बैठे, थोड़ा सोच लेना भी कहाँ रहना है, रेड में रहना है कि ग्रीन में रहना है। Choice is yours, and I stop here, and now I will go to the chat box. You start writing on a chat box about the open slide. चलिए देखते हैं कौन क्या लिखता है। हाँ, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। I hope somebody start writing on a chat box about the slide which I have shown. टोटल पार्टिसिपेंट्स, अरे वाह, भागा कोई नहीं, बड़ी बधाई हुई, 50 वहीं पे जुड़े रहे, इसका मतलब भूख सबको लगी लेकिन कोई गया नहीं, दैट्स फाइन। चैट बॉक्स पे लिखना शुरू करो। आई होप कि चैट बॉक्स सबके लिए ओपन होगा एंड एवरीबॉडी कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, आई बिलीव, दैट्स गुड। यस, इट्स ओपन फॉर ऑल। ठीक है, गुड। चलिए जरा लिखना शुरू कीजिए, मैंने क्या बताने की कोशिश की उस स्लाइड से। I'm unable to see any message written. Last message अनुपमा बांसल का है, dear participants, अब आना शुरू हुआ। United we are beautiful and divided we are not, नीतू शर्मा जी ने लिखा। चलिए, उन्होंने कुछ इस तरह से इसके बारे में कुछ देखा उस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं, चलते चलिए, लिखते जाएं, समय कम है। आपको भी नेक्स्ट लंच के बाद नेक्स्ट सेशंस भी लेने हैं, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हैं आज आपके बड़े इंटरेस्टिंग से, एज पर योर शेड्यूल। टाइप कीजिए फटाफट। यस निशा आप भी टाइप करो, रुचि आप भी टाइप करो, जिनको मैं देख पा रहा हूँ उनको तो बुला सकता हूँ। नेहा जी, रीमा जी, संगीता जी, सुमन जी, अरफा जी, टाइप कीजिए। अच्छा, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स टू, एंड फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट अदर्स एंड इफ वी कैन। तो इन्होंने 2 सिनेरियो से, फोटो से कुछ इस तरह से निकालने की कोशिश की है, ये रुचि जी ने लिखा है। चलिए ठीक है, इट्स गुड, जिसको जैसा लगा उसने अपने शब्दों को यहाँ पर बयान किया। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? कहीं ये तो नहीं थे सारे म्यूट करके खाना वाना तो नहीं बना रहे हैं भाई, पता चला पकड़े गए, अब क्यूज करने से पकड़े जाते हैं ना, तो सिर्फ उतने ही हैं यहाँ पे जो सिर्फ कैमरे ऑन है, बाकी सब सोए हुए हैं। तो यही तो पता चलेगा आपने मुझे देखा भी है कि नहीं, मेरी पीपीटी देखी या सुनी। टू कीप थॉट्स, आइडियाज, थिंग्स इन राइट प्लेस। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि इन्होंने सेकंड राउंड को रिफ्लेक्ट करते हुए कहा कि टू कीप थॉट्स, आइडियाज, थिंग्स इन राइट प्लेस। देखो कहां पर बिंदी लगानी है, कहां पर सितारे। क्या बात है शर्मिला जी, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते जाइए, इतना समय नहीं है, पार्टिसिपेंट 50 है, कम से कम 20-30 में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना वर्जन दूंगा। ये फ्लिप लर्निंग मॉडल है, पहले आपको सुनेंगे फिर हम अपनी बात रखेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे तो वो भी लूंगा, डोंट वरी, आई विल टेक योर क्वेश्चंस एज वेल, आई विल नॉट रन अवे without giving the replies. A crown is a crown, whether dazzling or just made of iron. I like it, I like it. भले स्केल्टन हो, भले चमकता हो, जो इमारत है वो तो इमारत ही रहेगी। क्या बात है। Together we can achieve better results than working alone. Very nice, Arfa Praveen ji, very nice. Everybody is writing with their own perception, with their own thoughts. This is most important for a teacher. जिस टीचर को परसेप्शन नहीं बनाना आ रहा, वो बच्चों में परसेप्शन कैसे क्रिएट करेगा? That's most important. तो MOOCS में सबसे पहले सबसे बड़ी चीज है दूसरों की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना, जिसको आप अपना वीडियो देने वाले हो। ओके,
तो चलिए, स्पीड थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन मुझे था कि मैं कम से कम 10-20 यहाँ पे इमेज वन रिप्रेजेंट्स OER। अरे वाह, क्या बात है, OER है तो वो आप उसमें से कुछ भी निकाल लो, और वो मोकेट है फाइनल, तो पता चला कि वो तो क्राउन है, वो तो प्रिंसेस के ऊपर ही जाएगा, यानी कि वो बन गया आपका मूक्स। Inside the mind works constantly so that outside others can see the results. I like it. I like Gunjan Verma ji. I like your thought which you have read. Image 2 is in a class representation. क्या बात है, very nice Sonam ji. Well said, well said. अब dear participants, don't judge a book by its cover. मैं तो धन्य हो गया, कितने अच्छे आप एक सिर्फ स्लाइड को देखकर आप उसकी कितनी परसेप्शंस बना पा रहे हैं। इसका मतलब पता क्या मैं कहना चाह रहा हूं, 3 चीजें नोट कीजिए। नंबर 1, आपकी क्रिएटिविटी, आपके शब्द बनाए ना आपने, इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड। दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, पॉजिटिविटी। जितनों में अभी तक लिखा, सबने सहराने की बात की, सबने संभालने की बात की, सबने संजोने की बात की, सबने सिखाने की बात की। देखो, द रियल टीचिंग इज ऑलवेज इफेक्टिव। यानी कि जिस टीचर में 2 चीजें ये आ गई, क्रिएटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड और पॉजिटिव। और तीसरी चीज पता क्या है, योर सेल्फ परसेप्शन। आपने पहले वाले को कॉपी करके नहीं लिखा, दूसरे वाले को कॉपी करके नहीं लिखा, आपने अपने शब्द सामने रखे, बस। इसका मतलब आप फिट हो। जो ये आप FDP लगा रहे हो, बिल्कुल सही लगा रहे हो, आप मूक्स बनाओगे, आप बुक्स बनाओगे, क्योंकि पॉजिटिव माइंड होना जरूरी है, क्रिएटिव थिंकिंग होना जरूरी है, और सेल्फ परसेप्शन होना बहुत जरूरी है। मैं आप यहां पे आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूं इस स्लाइड से, आप नोट करो, आप सब टीचर्स हो और सब ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, और हिंदुस्तान के टीचर सब एक समान ही होते हैं क्वालिफिकेशन में और लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में। उसके बावजूद एक स्लाइड देख के अगर आपके 50 टीचर की 50 परसेप्शन बन सकती हैं, तो आपके स्टूडेंट्स की कितनी परसेप्शन होगी आपकी वीडियो देख के। ट्राई टू कैच, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, परसेप्शन भले अलग हो, गोल सेम रहना चाहिए। गोल, अगर आप ट्रू टीचर हैं, वीडियो बंद करने के बाद मुझे यह पता लगना चाहिए कि टीचर ने पढ़ाया क्या था, भले मैंने किस एंगल से उसको सुना, किस एंगल से देखा, किस एंगल से समझा, परसेप्शन अलग हो। मैंने गीता को अपने तरीके से पढ़ा, आपने गीता को अपने तरीके से पढ़ा, लेकिन एंड में गीता का सार सेम है कि सब में एक ही भगवान है और यही सत्य है, और सब में भगवान बसते हैं, ये भी सत्य है। किसने अंग्रेजी में गीता को पढ़ा, किसने हिंदी में पढ़ा, किसने संस्कृत में पढ़ा, किसने सुबह पढ़ा, किसने शाम को पढ़ा, किसने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा और किसने एज ए स्नेह के साथ पढ़ा, किसने मंदिर में जाके पढ़ा, किसने ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ा, लेकिन मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है गीता से। दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड अ MOOCS. When you develop a MOOCS, when you give a lecture, that whole audience must give a one single answer. This lecture was meant for how to develop a MOOCS, how to develop a MOOCS. किसी का दूसरा और मीनिंग नहीं निकलना चाहिए इस लेक्चर से। सब एक ही समान बोले कि आज जो लेक्चर था वो MOOCS कैसे बनाना है, इसके ऊपर ही बात की गई। I hope I justify and I conclude. That's it. Thank you very much. Now questions are open. Thank you so much, sir. Sir, your lecture has always been so enriching and charming for us. Thank you so much for providing your gracious presence by joining us today and sharing your expertise to enhance our knowledge. Let's see if we have any question for you or Sonam ma'am. Dear participants, you may raise your hand and interact with sir if you want. Anyone with any question? Okay, Ekta Singh, she's sending an emoji. Okay, yes. Please. Ekta? Yes, Ekta ji. Yeah. मेरी कंडीशन है, जिसने भी सवाल पूछना है पहले चेहरा दिखाना पड़ेगा, फेस टू फेस बात करेंगे। हाँ, Ekta is our student. She herself is a very sweet okay, girl. very nice, very nice. Ekta, please ask your question, beta. चलिए, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अगर आप किसी कारणवश नहीं, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं, तो आप चैट बॉक्स पे भी लिखेंगे, मैं वहां से पढ़ के भी रिप्लाई करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। तब तक कोई और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं सवाल। शिखा मैम, अगर कोई हैंड रेज करे तो प्लीज डू लेट अस नो। हाँ जी, रुचि जी। क्वेश्चन।
पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन अ pupil teacher improve her or his skills in the limited sources? Like everyone don't have the resources everywhere. So Yes. what are the things we can improve Absolutely. or how? बहुत बहुत सही सवाल है आपका, और इसका जवाब मैं देने से पहले मुझे अपनी वैल्यूज पे जाना पड़ेगा, जो हमारी एंशिएंट इंडियन वैल्यूज हैं। हमारे एक बहुत बड़े तीर अंदाज हुए थे, उनका नाम, उनका महाभारत में बहुत बड़ा उल्लेख है। तो उनको मना कर दिया द्रोणाचार्य जी ने कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने सिर्फ उनकी मूर्ति बना के सामने रखा, जिसको हम वर्चुअल, लोग आज बात करने लगे हैं वर्चुअल क्लासरूम। मैंने कहा वो तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले शुरू हुई थी वर्चुअल क्लासरूम। तो वो वर्चुअल क्लासरूम की एग्जांपल है। रिसोर्स का कम होना, ज्यादा होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी चेष्टा, आपके अंदर का कीड़ा। अगर वो कीड़ा बड़ा होता है ना, तो आप जीरो रिसोर्स के बावजूद भी आप चांद को भी छू लेते हो। तो मैं मानता हूं कि आज हो सकता है आप कहेंगे रिसोर्स में इंटरनेट की कमी, लैपटॉप ना होना, घर में कंप्यूटर ना होना, ऐसी चीजें, या कैमरा ना होना, ये है। अगर ये बाध्य होते तो हम यहां ना पहुंचते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमें लगे, अभी एक इंडियन आइडल पे एक बुजुर्ग लेडी को लाके उन्होंने वहां से गाना गवाया, और उसको सुना कहां पे? उन्होंने रेलवे स्टेशन पे बैठे सुना, और सब ने गले लगाए, बड़ी बड़ी उम्दा सिंगर्स ने आके गले लगाया। अब उस लेडी के पास तो ना कोई तानपुरा, ना गिटार, ना हारमोनियम, ना अच्छे कपड़े, ना घर छत, लेकिन उसको भगवान ने एक कला दी थी, और उसके अंदर था कि मुझे कला को मरने नहीं देना, जहां भी बैठूंगी गाना गाऊंगी। फाइनली किसी ने तो सुना, किसी ने तो उसकी वीडियो डाली, किसी ने तो कहीं फेसबुक पे वीडियो डाली, उसको उठा के इंडियन आइडल में लेके आ। अब उसके पास घर भी है, अब उसको एक अच्छे संस्कार भी मिल पा रहे हैं समाज से, क्योंकि उसको अच्छी निगाह से, इज्जत से देखा जा रहा है। क्यों? रिसोर्स तो उसके पास माइनस थे, एक तो होता है ना जीरो, माइनस थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, रिसोर्स ना होते हुए भी आपकी कला, जो आपके अंदर एक कला भगवान ने देके आपको भेजा है, उसको जिंदा रखते हुए आप पढ़ते चले जाए, आपको कोई ना कोई जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रुचि जी, मुझे पता चला मैं एक इंडस्ट्री हूं, और मुझे तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चलाना है बायजूस, और पता चला कि आपसे बढ़िया फिजिक्स में भी पढ़ा पा रहा, तो मैं आपको घर में भेजूंगा इन्विटेशन कि आप आइए और बताइए कितना पैकेज लेना, और हम आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। और यही हो रहा है, यही होता आ रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ ढूंढना पड़ेगा कि मेरे साथ कोई एंजल्स कौन जुड़ सकते हैं, फंड रेजर्स कौन जुड़ सकते हैं, और रिसोर्सफुल कौन जुड़ सकते हैं मेरी कला को प्रकाशित करने के लिए और उसको आगे लेके जाने के लिए। और अभी तो हमारे पास इसके बहुत ज्यादा साधन हैं, लेकिन प्लीज कला को कभी भी दबा के ना रखें, उसको उजागर करें। रिसोर्स की मुताज कभी कला नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। थैंक यू। Sir, next I have a question from Ms. Seema Sharma. How can we ensure the quality of MOOC? सीमा शर्मा जी, यही मैं अपने देश से पूछ रहा हूँ। जब स्वयं बनाया था, मुझे 3500 में से सिर्फ 150 3 मिनट्स के वीडियो को अप्रूव कर पाया, बाकी मैंने रिजेक्ट किए। हाउ वी इंश्योर? अगर आप क्वालिटी मूक्स नहीं बनाएंगे, हमारा स्वयं ब्लैक बॉक्स बन जाएगा। बच्चे फिर डॉलर देके एडेक्स पे जाएंगे। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, अच्छी बात है, मैं एडेक्स का भी सम्मान करता हूँ, मैं क्रॉस इरा का सम्मान करता हूँ, मैं सारे दुनिया के मूक्स का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर हम क्वालिटी दे पाएंगे तो बच्चों को फ्री शिक्षा दे पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं ही एकमात्र ऐसा साधन दे पा रहे हैं जिसपे क्रेडिट्स अर्न करके ट्रांसफर भी हो पा रहे हैं, और 1100 मात्र फीस होती है एग्जाम की। तो जो हमारा देश का गरीब बच्चा है वो भी अफोर्ड कर पा रहा है। तो क्वालिटी किसको बनानी है? ये एफडीपी उसी की दिशा में एक कदम उठाया है जो इंदिरा मैम ने उठाया है, कि आप मूक्स बनाने से पहले कुछ इस तरह की प्रयोगशाला करें, कार्यशाला करें, एफडीपीस करें, ताकि एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम डेवलप कर सके, और इसको अश्योर करें कि मैं अपनी वीडियो तब भेजूंगा, तब भेजूंगी जब पहले मैं खुश हो जाऊं कि मेरा वीडियो, जो मेरा कंटेंट है, वो समाज में जाने लायक है, बच्चों में देने लायक है। भले वो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले वो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमें अच्छा इंश्योर करना ही पड़ेगा, और हो रहा है। यकीन कीजिए, इतने अच्छे वीडियोस बनने लगे हैं। जब शुरू की थी यात्रा तो सिर्फ एनआईटी टीटीआर चंडीगढ़ के वीडियोस आते थे, थोड़े बहुत यूनिवर्सिटीज के। अब तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के वीडियोस आने लगे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस स्वयं पर आने लगे हैं, और इंप्रूवमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी के कारण भी हो रही है, और लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है, लोगों का उत्साह बढ़ गया है। और आई एम श्योर
कि ये बढ़ेगा। लेकिन आपको ये एफडीपी के बाद प्रण लेना होगा कि मैं वैसे ये एफडीपी मैम करवा रही है, अगर मैं कोऑर्डिनेटर तो मैं रखता हूं, मैं सर्टिफिकेट तब दूंगा जब आपकी 3 मिनट की रिकॉर्ड वीडियो हमें आएगी, इंट्रो वीडियो ऑफ योर टॉपिक, तो सर्टिफिकेट दूंगा भैया। मेरे एफडीपी में तो ये होता है, मेरी फिजिकल एफडीपी होती है बिग बॉस की तरह। अभी करवाने जा रहा हूँ कोलकाता में नेक्स्ट वीक, तो मैं जो तो वहां पे दिन रात वहीं पे कैमरा, वहीं पे माइक, वहीं पे स्टूडियो, सब कुछ पूरे मूक्स बनवा के भेजूंगा। ये नहीं कि सिर्फ अटेंड किया, ताली बजाई, समोसा खाया, चाय पी और चले सर्टिफिकेट लेके लोगो यूजीसी का, ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर ऐसी तो बहुत एक्टिविटीज पहले भी होती आ रही थी, फिर फर्क परिवर्तन कहां से आए? तो परिवर्तन लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना पड़ेगा। या प्लीज। Do we have any other question for sir? Even we have Dr. Sonam Bansal. If you have any question for ma'am, you may ask her. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for sparing your time for us. Now, we have seen same sir throughout the session. Sir has always been knowledge reservoir and a guiding torch for all of us. Sir, we request you to address the attendees, please. Friends, at the outset, let me thank the KIIT management and the director and faculty of KIIT College of Education for giving me this opportunity to chair the 3 sessions. Let me confess that I consider myself fortunate to have got this opportunity to listen to Dr. Manpreet Singh Manna the second time. It was really a pleasure to listen to him. I would say, and I think you will also agree, that it was a balanced presentation, well-prepared presentation, nicely and lucidly presented presentation. He, at the beginning, he made you comfortable by saying that technology is not going to replace you. He says that without chalk and talk, there is no teaching. Peer learning is quite important, and that the child is a human being and not a machine. But at the same time, he also says that digital mindset is most important. So how he comes to his own point, it is very interesting to see. And I would say there are 2 things here. One is online teaching learning, and the other is online courses or the online platform. These online courses or platforms, I would say, have democratized the education because it has given easy access to quality teaching learning materials, quality lectures, quality content, and it enables everyone to enrich his or her knowledge. Even the unreached can compete today with the online teaching, learning, and online courses. And so therefore, online thing is inclusive. That is, anyone and every individual can benefit from it. So that is a very positive thing I find here. Dr. Manna has very rightly given the role of social media, and he has given also what is blended learning, and excellent example of the use of mobile in the class, which shows that a teacher has to be resourceful. And then he has talked about the example of latest technological devices like Alexa and
artificial intelligence. I think these have been very, very useful and very, very revealing for our students. मुझे और भी अच्छा लगा जब वो कहते हैं कि टीचर को स्टूडेंट का विवेक जागृत करना जरूरी है, कि स्टूडेंट ये जाने क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना चाहिए या क्या देखना चाहिए और क्या नहीं. दैट मीन्स टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और आई कांटेक्ट की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा है कि टीचर फेवरिट होता है तो सब्जेक्ट अपने आप फेवरिट हो जाता है. सो वेरी वेरी नाइस थिंग that I find. And of course, through the online teaching learning, we can hear and we can listen to the best of teachers like the Baijus and all that. And then we had um, um, Neetu gave us online tea, and after online tea, we had the Dr. Sonam Bansal, who talked about brainstorming techniques for e-content. This was also quite interesting. And I think this would require much work on the part of the students, and would require more sessions. I think working sessions would be required where live teacher with the students, and the students having one computer each, and then one-to-one when it goes, I think then only it will be possible to understand. But then word search, word cloud, learning apps, and the idea boards, etc., whatever we have seen, they really show that the online learning and teaching can be made really interesting, comprehensive, and the students can be given a lot of collaborative work, and they can practice, they can do many activities in this. It was a very skillfully presented lecture. The so as I said, we have to have separate session for this. I must. Then we come to the second session of Dr. Manna, where he talks of ABCD of MOOCs development. And he started with 3 Ds of MOOCs. Now, a very interesting thing I find the difference between the classroom teacher and the camera teacher. Very important. We must understand, the students must understand that. And let me make it very clear that the online teaching can never replace the face-to-face teaching. In fact, online teaching is I would say complementing the face-to-face teaching. They will always remain together, and each has its own advantages and disadvantages. Then the digital initiatives of Government of India, we could see, and very interesting, the Bloom's taxonomy being converted into artificial intelligence taxonomy. And he says that e-content is immortal. Man is mortal, but e-content is immortal. That is a very nice thing. और फिर वो कहते हैं कि संवाद से विवाद की ओर स्टूडेंट्स को हम देखें कि स्टूडेंट्स विवाद की ओर ना जाएं, संवाद में रहें. और we also saw the tools of digital teachers. And I think the basic lesson which we intend to give to our student teachers in any situation, that is covered in ABCD, when he says the appearance or attire, body language, energy and behavior, content, voice modulation and accent,
and finally the delivery or the presentation. And he has given a model presentation to us. His presentation, I think, was the best of presentations I have ever heard. My greetings and my congratulations to you, sir. And I would say I find in Dr. Manna the real academic professor who does not believe in measuring classrooms, but he believes in the holistic education of students, to see that holistic education of students takes place in the classroom. And this has been always my complaint, that all those people, either from AICT, from NCTE, or from other regulatory bodies, universities, they come and they start measuring the classrooms, measuring the multipurpose halls, and so that they have never gone to the classroom. And I found this difference, the NAC accreditation process. I have been in various capacities all over the country. I have gone to the places, but when I went to Nepal, there I found the difference. Nepal has taken Indian model of NAC, the accreditation, but there they have added one thing, and that is the observation in the classroom teaching. They have added this observation of classroom teaching in that institution. So I wrote even to the director NAC that this is something which we require today. So that Dr. Manna has very rightly emphasized. I am grateful to him for this. And I am also extremely grateful to KIIT and the organizers of the workshop for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much for such a. I have no words to say. It means each and every word has been listened and he has been recorded and he has been represented. It's really amazing, sir. Really, really amazing. I really salute to you, sir. I really salute to you. Thank you very much. Very well said, sir. Manna sir. It was an elaborative feedback and really nice. And sir has been always an expert for that. And Sain sir, what you said, that online learning can never replace teachers. It is It is for complementing the teachers. We do agree with that. And now, thank you, sir, for sparing your time out of your busy schedule. We have Dr. S.S. Agarwal with us. He is Director, KIIT Group of Colleges. Welcome, sir. Thank you very much. सर मुझे पहचान रहे होंगे, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है. मैं खास तौर से इस समय निकाल के 2 मिनट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ. हाथ जोड़ के नमस्कार और आपका स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब. थैंक यू सर. हम लोग पुराने दोस्त रहे, साथी रहे. आप हमारे कॉलेज के मेंटर रहे. अभी जैसा सेन गुप्ता साहब ने कहा ना कि आपको हम दोबारा सुने हैं. सर, आपका पहला भाषण जो KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ था, क्या इलेक्ट्रीफाइड भाषण था सर. वी आर स्टिल चार्ज विद दैट. और जब हमारी बातचीत हो रही थी, जो हमारी नई डायरेक्टर हैं डॉक्टर इंदिरा ढोल, तो उन्होंने कहा कि पहला लेक्चर हम मन्ना साहब का करेंगे. मैंने कहा कि इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती इस प्रोग्राम की. तो हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं डॉक्टर साहब कि आप यहाँ आए और आपने इतना सुंदर भाषण दिया और हमारे सभी विद्यार्थियों को और अध्यापकों को एक तरह से दोबारा एनर्जाइज किया और समझाया कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल टीचिंग और डिजिटल डिवाइसेस की क्या वैल्यू होती है और डिजिटल सिस्टम्स को यूज करके एजुकेशन को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, कितना ज़्यादा ले जाया जा सकता है.
मैं इन चीज़ों को कोई अब रिपीट करना नहीं चाहता, ना उसके बारे में ज़्यादा एलाबोरेट करता हूँ। आपने इतना अच्छा बता दिया सर। और इसके साथ साथ मैं अपने साथी पुराने हमारे प्रोफेसर सेन गुप्ता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हमारा निमंत्रण इस सेशन को चेयर करने के लिए स्वीकार किया। डॉक्टर सेन गुप्ता बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में और उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि किसी न किसी रूप में प्रोफेसर सेन गुप्ता जी हमारे बीच में आए और सर उनके संदेश, उनकी जो एडवाइसेस हैं और जो कुछ भी उन्होंने इस कॉलेज के लिए, कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए किया है सर, वो सर्वविदित है। सब लोग जानते हैं कि इस कॉलेज को बढ़ाने में, इसको इस यहाँ तक पहुंचाने में डॉक्टर साहब का कितना कितना महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी सब लोग याद करते हैं और ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी भी हम सब लोगों को एडवाइस करते रहें और टीचर्स को। और हमारी डायरेक्टर स्पेशली जो इंदिरा ढुल हैं वो कह रही थी कि नहीं डॉक्टर साहब सेन गुप्ता साहब अगर हमारी बात मान जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो सर हम आपके बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ने देखिए आपका जो संपूर्ण भाषण था उसका क्या निचोड़ प्रस्तुत किया। इट वाज रियली वेरी नाइस। और मैं तो कहता हूं कि सब ये सब चीजें रिकॉर्ड कर ली जाएं और हम लोग फिर अपने इसमें एक तरह का बुलेटिन या इसका न्यूज़लेटर या कुछ पब्लिश करेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब आपके जो भाषण हैं उनके सारे अंश और आपके बारे में और सेन गुप्ता जी ने जो कहा वो सब जो है उसमें प्रस्तुत किया जाए, तो ये हमारे लिए एक तरह का रिकॉर्ड रहेगा। और हालांकि सेमिनार का रिकॉर्ड तो बनेगा ही, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो मैं अपनी ओर से और KIIT परिवार की ओर से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी जिसमें शामिल है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, IT मैनेजमेंट, सभी लोग आपको बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर साहब और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होगी। जरूर होगी, थैंक यू जरूर सो होगी। मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बात सर, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, सेन सर के लिए, इंदिरा मैम के लिए, मन्ना सर के लिए। तो हम कहना चाहते हैं जी अब मैं डॉक्टर नीतू दाहिया जो प्रिंसिपल हैं KIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। मैम प्लीज। मैम को अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शिखा मैम, आई थिंक आप ओके। थैंक यू। Thank you, Neetu ma'am. A graceful and warm afternoon, everyone. To our Bade Sir, Shri B.R. Kamra ji, Chairman Vidyapati Sansthan, Dr. Harshvardhan Kamra Sir, Vice Chairman Vidyapati Sansthan, Professor Dr. Sham S. Agrawal, Director General KIT College of Education, Professor Dr. M. Sen Gupta Sir, Advisor KIT College of Education, Dr. Nilima Kamra Ma'am, Registrar KIT Group of Colleges, our most valued speaker, Dr. Manpreet Singh Manna Sir, and Dr. Sonam Bansal Ma'am. Our today's workshop chairperson, Dr. M. Sen Gupta Sir, Director Professor Indra Dhul Ma'am, Convener Dr. Rachna Sharma Ma'am, worthy teacher and most beloved students. Last but not the least, all present over here, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Dr. Neetu Dhaya, on behalf of KIT Parivar, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. I extend my gratitude
to our honorable speaker, Dr. Manpreet Singh Manna, sir, Formal Director, AICTE, Founder Director, SWAM, Ministry of HRD, Government of India, and Dr. Sonam Bansal, ma'am, RLS College of Education, Gurugram, to take out time from her busy schedule to grace the event. Today we had an opportunity to hear your thoughts, sir and ma'am, and this will surely be going to encourage us in our future. And I'm sure each and everyone here understood MOOCS development. Thanks to you for inspiring and encouraging us with our words on this special day. Especially thanks to Dr. Nilima ma'am, Amseen Gupta sir, chairperson of KIIT College, for providing immense support to make the workshop successful. I extended my gratitude to Professor Indra Dhul ma'am, director of KIIT College, to organize a workshop even amidst the pandemic. It has been our tribute to host all the members. I'm thankful to all the participants for coming here and attending workshop day one. We have been fortunate to have a renowned identity from academic industries and other areas. I'm very thankful to the entire participants as well as sponsor of this workshop. I'm sure that our college will continue to get significant provision for diverse groups in the future. I take this occurrence to thank the entire committee for representing their valuable views. I must remark a proficient sense of gratefulness to all our guests for sharing with us some of the fine skills. All the participants of this meeting are all inspired by your highly sparkling words. I want to extend my generous thanks to the entire guest for their support and cooperation. I thank our teacher for their leading, supervision, and inspiration at every point of time in college. It's not possible to thank everyone for such a appreciating involvement and willingness they have expressed to finish the task. I would like to thank convener Dr. Rachna Sharma ma'am and our organizing team, Mrs. Ravneet Kaur, Mrs. Anupam Bansal ma'am, Dr. Shikha ma'am, Mrs. Neetu Sharma ma'am, Mrs. Preeti Rani, and all non-teaching staff members. I thank our honorable chairperson, director, speakers for taking the initiative of hosting. Thank you, sir. And at the end, I want to say, स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से, धन्यवाद है आपका दिल की गहराइयों से, न बाजे न ढोल न शहनाइयों से, स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से. Namaste. Thank you, Neetu ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. We appreciate you being here. So we have assigned a practice session, which is a self-practice session to reinforce the concepts you have learned today. Let me conclude by wishing that every one of you will carry back from here some knowledge to be applied in your teaching and learning. Gentle reminder to fill the feedback form. Let us meet tomorrow sharp at 10:45 a.m. for more enlightening sessions. Thank you again for joining us. Namaskar. Recordings